I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was dig at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Thanks. Love you. ओह सॉरी मेरा मतलब माइक म्यूटेड था आई एम सो सॉरी Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. लूना 3 आर्कन क्वेस्ट लंबे लूना 3 आर्कन क्वेस्ट है ये मोमो क्या लिखा है लूना 2 लिखा है अबे यार क्या ही बोलो आ गया जी तो कैसे हो बहुत दिनों बाद बस एग्जाम कल खत्म हुए कल मैं आया कॉलेज से और चिल हो गया फुली चिल हो गया पूरा ही चिल हो गया मैं आज आज से आई एम बैक दोबारा से और क्या बोलते चलो मेरा फियरलेस कर देखते हैं करते हैं प्रबंध आपका भी आज सुबह सुबह क्यों सुबह क्योंकि हाँ वैसे आज अभी इसलिए स्ट्रीम स्टार्ट किया मैंने क्योंकि एज यू गाइस नो कि 6.2 आया है नया कॉन्क्वेस्ट
लीक्स की माँ की आंख, लीक्स की नहीं, स्पॉयलर्स। लूना बीकेएल, बहन का लड़ा लूना। ये बेटी जो मुझे थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया, हरामखोर। बट फिर भी हम लोग अपनी शिद्दत से, मतलब पूरी शिद्दत से करेंगे, 6 घंटे 7 घंटे लगाकर अपना आर्कन क्वेस्ट। सो देखते हैं क्या होता है। मेरा इवेंट कर 3 दिन बचा है, फिर थिएटर, उसके बाद स्टेजन करना है जिसका करना है। आज तक का इवेंट कंप्लीट कर ले भाई, आज तक का इवेंट कंप्लीट कर ले। लमार्कन क्वेस्ट में मरने वाली है। अच्छा, मेरा मैनेजिंग 198 सेकंड में हो गया और फिलिस 360 सेकंड में नहीं हो रहा है। वाओ। वो क्या सच बोल रहा था? जो भी बोला है लमार्कन क्वेस्ट में मरने वाली है। हाँ। तो ये गेल चोद क्या बोला है, मुझे ये समझाओ। क्या बकचोदी की है सर? हेलो जाज। चैट पे ध्यान दो भाई, नहीं दे रहा। ओह थैंक यू फॉर द मेंबरशिप कार्तिक। क्वेस्ट स्टार्ट करो। अरे बस बस बस, अभी करते हैं स्टार्ट। स्पॉइलर आर्कन क्वेस्ट में वारका और एलिस गलत स्थिति में पाए गए। भोसड़ी की। वारका और एलिस गलत स्थिति में पाए। चैट देख, मेन स्टोरी स्पॉइलर, लोमा को रेरियर से प्यार हो जाता है, लेकिन रेरियर तो भाई जेंटलमैन था, देखा नहीं लोमा कैसे पकड़ा था उसने। हो गए। जरा एक बार देखूं मोमो ने मेरा अकाउंट कितने ढंग से मेंटेन किया है पिछले 10 दिनों में। टोटल मेरे पास 43 पुल्स हैं। पिटी मेरी 0 की है। देखूं, इसको बोलते मैंने कैरेक्टर्स अपग्रेड करते रहिए मेरे। साले जो काम करने वाला वो काम छोड़ के सब कर दिया। तो मोरा किताब, साले मोरा किताब भी कहाँ फार्म किया है तूने? कुछ नहीं किया साले। भाई मोमो किसी काम का नहीं है भाई। रेड का असली नाम रेकियर ऑफ सोनाली। रेड ऑफ सोनाली। सोनाली, सोनाली कौन है भाई? रन कर जाती है वो, है ना? चिराग कोलंबिना का बस्ट एनिमेशन देखा? हाँ भाई देखा भाई, क्या तो क्यूटी है यार। गंदी नजर से ना देखो भाई उसको। What the heck? हाँ वही वही। क्वेस्ट एरिया टुडे को एमकी से जस्ट डू स्टेजन फर्स्ट हट बे। ओके लाइक कर दूं क्या? अरे बिल्कुल करो यार, ये कोई पूछने वाली बात है? टॉक्सिक मैनेजिंग ट्राई किया। स्टैजन का क्या सीन है, कैसा हार्ड है क्या इस बार का स्टैजन? ना, मैं ना कर रहा स्टेजन अभी, पहले आकर कुछ करूंगा भाई। हाँ हाँ। हम्म।
लेवल ऑफ करेक्टर टू लेवल 70 टू एसेंड। एक मिनट, ये है ना लेवल 70, 60 से एसेंड करेंगे तब तो 70 तक जाएगा, है ना? ऐसे ही सीन था ना कुछ ये एसेंड करने का। सब कोई आगे सीन्स पहले ही बता देना इसको। नहीं, कोलम्बिना के लिए प्री फार्म कर ले, कोलम्बिना के लिए भी कर लेंगे भाई प्री फार्म, अभी 1 महीने है ना। मैंने खत्म भी कर दिया प्री फार्मिंग एक्सेप्ट दोज विच विल कम इन लूनर 4। अच्छा अच्छा। The tides beckon. Settle down. Wind strike. Silence. माइक व्हाट स्टैटिक आ रहा है? स्टैटिक कब आया बे? अभी ठीक है। चालू ज्यादा सुनाई पड़ रहा है तुम लोग को। बेबी छोड़ के भाग जाएगी उसकी। 25 साल उम्र ज्यादा है। कितना साल ज्यादा है मेरे से? 4 साल। 25 साल में जवानी नहीं ढलती भाई। नहीं, फिर आ रहा गेम से स्टैटिक आ रहा है। अच्छा हाँ। चैट किधर गई तेरी चैट? कोलम्बिना प्लस नेफर का बॉस सेम है। ओह अच्छा। अभी 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 बताना स्टैटिक नहीं आ रहा ना। मिल गया जो निकलने कैसे डरे ना के वाओ। What are your superpowers again? I'm rich. वाओ। मेरी 57 पीटी 50 ड्यूरिन जीत जा और क्या। थैंक यू फॉर द 20.69 मुजान। और ये अपने इस पे किसकी फोटो लगा रखा है बे टीपी पे तूने? ये लो लोटस बिस्कॉफ खा लिया। ये क्या है बे? लोटस बिस्कॉफ क्या है? एक मिनट, वेयर इज माय हार्डले? गे एस नीवी से नहीं खेल रहा मैं। नाइन 43 AM ओके। शिलोनेन को
227 यार, बहुत ज्यादा यार नहीं हो गया ये? सी यार, अब ठीक है। हेलो अमन, सांझी के चैट, डो नॉट मेक इट वियर्ड, सच में बच्चे देख रहे हैं। सेकंड लास्ट वीक क्या 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 क्या? जापान टू इंडिया कॉलिंग मिस्टर चिराग, बच्चे देख रहे हैं, उन्हें कार्टून वाली हरकत करके दिखाओ, मतलब क्या होता है आए? ले इसे पता ही नहीं, लोटस बिस्कॉफ क्या नहीं पता है भाई मुझे, लोटस बिस्कॉफ क्या है यार? अब तुम किसी भी रैंडम चीज का नाम लोगे और मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे पता होगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अरे ये सियोनार और नार लेना, ये सीजर आर जैसा डैमेज क्यों दे रही है? भाई 1.25 लाख तक की गई यार ये इस टीम में। पेट्रा पेट्रा बोल रहे हैं, सिंडर सिटी और वेरी डेसेंट वेंडर दोनों मिल रहा है। वीवी लो, मेरे को चैट चैट पढ़ के भी इग्नोर कर दिया। मेरे को क्या चीज़ होगी मुझे ही नहीं पता। 10 रुपये का मिलता है जी, 10 रुपये का मिलता है। मैं हूँ डोरेमोन फॉर जापानी बच्चे। क्या हेक? हेलो सिद्धार्थ, अरे बिस्कॉफ खाया तो होगा वो, वही बोल रहा है ये। बिस्कॉफ है क्या भाई? कैसा क्या है? खाते मतलब ठीक है खाने की चीज, लेकिन क्या है वो? खाने की चीजें बहुत कुछ होती हैं। ओह थैंक यू फॉर द मेंबरशिप ध्रुवा। भाई साहब स्ट्रीम करा और 3 मेंबरशिप की कमाई हो गई। 18 एक मिनट कुछ कैलकुलेशन गलत फील हो रहा है मेरे को। 18 ऐसा तो नहीं होता है भाई। कुकीज है? अच्छा कुकीज है ये? अबे हट बे, लूना से पूछ, लूना बताएगा फिर तो। ₹54 की कमाई हो गई भाई। छी मर जाओ क्या? क्या कैलकुलेशन? अरे वही तो बोला, कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लगा भाई मुझे। वो बोलने के बाद मैं रियलाइज किया। और मैं जो 12 रुपया दिया, अच्छा हाँ 12 रुपया वो भी। कहाँ है तेरी चैट बे? किसकी चैट? ब्रो इस बार का स्टैजन बहुत हार्ड लगा, पता नहीं भाई मैंने तो नहीं किया। सांझे की चैट पढ़नी है ना, लॉस करनी है। 2 कॉन भी नहीं चाहिए था। BC70 पुल पिछले रियन किया और 50 इस बार होगा। नहीं मिला ना C5 बेनी भी। C5 भी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 20 का सुपर चैट क्या? 20-20 का सुपर चैट भाई, 15-20 हजार का सुपर चैट करो यार, फिर तो कोई फायदा नहीं। 20 का सुपर चैट में मजा नहीं आता भाई, बोले ज्यादा लालची हो रहा। नहीं मिल रहा, छत से कूद जा, मिल जाएगा। तू नहीं मिलेगा उसके बाद, वो बात अलग है। 15-20 हजार, हाँ तो मतलब थोड़ा अच्छा अमाउंट है ना, तो मतलब थोड़ा हमारी जेब में आए मोटा पैसा। मन में करके बीदर के सुपर चैट, बीदर के सुपर चैट तो ही नहीं है, मन को धर लिया। चैट क्या हो गया? 10 पैसे कर करके 100 रुपए दूंगा एक दिन। 10 पैसे कर करके का है भाई? एक तो पता नहीं, इससे याद आया मेरे को,
कोई बंदा पता है मेरे को 3 दिन लगातार 2 रुपए 3 रुपए करके भाई, पता है चैनल से कोई वो गंदा इंसान, वो कमीना इंसान चैनल पे था वो, एंड वो साला जो मैंने यहाँ पे यूपीआई आईडी मेंशन कर रखी है ना, उस पे वो 2 रुपए 3 रुपए डालता था भाई, पता नहीं डेली स्ट्रीम ऑन करने के बाद, और मुझे ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है 2 रुपए आ रहा है आपको, इसकी माँ की आंख 2 रुपए भाई तू मेरे से 20 रुपए ले ला यार, लेकिन 2 2 रुपए क्या दे रहा है यार। हेलो प्रेम जी भाई, वही तो यार, क्या है भाई 2 2 रुपए करके डालता है। चैट चैट क्या चैट मिस होगी सांझी। अबे साले वैसे नहीं कमाना भाई। 15-20 हजार देखी भी है कभी, कुछ दिन पहले ही देखा भाई, कॉलेज की फीस पे करते वक्त। किधर है तेरी चैट सांझी? बेन स्टॉक कितना तो उसने इग्नोर नहीं किया था। और खेलो फ्री फायर। यार 30 रुपए का स्पॉटिफाई नहीं दे रहा और इसको 20 रुपए देगा। तुझे तू तो पहले पैसे देता, अब तेरे को स्पॉटिफाई मिलेगा भाई, ऐसे नहीं मिल रहा भाई स्पॉटिफाई वगैरह। फ्री फंड का माल नहीं मिलता इधर, एनजीओ खोल के नहीं बैठा मैं। वैसे आपका फेयरलेस हो गया क्या भाई? मेरा मैनेजिंग हो जाता है, मैं उसी में खुश रहता हूँ, फेयरलेस की बात कर रहे हैं यार। क्या यार तुम गलत आदमी से ये क्वेश्चन पूछने आए हो। फीस पे करते वक्त मेरे अकाउंट में 50,000 था। छी कमी है भाई, इतना तो मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देता हूँ ऑब्वियसली, जो मेरी मम्मी ने खर्चे किए हैं। मैं इतना खर्चा करूँगा मेरा बाप मुझे डिसोन कर देगा भाई। मैंने सिंह तो हलवा है। अच्छा डिस्कॉर्ड से होता है रिव्यू? अच्छा रिव्यू कराना है क्या किसी को? मेरा चैनल रिव्यू कर दो इसी बात में। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, कर दूंगा, यहीं से कर दूंगा। चलो डिस्कॉर्ड में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, इधर से ही कर दूंगा, बट थोड़ी देर वेट कर लो जरा। मैं मैट्स थोड़े जमा कर लेता हूँ। इन दो ना लूना ना टॉक्सिक दोनों साले कामचोर है भाई, मैट नहीं जमा किए मेरे अकाउंट में। चैट चैट अब तेरे क्या 20,000 का बात सुन के मन भाई को रात को मेरे को क्या रात को मेरे को फर्स्ट मरेगा क्या? बीसी कोचिंग फीस था 2.5 लाख। कोचिंग फीस 2.5 लाख। 30 लाख पे रिव्यू स्टार्ट होगा, सो लाइक एवरीवन। 30 लाख 20 में नहीं यार, ऐसे ही कर देते हैं जा, ऐसे ही कर देते हैं। वैसे मुझे आर्कन क्वेस्ट करना है भाई, मैं मेनली वो करने बैठा हूँ अभी, रिव्यू करने थोड़ी बैठा हूँ मैं, मेनली बोला हूँ मैं। अरे मुझे नहीं क्या जेडी मिस हो गई भाई। साले किधर है तेरी चैट मुजान? 15-20 हजार देखे भी है कभी, ये भी पढ़ तो ली है जा, ऐसे ही दे देता है। व्हाट द हेक, यू वांना ट्राई दिस ऑन माय अकाउंट, यू वांना बाय माय मेंबरशिप? लगता है गया नहीं, लेट मी सेंड अगेन। 58 पीटीए 4 स्पिन है और कोलंबिना जेबाई करूंगा, लेट्स सी। 58 पीटीए 4 पुल्स है और न करे देखो कोलंबिना और जेबाई दोनों। ठीक है करो 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 करो, हमें क्या करो करो। और क्या कलेक्शन करना था यार मेरे को? ओह you need to get at least 10 members in your character should be क्या well built, thank you, talk further talk further भाई। भाई भाई ये सब तो प्रोफेशनल हो गए भाई, एकदम खतरनाक वाले।
I'm broke, so I can't buy membership also. Even if I had money, I can't buy because I don't have cards to pay through YT. Do you have UPI? UPI भी accepted है भाई इधर तो. जो भी मुझे बेशरम समझ रहा है, हाँ भाई मैं बेशरम हूँ. पैसों से मजाक नहीं भाई. कर लो, लेकिन उसका एक अच्छा पैसा लगा देना. करेक्टर रिव्यू करता हूँ, करता हूँ. इसका 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 दांत मुंह तोड़ देंगे भाई किस दिन हम बोल दे रहे हैं. कुल में इधर एक दूसरे की झूठी आइसक्रीम खाते हैं. क्या स्पॉइलर है भाई, क्या स्पॉइलर है. तोड़ दे, क्या तोड़ रहा है भाई, कौन किसका तोड़ रहा है. डोटोरे ने लास्ट में. भाई नहीं, नहीं, मत दो, मत दो. Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. कि बना दो इसको, स्पॉइलर दे रहा है. भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बैन को बना क्यों पढ़ रहा भाई मैं. हो गया भाई. चलो जिसका भी वो है, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं यार, वो कैरेक्टर रिव्यू वो दे दो. इस पैच में है एक आकन, क्या इस पैच में है ही एक आकन, कुछ उसका भी स्पॉइलर दे दो. एक ही एक्ट है क्या, तो वो एक क्यों बोल रहा है. ओह थैंक यू फॉर द मेंबरशिप. थैंक्स. ये कुछ एवन नाम जाना पहचान नहीं आ रहा मेरे को. राजीव यार, थैंक यू फॉर द मेंबरशिप. 2 एक्ट है तो ये एक क्यों बोल रहा है ये. एंड में चिराग इवेंटी किस करते हुए, व्हाट द हेक ब्रो. नहीं चिराग एंड कोलंबिना बोलता तो मजा भी आए. अरे नहीं मतलब अगन क्वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है पूरे पैच में. अच्छा सरिता का नाम रिवील किया आज. सरिता का नाम रिवील हो गया है. किधर है तेरी चैट रे, और मैंने 5 बार भेज दिया. क्या भेज दिया, तेरी चैट नहीं आई भाई. दैट टाइम्स आई फॉरगॉट, भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता. चैट चिका चिका. देखो 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 क्या कहते हैं, काफी दिन हो गए हैं स्ट्रीम किए हुए. थोड़ा सा ना वो हैबिट सी उतर गई है मेरी, तो थोड़ा सा ना मेरे को वो करने दो, फ्लो में आने दो दोबारा से. चाहे वो एनएफआर दोनों को किस सीन रिवील हो. अरे क्या बात है. सरिसा का रियल नेम चिगवान, व्हाट द हेक ब्रो. हम C6 में भी C6 फिर C6 सिटी और आर्ले सब यूज कर रखे हैं. अच्छा आज रिव्यू है क्या. रिव्यू तो मैं डेली ही कर लेता हूँ, बहुत बड़ा सा नाम है. ओके आर्ले देखने थे ना. C1 R1 है, सिंगल ग्राउंड है. ठीक है. ओके ओ अच्छा नाइस, अच्छा बिल्ड है. 2.2 के ऑलमोस्ट अटैक आ चुका है. T1/229 का रेशियो भी है, 135 VM भी है. वेरी गुड.
ओह नाइस, ठीक है। ठीक है। पकड़ा गया। ये पीस भाई मिड है, इसको ठीक कर सकता है भाई। तुम अपने सैंड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लो, भागे तुम्हारे सारे पीसेस भाई काफी अच्छे दिख रहे हैं। बढ़िया है। गाइस देखो, एक से इंजन बनता स्टार्ट होने का टाइम दो, नहीं तो मेंटेनेंस मांग लेगा। आज डुओलिंगो के 60 प्रीमो मिले भाई। डुओलिंगो का क्या सीन है यार, ये जो प्रीमोज मिल रहे हैं। बढ़िया बिल्ड है यार, काफी अच्छा बिल्ड है। थोड़ा मतलब सैंड्स में भी मतलब एग्जैक्ट मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है यार, रहन दो, कौन इतना इन्वेस्ट करे यार। मस्त बिल्ड है, आराम से यूज करो। चैट चैट ना पढ़ो तो तुम्हारा से पेपर में री आएगी। अबे साले, सारे सब यूज कर रखे हैं। अच्छा, अब राज की भी चैट मिस हो गई। ओके, और किसका था भाई रिव्यू? कसम से मुझे पता नहीं इधर देखने में क्यों तकलीफ हो रही है भाई। यूरोप सर्वर में रिव्यू कर दो, क्या यूरोप सर्वर में रिव्यू कराना है? वेट करो, सबसे लास्ट में करूंगा। Love you. चैट का है फिल्टर हो रहा है इस साला। मुझे नहीं पता पहले डोलोंगो से कैसे प्रीमोज मिलता है। कुछ क्वेस्ट वगैरह है उसका, तुम्हारा गेंशिन का, उधर कंप्लीट करना होता है एंड देन उधर से होता है, मतलब पता नहीं। भाई 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 भाई, आराम आराम, थांबा थांबा। फिर अगर यहाँ पे स्पैम करने लगे तो फिर मैं डिस्कॉर्ड के लिए बोल दूंगा। रेडन, बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर किसी और का करना है देखो जरा। रेडन तुम्हारी, अच्छा C3R1 राइडन है। डिस्कॉर्ड पे दिया वीडियो, ओके। 81 से व्हाट द हेक भाई, काफी हाई CR है यार। 80 CR, 161 का क्रिट डैमेज एंड 284 ER। नाइस। ओके, HP पे रोल वेस्ट है बट स्टिल दैट्स अ गुड पीस। एस बर्न, ऐसे आर्टिफैक्ट्स मुझे अगर अपने आर्ले के लिए मिल जाते तो कितना अच्छा हो जाता यार, मजा ही आ जाता। मुझे नहीं मिलते भाई ऐसे आर्टिफैक्ट्स। आर्ले देखूं, आर्ले में तो कमी निकाल ही दूंगा। 2.2 की अटैक। क्रिट रेट किधर है? कहाँ है तुम्हारे आर्ले का क्रिट रेट? एटलीस्ट 75 तो चाहिए भाई। अब कितना अच्छा लगा भाई, इसके बिल्ड में कमी निकाल कर बहुत अच्छा लगा मुझे, मजा आ गया। लगता है शाम हो गई। शाम नहीं हुई, अभी दिन ही है भाई। ओ भाई ये क्या वंडरलैंड, है? अभी ये वंडरलैंड स्टेटस क्या है भाई? राजीव, आर्ले तुम्हारी अच्छी नहीं है, आर्ले तुम्हारी बेकार है भाई। बाकी रैडन का तो बिल्ड बहुत अच्छा है भाई। रैडन ऐसे पीसेस देखकर जलन तो भी थोड़ी सी, लेकिन चलो ठीक है। स्टिल 5 लाख से ज्यादा थोड़ी मारेगी। इतना तो मेरी मौविका मार देती है। हेलो मिस्टी। कौन है 10 साल का बच्चा भाई? मालिक मेरे वेरेसा भी रिव्यू कर देते। 1810 9 लिखा मैंने। 1810 67044 670 व्हाट द हेक भाई, मैं कीबोर्ड तक टाइप करने में गलत कर रहा हूँ। 1810, ओके मैं 1 लिखना भूल गया और मैं बौखला रहा हूँ। कॉलम साले। मैरिडन होता क्या मैरिडन होता हिट्स होगा भाई। 700 की ना पर स्टिल मिड यार। इतना तो मौलिका क्रेड मिस करके मार देती है। मैं वो क्या कह रहा था ना कि अगर यही सेम आर्टिफैक्ट ड्यूरेन पे डाल दूं ना तो वो ज्यादा DPS निकाल देगा।
ओके क्या देखना था यार इसका, वेरेसा देखनी थी इसकी। 74 to 24, ओके रेशियो अच्छा मेंटेन किया है, 1700 अटैक है। वेट से तो मजाक कर रहा है, ठीक है। ओके ठीक, ओके ओके ठीक है चलेगा। ये सैंड्स में ही था भाई, कुछ खास नहीं था सैंड्स। ओके सर्कुलर ठीक है। ए यार काम चलाओ ही है, पीसेस काम चलाओ है तेरे अभी तो, और इम्प्रूवमेंट कर। गॉबलेट तेरा ठीक है, गॉबलेट एंड सैंड्स ठीक है। फ्लावर में इम्प्रूवमेंट होगा, फेदर में भी इम्प्रूवमेंट होगा। सैंड्स रहने दो। नहीं यार सैंड्स भी बड़ा ही, मैंने 13% का डिफेंस को अटैक समझ लिया था, ये भी मिडी है। गॉबलेट एंड सर्कुलर छोड़ के सब चेंज होगा तेरा, पता नहीं क्यों बोला तो। एंड नॉर्मल अटैक क्राउन क्यों नहीं है भाई इसका? प्लंज कैरेक्टर है, नॉर्मल अटैक एंड बर्स्ट दोनों क्राउन कर रहा हूं, तो डैमेज नहीं देने वाले भाई ये। ना ओवरलोड टीम में यूज करना है, इलेक्ट्रो चार्ज टीम में मजा नहीं आता भाई, पता नहीं क्यों इससे। रिरोल किसको करूँ? चारों को। रुक जा बताता, रिरोल किसको कर ले तू। इसको कर लो, इसका प्लूम तुम्हारा सबसे बेटर है, क्योंकि इसमें अटैक एंड ईआर है, तो ठीक है। मतलब अटैक है एटलीस्ट एक सबस्टैट तुम्हारे पास, बाकी सब में एचपी और डिफेंस है भाई, उससे तो बेटर ही है भाई। मेरा चैनल चेक कर लो प्लीज, आई एम 10 year old, माई यूआईडी। भाई तुम 10 साल के हो ना? आ गया भाई, आ गया मैं। लैग आ गया, आ गया मेरा, मेरे लैपटॉप के नशे हैं, ठीक है मेरे लैपटॉप के नशे हैं। आ गया मैं, आ गया। चैट मेरी फिशल एंड स्कॉफिया, ओके ओके कर रहा है। ए मोमो ध्यान रखना कि किसका रिव्यू है, साले काम कर ले। अरे कर देते हैं भाई, जा बच्चे खुश हो जा। भाई देखो देखो देखो, अटैक कम है, 1700 तक का अटैक बेटर होगा। सीआर अच्छा, क्रिट डैमेज एटलीस्ट 200 का होना चाहिए, ठीक है। 200 का क्रिट डैमेज होना चाहिए आर्ले पर। एक मिनट ई, अबे फक भाई, ईएम भी था क्या? हाँ ईएम भी ठीक है, 100 तक का ईएम ठीक है आर्ले पर। ये क्या है, क्या है ये? मैं जब सेकंड अकाउंट में वेरेसा पुल कर रहा, मैं 1088 टैलेंट रहेगा सिग्नेचर सेट पे, 4 पीस नहीं मिल रहा। सो फॉर नाउ 4 पीस ऑब्सिडियन दे रहा, 45 और 288 विद 1.8 के अटैक। हाँ सही तो है, मेरा भी मैं मतलब मेरी वेरेसा भी कुछ ऐसी थी, 260 क्रिट डैमेज ग्राउंड कुछ था जब मैं उसको ऑब्सिडियन पे यूज़ कर रहा था, बट अटैक मेरा 1.7 के ही था। ऑब्सिडियन के इतने भी कुछ खास अटैक नहीं थे मेरे पास। भाई मेरा रिव्यू करोगे क्या? रिव्यू भाई, मैं तो आर्कन क्वेस्ट करने बैठा था यार। मैं आर्कन क्वेस्ट करने बैठा था भाई। चैट एक मिनट की चैट, ड्यूरेंट नेफर ये, इसको भी रिव्यू कराना है। वो मोट डिमोशन नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया भाई, जान दिया साले को, ये भी क्या याद रखेगा। ओके इसको ठीक कर लो, ये डबल क्रिट लगाओ, बाकी पीसेस तुम्हारे ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। ओके मुजान यूरोप सर्वर मैं भी हूँ लास्ट, हाँ हाँ इंडिया को जान दो, फिर यूरोप सर्वर का करता हूँ, ठीक है। कहाँ है भाई वेडी, अगली वेडी किसकी है? मुजान ही वेडी दियो। डिस्ट्रैक्टेड चिराग, अरे क्या बोलूं भाई, नित्या नाम है ना तेरा? साला गर्लफ्रेंड का नाम रखा है रामखोर। इसकी गर्लफ्रेंड से मुझे कुछ याद आ गया, इसकी तो जी मार दी थी मैंने। ओके क्वेलर, नाइस वेपन। क्यों क्राउन किया है इसको? ईआर किधर है? 150 से 160 तक का तो ईआर होना चाहिए भाई एटलीस्ट। सबस्टैट में ईआर नहीं है तेरे, सबस्टैट में ईआर ला।
हाँ 150 तक का तो यार होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर काम नहीं करेगी, मतलब एनर्जी इश्यूज आएंगे। बाकी तो सही है भाई, तूने क्राउन भी कर ही दिया है तो क्या ही दिक्कत है। और किसका है? हुसैन के बाद मुलिशियन। मुलिशियन कौन है भाई? मुलिशियन कौन है? अटैक वेपन है तो ER सेंड दे दे। आ, भाई वो क्यों में जो वो मुलिशन करके था वो कौन था भाई? रे रे चैट, क्या चैट भाई, क्या चैट? मुजान टॉप 1% है इज्जत से। व्हाट द हेक? 893203 875। अबे यही तो देखा भाई मैंने, हट वे। टॉप 10 पर हट। टॉप 0.1% लाया भी तो किसको? एस्कॉफिया को। कितना डैमेज दे देगी? आधा दिन में 5 लाख। 118। यो कोई बताओ रे, वेरेसा CR या CD किस पे एसेंट होती है? बोल तो रहे हैं लोग CR पे होती है। ये देखो ना, है ना वेरेसा का ये चमचा सांझी, ये बताएगा तेरे को। 30K पर टिक। CR हो गया मतलब और 60 होगा 28 CDBC। कैन यू टेल दिस इज माई टेल इज माई फ्लिंस आर्टिफैक्ट? ओके। हम्म। मतलब मैं टाइटल में आज अकाउंट रिव्यू लिखा तक नहीं हूँ, आकन कुछ लिखा हूँ मैं। एंड अकाउंट रिव्यू के लिए लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। एक काम करो, ठीक है, एक काम जिनका भी रिव्यू बचा है, ठीक है, सबके सब डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। यूआईडी रिव्यू वाला सेक्शन है। 1:30 तक अपनी यूआईडीज वहां पर डाल दो। तब तक मैं जो भी 1:30 तक मैं जो भी डाल देगा तो उसका रिव्यू हो जाएगा। बाकी आकन को इसके बाद मिलना, उसके बाद मेरे से, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम मैंने इसलिए दिया क्योंकि तुम लोग इंतजार कर रहे थे। तो जाओ करो फटाक से। तब तक मैं थोड़े और मटेरियल्स वगैरह जमा कर लेता हूँ। मैं तो कब का दे दिया भाई। हाँ हाँ ठीक है, उठा ले रहा भाई, उठा ले रहा था। डिस्कॉर्ड भी दे रखा है, उसका उठा लेता हूँ। साला बोला और 1 मिनट भी नहीं लगा भाई लोगों को वहां पहुंचने में। हाइड्रो ड्रैगन कौन है यार? ये हाइड्रो ड्रैगन है क्या स्ट्रीम पर? 1:17 को ही कर दिया था। हूं ना? ओके। डिस्कॉर्ड भाई, जो भी डिस्कॉर्ड पे डालोगे उसी का रिव्यू होगा भाई। अभी चैट से नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि चैट में तुम लोग ज्यादा भीड़ लगा दिया फिर। अब C3 यार ले। 2.2 के अटैक 76 और 230। ओ 2.2 के अटैक, 2.26 के अटैक, 76 यार, 230 क्रिट डैमेज, C3 आर्ले एंड 166 का EM भी है। माँ के आग साला, इसने मेरे आर्ले के बिल्ड पे मुंह दिया भाई। एंड यहाँ पर डिफेंस पे रोल है तब जाकर इतना अच्छा रेशियो। अगर यहाँ पे भी EM आता था तो ये बंदा 200 EM पहुंचा देना था भाई इसको तो। 18 का CR विद 11 का CD भी है। ओके नाइस, विद EM भी है। नाइस, काफी अच्छा बिल्ड है यार, काफी अच्छा बिल्ड है भाई। ऐसा ऐसा बिल्ड चाहिए मुझे भाई मेरी आर्ले के लिए। रिव्यू में एलिस आई है पहले, एलिस
बहुत बढ़िया बिल्ड है भाई। 76:30 का रेशियो भी बहुत सेटिस्फाइंग सा रेशियो है। ईएम भी अच्छा है, अटैक भी, मतलब कोई कंप्लेंट्स निकालने को नहीं। बट हाँ, गॉबलेट में एक रोल वेस्ट तो हुआ है भाई, एक रोल गॉबलेट में वेस्ट तो है। तो देखना, अगर गारंटेड वाले रोल्स में करके उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो तो यार 80 तक का, अगर 80:30 का रेशियो बन जाएगा ना, फिर तो मजा सा ही आ जाना है। मतलब मजा तो अभी भी आ रहा है। एंड C3 आर्ले है, तो ये जब मेल्ट मारती होगी तो भाई 1 आध मिलियन मार देती होगी यार। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके लिए, 1 मिलियन तो आराम से मार देती होगी। ओके सांजी, एमिली एंड फुरीना। 71 लेवल पे क्यों है भाई? साला इसका वेपन भी निकाल कर रखा है। ठीक है, क्राउन कर लियो। रेशियो तो ठीक ठाक है, मतलब CR70 के ऊपर का रखने का ट्राई करो, बढ़िया होगा। हेलो राहुल। सीटू सितलाली भी है, फिर तो 1.5 मिलियन मारती होगी भाई। 1.5 मिलियन तक जा सकती है वो C3 आर्ले। सीटू सितलाली 20% का, और तुम्हारा वो पायरो एंड हाइड्रोडेज देती है ना शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। यार कहाँ है? अच्छा हाँ भाई, यार तो बिल्कुल ही खत्म है। ले आओ यार, कितना कितना यार लगता है? 150 तक में लग जाता होगा यार इसको, क्योंकि भाई मैंने एमली इतनी खास उनकी है, एंड ना ही एमली का कोई उतना रिव्यू वगैरह कराता है यार, तो मेरे को कुछ बढ़िया से उतना आइडिया नहीं है यार अभी भी। सीधु सितलाली टोटल 40 पावर इज लो एंड 250 EM। अरे भाई, ये 500-600 EM पे आर को चला रहा है भाई ये तो। और क्या था सांजी? एमिली एंड फुरीना। ईआर किधर है? तुझे मैंने कितनी बार बोला साले, ईआर बढ़ा अपनी फुरीना पे। देख मैं बता रहा हूँ, इधर एचपी का सगलेट दे दियो अगर C0 है तो, एंड ईआर का सेंट दे दियो, मस्त हो जाएगा। इजी यूज कर भाई। जिनको भी रिव्यू कराना है डिस्कॉर्ड पे एंट्री कर दो। 1:30 तक हो गया, अब तो हो गया, अब रिव्यू नहीं हो रहा भाई। अब रिव्यू आर्कन क्वेस्ट करने के बाद होगा, क्योंकि मुझे आर्कन क्वेस्ट भी करना। अगर मैं रिव्यू करने लग गया तो भाई हो गया फिर तो मेरा। ड्यूरिन एंड नेफर। ड्यूरिन C1 ड्यूरिन, होप सो R1 भी होगा। व्हाट द हैक भाई, C1 ड्यूरिन पे साला वुल्फ फैंग लगा गया भाई, हट यार। एम्बलम पे बिल्ड की हो, चल जाता है ड्यूरिन एम्बलम पे। एक मिनट, उसका जो सब डीप, एक नहीं नहीं, उसका जो सब DPS है वो उसके बर्स्ट पे आता है, स्किल पे आता है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ड्यूरिन का। डैमेज डैमेज किससे आता है, बर्स्ट से किस स्किल से, ये बता। अच्छा। हम्म। हाँ सीनियर 150 to 180 यार भाई, काफी यार चाहिए भाई। एमिली को एंड इन डिस्कॉर्ड हो गया तो हो गया। डैम पाइमन लोर लेट्स गो, व्हाट द हैक। डाल दिया था, किया नहीं। व्हाट? तुमने उधर डाल रखा है तो हो जाएगा भाई रिव्यू। चैट चैट सांझी की क्या चैट हो गई अब? सांझी चैट चैट ही चिल्लाता रहता है। बिल्डिंग, हाँ ठीक है भाई, थैंक यू भाई, आप बिल्ड कर रहे हो, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। सिग्नेचर आर्टिफैक्ट का वेट कर रहा हूँ, इसलिए काम चलाओ बिल्ड किया हूँ ड्यूरिन को। अच्छा, क्रिट होता क्या है? क्रिट होता है क्या? आए, होता क्या? 74 175, ठीक ही है, ठीक ही है। क्या है ये क्या है भाई? तुम कुछ ज्यादा ही काम चलाओ बिल्ड नहीं बना दिया ड्यूरिन का भाई। मतलब ठीक है, तुमने काम चलाओ बिल्ड बनाया है, मेरे को समझ आता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही काम चलाओ नहीं है ये। एंड वाई C1 क्या करते हैं ड्यूरिन का?
कोई मुझे बताएगा ड्यूरेंट का सेवन करता क्या? मोमोज कर छोड़ के सब निकाल लेगा। ड्यूरेंट को अटैक चाहिए इसलिए अटैक भी देखना पड़ता है। अभी 30 दिन बाद न्यू सेट आ रहा है, सो सही बिल्ड है। ठीक है मतलब, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। मतलब आर्टिफैक्ट तो ढंग के डालो यार कम से कम। वैसे ड्यूरिंग सपोर्ट ज्यादा है। नहीं भाई, C6R5 करो, देखो कैसे डीपीएस बन जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे आले जरा डैमेज लगेगा भाई वो। रिव्यू मॉबी का, हाँ। रुक जा भाई, इतना टाइम हो गया नेफर को आए अभी तक अपग्रेड नहीं किया हो यार, वाई? 53 304 686, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बिल्ड है भाई। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं तो। गुड। यहाँ पर रोल्स बेस्ड है, एचपी एंड डिफेंस। बाकी ऑफ पीस के हिसाब से बहुत मिड है ये, बहुत मिड है। बट स्टिल कुल मिलाकर बिल्ड तुम्हारा ठीक है, तुम आराम से यूज कर सकते हो, तो कोई सीन नहीं है। सही है। चिराग भाई जाता हूँ 3 बजे आता हूँ। क्यों 3 बजे? ऐसा क्या है भाई? 1.5 घंटे बाद तुम क्या, तुम मतलब जाओगे क्यों? ऐसा क्या करना, गर्लफ्रेंड बुला ली क्या? ध्रुवा भाई, चिराग को जो साला पढ़ ही दिया था भाई मैं, मुजानी की चैट भाई पढ़ ही दिया था मैं तो। बच ही गया। ओके, ट्रिपल क्राउन, ये देखो मूवी का मेंस। बैंक जाना है, थोड़ा काम है। अरे लगता है सुपर जेट आने वाली है भाई। पड़ेगा 237 विथ ईएम कम है यार, 250 तक का ईएम दे एटलीस्ट भाई। सीआर 50 तक का सीआर दे, 2 क्रिट डैमेज थोड़ा कम भी हो जाएगा चलेगा, बट 50 तक का सीआर, 210 220 क्रिट डैमेज भी जा रहा है तो ठीक है, एंड 250 का ईएम डाल। अटैक अच्छा है। वेट अ सेकंड, ईएम का सेंस यूज कर रहा है ना? हाँ ईएम का सेंस यूज कर रहा है, सेंस ओके। ये चेंज कर भाई, क्या है ये? एचपी पे रोल भाग रखा है पूरा। चेंज करने तो रीशेप कर ले उसको। क्यों भाई? वाई सिंगल क्रिट? इतने टाइम हो गए मोविका को आए हुए, अभी तक तुमसे एक फ्लावर नहीं बन पाया कि एलिक्सर खर्च करके? हरामी कुत्र्या, तुला माझी चॅट दिसत नाही? नाही दिसत नाही, दिसत नाही। 50 तक का यार, एंड मोर ईएम। अबे कब से मैसेज कर रहा, तेरी चैट फिल्टर हो रही होगी। दूसरे आईडी से आ गया, वेरी गुड। मल्टी एंड क्या होता है ये, क्या नाम है भाई? ओके, एक यूरोप सर्वर का बच गया, उसका रिव्यू करके देन आई विल स्टार्ट द कॉन्क्वेस्ट। बैन कर लो मैं। जिसने तुमको फ्रेम किया था मेरे अलावा भी कोई यूरोप सर्वर में खेलता है? हाँ ये बंदा है ना, मल्टी है ना, ये क्या नाम है यार इसका, समझ नहीं आया मेरे को इसका नाम। नेफर देखनी है। लेट्स सी योर नेफर। 878 EM। ओके, अच्छा। सनी मॉर्निंग स्लीप इन, ये वेपन का जो भी है वो पैसिव वगैरह कुछ किसी को पता है? क्योंकि मैंने ये वेपन ही पहली बार देखा है। सनी मॉर्निंग स्लीप इन, मुझे नहीं पता भाई। एंड वेपन का ऐसा नाम कौन रखता है, सनी मॉर्निंग स्लीप इन? ये कैसा वेपन है भाई, ये कौन सा वेपन है? मैंने पहली बार देखा है कसम से। वाह, ये वेपन से ईएम आता है बहुत सारा। 50, हाँ 55 सीडी वाला दे दो, वो ज्यादा बेटर है भाई। यूरोप एक्सक्लूसिव वेपन है लॉल। अबे ओ गवारो,
ये मिजुकी का वेपन है। छी, मिजुकी का वेपन है। वही तो मैं बोल रहा है यार, तुम लोग यार क्या भाई, नूब हो भाई तुम लोग। क्रिट रेट 50 तक का क्रिट रेट रखो। क्रिट डैमेज तो क्योंकि तुम लगाओगे तो तुम्हारा तीन, फिर भी यार मतलब 280 तक का क्रिट डैमेज डाल देना सीडी वेपन के साथ में। ईएम तुमको उसके पैसिव से भी मिल जाएगा। ओके 20 18 19 ओके। पीसेस तुम्हारे कुल मिलाकर ठीक ठीक से हैं। सैंड्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तुमको, मतलब 60 का डिफेंस एंड 11% एचपी सैंड्स में इंप्रूव कर सकते हो तुम। बाकी चलेगा काम तुम्हारा तो। चलेगा चलेगा चलेगा, वो वेपन लगा दियो जरा ठीक रहेगा। हाँ चल जाएगा, उतना भी दिक्कत नहीं है। ओके इश बिल्ड 1400 यूएम हो जा रहा था। हाँ ठीक है, मी गोइंग सिटी और कोलम्बिना। अच्छा कौन सीजर और कोलम्बिना पुल कर रहा है? लूना करेगा ना 300 पुल में सीजर और वन। लमा भी देख लो। ओके 1200 ईएम विथ नॉट क्राई क्राफ्टेबल एंड 188 ईआर। वेरी गुड वेरी गुड। ईआर अच्छा खासा निकला है, 13 का सर्कलेट में, 16 का गॉबलेट में, 22 का सैंड्स में एंड 16 का फ्लावर में। बस एक ईआर की कमी रहेगी तो तुम्हारी इसके अंदर। बट 40 का ईएम एंड ओके ओके। फेदर फेदर एक फेदर में तुम ईआर ले आओ, 40 का ईएम है ना, उसके साथ में अगर ईआर आ जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। लेकिन ठीक है, मतलब 188 ईआर भी काफ़ी है भाई। लम्हा आराम से 188 ईआर में काम चलती है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो अकाउंट रिव्यूज डन हो गए, सारे अकाउंट रिव्यूज हाँ हो गए। क्या हाल मजदूर आदमी, साले बिहारी में तो मजदूर बोलेगा तो मेरे को। साले तेरी तो डोरा। चलो भाई आकन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट कब रिव्यू? नेक्स्ट अब आकन क्वेस्ट खत्म होने के बाद रिव्यू होगा। अब मैं जा रहा हूँ आकन क्वेस्ट करने के लिए। जिनको रिव्यू करना है भाई आप वेट करो तुम लोग। चल मैं जा रहा। कहाँ जा रहा भाई तू? अरे ना रे बबुआ, साला तो जानबूझ के मुझे टारगेट करके बोल रहा है ना डोरा तेरी तो। ओके सो ये है इवेंट भाई मुजान, ठीक है आज ये नहीं नहीं आज नहीं, ये वाला इवेंट कर ले भाई खुद से। मैं इवेंट कर दूंगा तेरा, ये वाला इवेंट कर ले खुद से ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का भी ये वाला इवेंट नहीं हुए रखा है भाई। अभी मुझे अकाउंट क्वेस्ट करना है, फिर ये इवेंट करना है। ड्यूरिंग स्टोरी क्वेस्ट कर देना, ठीक है कर दूंगा। एक सेकेंड, मेरे पास फाउंटेन में घूमूं एक बार। एक मिनट, बुक्स वाले वो किधर, लेंस किधर है यार? बुक्स वाले लेन गायब हो गए क्या? ओ ये रहे अपने अकाउंट में। ओ या बाद में करूंगा, स्टाइल करने के लिए बहुत टाइम है भाई। Everybody stand back. One with nature.
अरे हाँ, तू बात तो सही कर रहा है यार। वहाँ रेजिन खर्च करने से भी फेदर मिलते हैं। रेजिन करो। याद आ गया, मेरे को ध्यान नहीं था भाई। परसों लाइव स्ट्रीम है किसका? मेरे को ध्यान नहीं था, हराम खोर। एक मिनट, क्या मैं गलत सेट फार्म करने के लिए गया हूँ ना? नेफर का सेट फार्म करके मैं क्या करूंगा? बुआ, अच्छा बुआ। किसका कर लूं? आर्ले का ही कर लूं क्या? क्या बोलते हो? आर्ले का कर लूं फार्म? मतलब मेरी आर्ले पूरा का पूरा उस वो अपने वेपन एंड अपने C1 पे ही रिलाई कर रही है डैमेज देने के लिए। बिल्ड के नाम पे लॉमा कुछ नहीं है। तो किसके लिए करूं? और बता, तो किसके लिए कर सकता हूँ? यार मेरे साइकिल तो फिर वही मेरे को करना पड़ेगा। चलो यही कर लेते हैं फिर। मुजान लव्स लाना भाई, वो नया सेट आएगा ना? हाँ? अच्छा, उसका नाम था भाई मुजान लव्स लाना। Teamwork is dreamwork. देखा क्रिट मिस? अरे चिराग कोलोमिना की मोस्ट ऑफ टीम्स में इनेफा की जरूरत पड़ेगी एंड प्रीमो के लिए मजदूरी ना हो रही। तो वेल करो, टॉप फैक्ट्री पे जाओ, अपनी यूआईडी डालो, पेमेंट करो एंड मजे लो यार प्रीमोस के। अब इसको कट करके इसका शॉट अपलोड कर देना, ठीक है? एंड भेजना टॉप फैक्ट्री वालों को। सेन तुम उजले क्यों हो गए? न्यू आया था क्या तुमसे मिलने के लिए? Thank you for हाँ waiting. I finished checking your adventurer handbook. Here are your commission हाँ। rewards. We have no other urgent commissions on the books at present. Thank you for all your hard work lately. Perhaps you two could consider taking a vacation. शॉर्ट बैन शॉट एमएमएस बनेगा इसका तो। व्हाट द हेक? एमएमएस क्यों बनेगा भाई? ओके, म्यूजिक वॉल्यूम इंक्रीज कर दे रहा हूँ मैं। Amazing! Paimon never thought we'd end up having downtime in Nokrai. Things were pretty hectic when we first got here. Everywhere you looked, it was either the Wild Hunt causing chaos or the Vatui stirring up trouble. It felt like this whole region was one giant slime in a barrel, ready to go boom at any moment. Sure have. Things were looking pretty dicey, but in the end, we managed to turn it around. Whoa! Paimon just got deja vu! Oh, that's right. It's because we've done this like a million times now. Yes. Are you two aware that the Moon Prayer Night is soon to take place? Oh, yeah! Lama told us that was coming up soon. Wait, F2P, yeah, why do you full mention F2P. it though? Do people in Nasha Town celebrate it too? Paimon thought it was just for Moon Goddess worshippers. You're partially right. Most people in Nasha Town just see the festival as an opportunity to do business. They do not concern themselves with the religious element. The festival was first celebrated by the Frost Moon Scions. On this day, they would wear moon prayer blossoms and celebrate the birth of the moon goddess through song and dance.
They would also prepare food and handicrafts Birth of the Moon and give Goddess. them as gifts to others. Stajan कर ले please. नहीं. Over time, it became Nordkrei's most lively festival. Oh, sounds like fun. Great. Well, in the meantime, since Catherine doesn't have any commissions for us, let's focus on some personal business instead. When we first got here, you mentioned that this was where your spaceship landed? We didn't get to follow up on it at the time, because we got wrapped up in that whole rare situation, but now we can finally start investigating it properly. Well, there's a saying Paimon's heard around these parts. कोई ना है हाँ नेफर या फ्लिंस है ये बा मैं कर लियो कल या शाम को ये बा है मैं कर लूँगा स्टैजन बट अभी नहीं पहले आकन क्वेस्ट Could be worth a try though, right? Anyway, Paimon suggests we focus on other stuff we want to do for now, and just keep an ear out for spaceship-related intel as we go. What's wrong? You look super serious all of a sudden. Huh? Paimon gets why you'd be concerned about Columbina, but what does the doctor have to do with anything? Oh, that's true. And now that you mention it, we're definitely overdue for a showdown with the Fatui. It is weird that he hasn't shown himself this whole time. 10 घंटे की है और स्टैजन जल्दी होगा हट बे True. Paimon would much rather deal with Marionette anyway. She says the meanest things, but when it comes down to it, she doesn't seem like a bad person. Maybe it's the pressure of being a Fatus? Especially as a Harbinger. Does she feel like she's gotta act tough to keep up appearances or something? But then, every time we headed out with Rarier, she always wound up having to repair Polonia and her other robots. That's gotta sting. Losing face always hurts more for people who care a lot about their image. She's probably still furious about it. What? Relax, she's not even भाई म्यूजिक तो बहुत चल रहा है What's the matter? कोलंबिना तो गारंटीड है बट न्यू ईयर का वेपन निकालना है ना हमको तो पुल्स खत्म वहीं पे अच्छा होपफुली चिराग अली विन करवा देगा तो कुछ बात बने लेट्स सी Yeah, let's go see Columbina. Lightning flash! भाई ये वाला म्यूजिक Hey, she's sitting up. Is me sitting here a rare sight? No, we just thought you'd be resting. Perhaps I would have been, were it not for the sudden arrival of some unexpected guests. Not that I consider it a disturbance. After all, you are the only ones who are free to enter. Would it not be a little unfriendly of me to lie down while we speak? I didn't realize you put so much thought into little things like that. हेलो कुनार्क Only sometimes. There have been moments lately where I think about you and your companions. They are warm, mysterious, and cozy memories. Very few of my past memories are anything like that. They say that travelers return home bearing bags full of souvenirs. But my luggage was empty, and I believed it would stay that way. Return home? So, you're still planning on returning to the moon? Yes. This planet continues to reject me, reminding me that I do not belong here. If I remain into that, there will come a day that I disintegrate. And I don't mean reduced to dust, or turned into food for the flowers. I mean,
I will cease to exist entirely. Alright then. Well, we're sure gonna miss you. But it sounds like we'll have to say goodbye. How do you intend to return? The moon prayer night is soon to arrive. On that day, the moon will be closest to Teyvat. The Kuvaki in this land will reach its peak at that time. I merely need to grasp the tide, and with relatively little effort. Oh, Paimon gets it! It'll work like a slingshot! You make it sound like she's gonna get blasted up to the moon. If I did that, I suspect I would crash into the false sky. I will be using a much gentler approach. But I do like the analogy. It's fun. You see? She gets Paimon's sense of humor. In the blink of an eye, the time has come to part ways. It does feel that way, doesn't it? Time seems to fly fastest when you are enjoying it. I have always thought of myself as a wanderer on this earth, and it has never expressed any desire to keep me here. Yet, just as I plan to depart, it tugs at my arm. Is this a gesture of affection? Or is the world mocking me? भाई ये इतनी डीप बातें क्यों हो रही है भाई? अच्छा नहीं लग रहा भाई. Were you hoping I can answer that? Yes, you are a traveler, so you must have a lot of experience in this area. Then, what I would say is, enjoy the moment. That's right! Don't overthink it! Happiness is happiness and joy is joy! The point is to enjoy it, not analyze it! I see. Then what I would say is, even though I am very tired right now, I am still happy. I can't tell from the tone of your voice. Oh, really? You don't think I sound happy? I'm just kidding. I could tell you were in a good mood today from the moment we saw you. Ah, a joke. Albeit not a funny one. Anyway, I assume you're here about you-know-what. Give me your hand. Actually, it's not that. There's something else we wanted to discuss with you. Oh, then do you still want to give me your hand? Or not? Sure. Thank you. So, I've heard that in the moon prayer nights of the past, people here would hold celebrations in the moon goddess's honor. Since you helped so much in our fight against the Reihir of Solnari, I think you deserve a farewell party before you return home. अरे यार ये फेयरवेल पार्टी वाला की बात कर रहे हो हैंडशॉट. But I'd like to invite you to join the upcoming moon prayer night. I've never joined a moon prayer night before. I'm not sure what I would even do. Oh, don't worry about that. We take care of everything. All you need to do is show up. Of course, there's no need to force it if you're not feeling strong enough. It's just, this kind of felt like a golden opportunity. But they call me Kutar, and the Fatui have an arrest warrant out for me. I shouldn't appear in public right now. I'll make it work. You have my word. Yeah, we got your back. Well, she does. Paimon's actually not too sure what she's planning. All right, if you're sure. I will not refuse your invitation. I suppose it wouldn't hurt to pack a few more sights from this world into my suitcase before finally learning what my homeland looks like. Oh, if you see Lauma, please tell her that my answer to the question she asked me is neither yes nor no. Rather, it is. There is no need. That was kind of cryptic, but sure. Guess it's between the two of you. We'll pass along the message. Bye for now. साले तो मुझे क्यों बता रहा सांजी? And also, I do not know. Since she
everybody's agreed to join the festival. Let's go see who else wants to take part. चैट देखो डरा कुछ नहीं Llama's gotta be the person most familiar with the मैं moon, मेरे को right? फिजिकल We फॉर्म should कैसे start with मिला her. मैंने तो स्किप करके करा था Also, what exactly is your plan to keep her safe? Not sure yet. I'll figure something out. आई 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 Are आई you serious? मैं समझा नहीं Paimon even gave you her vote of confidence back there. When did you become so sneaky? Hey, Llama, it's us. Huh? Varka? What are you doing here? Beats me. I had a bit too much to drink last night. वारका हमेशा When I दारू woke पीता रहता up, I साला was on Heasy Island. Mr. Varka is helping to oversee Nasha Town's preparations for Moon Prayer Night. He is here to go over some details regarding the decorations and custom cloth designs. Right, yeah, that too. What do you mean, that too? Yes, celebrating this festival is a long-held tradition here in Nodcry. On this day, the crescent moon at the top branches of the verdant crest turns into a full moon, and the moon prayer blossoms bloom with a special radiance. Our people take these to be blessed omens. It's an especially welcome event coming off the back of all that nasty business with Rare. Everyone got put through the ringer recently, and now they're looking to turn their fortunes around. The big shots in town all agree that a big, lively celebration is just what we need to rebuild people's faith in this place. No wonder Catherine said the people weren't so bothered about the religious element. That's right. It's become more of a local custom by this point. The celebrations have little to do with whether the religious stories behind this event are true or not. Even the Frost Moon Scions are eagerly awaiting the coming of Moon Prayer Night, despite now knowing that their past beliefs were founded on a falsehood. भाई जो भी मुझे स्पॉइलर देने की कोशिश कर रहे हो भाई बिल्कुल मत करो भाई इसलिए मैं चैट नहीं देख रहा तुम लोग को Enjoy themselves, not debate the existence of the Adepti. Oh, one other thing. We just went to see Columbina. We went ahead and invited her to take part in the festival this time. Wait, so... you mean she agreed to it? Huh. That's quite a surprise. Then I suppose that she intends to return to the moon on that day. Oh, yeah. It's kind of a complicated process, but basically, it's like a slingshot. I understand. In truth, I had a feeling that she might make such a decision. Well, if Kuthar has decided to participate in the festival, we should prepare accordingly. Yeah, exactly. She was saying how it could be risky for her to show her face in public. We were wondering if there was any way we could hide her. Unfortunately, the people who carved the statues did an excellent job of capturing her likeness. It will be very challenging to hide a goddess whose face everyone is so familiar with. Darn! We may have bitten off more than we can chew here. Nah, don't sweat the small stuff. We can handle that. Huh? Are you saying you have a plan? Not as such, no, but the most important thing with a festival is to keep the mood light and your spirits up. You can't go preparing for a festival with those long faces. You'll never convince anyone to enjoy themselves. The monster spirit is strong with this one. As it happens, I agree with Mr. Varka. Let's start by making our appreciation for Kuthar the beating heart of the festive atmosphere. And who knows, once we get the ball rolling, perhaps everything will just fall into place. Hey! Did you catch that? Llama said the thing! Or close enough at least. I'm looking forward to the Moon Prayer Night already. We have a festival in Mondstadt called Windbloom. And you can always tell which couples are celebrating it for their first time by the smiles on their faces. Big, beaming smiles like their whole face is glowing. And I have a feeling we'll get to see that same smile on the Moon Goddess's face at this festival. Not quite the same, surely. Anyway,
I'll take care of business in the city, but I'll have to leave the decor up to you and the Frost Moon Scions. No one else can capture that traditional aesthetic quite like you guys. But lastly, there's the final key element that brings the festival to life. Companionship. Before you leave, let me show you something that we've been preparing. Mr. Varka had asked to see it already, so you may as well. चिराग, क्या आप एक हेल्प कर सकते हो? क्या हेल्प? I have some further questions about Kutar's decision. जो स्टैजिन करो मेरे को पिंग कर देना। क्यों भाई? तुझे मुझे स्टैजिन करते हुए क्यों देखना है? मोमो को बोल के जा, मोमो को और किसी को बोल के जा, मुझे याद नहीं रहता भाई, मैं भूल जाता हूँ। I believe so. Kuhenki seem very skilled at playing drums like these, although I'm not sure where they learned it from. Maybe it's an innate talent? In their eyes, they're probably just playing with toys. तो उसको डीएम कर दे। Yeah. She looks more confused than anything. बादाम क्या करो यार, गरीब आदमी हूँ। What are these floaty things? Moon veils. We hang. Everyone seems hard at work. They're preparing items for Moon Prayer Night. For instance, the sculpture being made over here. Mr. Varka and I were just finalizing the details of where it will be placed. Ah, there she is. I didn't know the finished article would be so large. Not to worry, though. All the necessary arrangements have been made. Just let me know once it's ready, and I'll get some people to ship it over. You have my thanks. And over here, we are preparing a very traditional confection. Oh, look at all these colors! It looks great! Can Paimon try one? Of course. I have a feeling you'll like it a lot. नहीं मिलती भाई दिहाड़ी। Sweets and treats are Paimon's क्या ही कर सकते हैं? If you included those in the Feast of the Moon, I bet Paimon would have joined the Frost Moon Scions by now. There will also be verdant crests like this present in Nasha Town during the festival. The timing of Moon Prayer Night is not completely set in advance. We make a rough estimate, then observe the changes in the verdant crests and moon prayer blossoms to guide us. As such, the wait itself is a fun feature of this particular festival. हाँ, मैं पनबॉल खेल रहा हूँ। वाह भाई। Let's talk here. क्या पता? To tell the truth, पिनबॉल होता I'm भी है। very surprised to hear that Kutar is willing to participate in the festival. I once asked her if she'd be willing to stay with the Frost Moon Scions. I could introduce her to everyone, and we could be a family to one another. She did not answer, but she has not appeared here since. I took this to mean her answer was no. But if that were the case, she would not have accepted this invitation. Ah, I see. Maybe she is right. Maybe the Frost Moon Scions of today no longer need a moon goddess. But my wish was not for her to come here and be worshipped as a deity. I simply wanted to offer her a place to stay. I'm sure she believes that showing herself here might invite Fatui intervention, and as such she does not wish to cause us trouble. But what really pains me about all this is that this is her birthplace. She ought to belong here, yet no one has been able to grant her shelter. I think I'm qualified to weigh in here. When someone's about to depart on a long trip, what they need is blessings, not burdens. We should wish her the best, not make the journey harder than it already is. Anyway, she's agreed to attend, hasn't she? All we need to do is simply respect her decision. I see your point. Yes,
She will soon depart after all. Our job is to leave her with some happy memories. Besides, who's to say her journey to the moon is a one-way trip? It's not like she can't come back and visit if she wants, right? Paimon agrees wholeheartedly. Festivals are all about having fun, so let's keep it simple. All right, I'm gonna head back to Nausea Town soon. Want to come with? I'm guessing you have some other folks to visit there. Sure thing, let's go! Bye for now, Wilma! Thank you all. Goodbye. Chatting about. Your guess is as good as mine. Ah, Grand Master, and the Traveler and Paimon. Hello there. It's been a while. Perfect. We have some new volunteers for our investigation. Wait, let me guess. The righteous Lightkeepers are finally ready to hunt down the Abyssal Dragon? Yes, that too. क्यों भाई मुझे 10 घंटे क्यों लगेगा ऐसा क्या कर रहा मैं जो मुझे 10 घंटे लगेगा Wait, why does everyone keep saying that too? Well, to be precise, the facts match, but not the causality. Wait, so I guessed right? Half right. Don't act so impressed with yourself. Maybe I can explain. We ran into Mr. Flint's north of Nausea Town. At that time, we just noticed a few abyssal creatures out in the wild, but the strange thing was, I didn't detect any traces of abyssal energy on them. On closer inspection, we realized that they were not real monsters, but something akin to reflections in the water, or perhaps a mirage. Huh? What do you mean? Like, you could see them, but not touch them? Exactly. It was very peculiar. They roared and tried to attack us, but we could not make any physical contact with them. I think I've heard of things like that happening in Not Cry before, but I don't know much about it. नहीं ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे 10 घंटे लग जाएंगे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए 6 घंटे का कॉन्क्वेस्ट मुझे तो करने में 10 घंटे क्यों लगेंगे बताइए मुझे From a distance, they appear quite real. I myself thought that Misters Durin and Albedo were locked in battle with abyssal monsters when I first arrived. But after sharing intel and investigating a little further, we can confirm that these illusions are harmless. There is no great cause for concern. All the mirage stories I've heard are either animals, rocks, or small houses. Abyssal monsters, though? That's a first. It's a first for me, too. So I'm planning to look into it further just to be on the safe side. I intend to inspect a few more locations. What about you two? Any plans? Alice contacted me a few days ago. She'd like me and Durin to assist her with an experiment. But we lost contact shortly after receiving the message. I'm sure that comes as no surprise to anyone familiar with her.
रोबोट थोड़े 6 घंटे बैठ के कर लेंगे, मतलब ब्रेक तो लेना ही होगा। We don't know when the wind will blow. Yet when the wind blows, we will know. That, in a nutshell, describes how रेज Alice बैठे से operates. भाई Yeah, that tracks. Okay. ना कुछ Well, नहीं। I suggest we investigate this Mirage business in the meantime. It's piqued my curiosity. And I'm pretty sure I know someone who will already be 10 steps ahead of us. Well said. Right? Whatever's happening in Notcry, she always seems to be the first one to know. Let's go see what she knows. We can invite her and her staff to the festival while we're at it. ये कैसी आवाज थी भाई, जब किस्मत में लेंगे ब्रेड के पकौड़े। बात कर रहा हूँ भाई। जब किस्मत ये तो What could the children be up to?
क्या वही वॉचिंग कम हो गया? तो अब मैं चला अपना अकाउंट देखने। तो अभी तक तुम किसका अकाउंट देख रहा था? हाँ हाँ, वो मुझे पता है कि वो सबको, जो एक बार देखो, जो नहीं किए होंगे उनके लिए स्पॉइलर होगा, जो कर लेंगे उनके लिए बोरिंग होगा। ये तो कर लिया तो वो दोबारा क्यों ही देखेंगे वो। और ना ही मैं डोरो या फिर जेडली वगैरह हूँ जो मेरे इतने आएंगे। एक मिनट, एक मिनट है, ये कब आई? मेरे को भी नहीं समझ आया क्या बोली है। अमुदला काका कोई और है? हाँ बात तो सही है। कौन सी एलियन लैंग्वेज है? आओ 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 आओ। हर चीज तुमसे कोई काम कराने के तुमको हर चीज समझाना ही पड़ता है। कोई चीजें सीधा सीधा मान लिया करो। फिर पहले स्ट्रीम पढ़ता, उसके बाद खाना खा, और अब जाऊंगा अपना अकाउंट देखने, और उसके बाद फिर पढ़ने जाएगा तुम डायरेक्ट। You're right, I have noticed. There's certainly something a little fishy about this situation. Only a little, though. Records indicate that this phenomenon can occur in the days before जादू बन and रहा क्या? following हाँ Moon तो Prayer Night. आओ 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 That आओ। said, it has always been a rare sight in the past. The odds of मेरे डीबी चला ले encountering these साले। phantoms are आज आज similar आज to नहीं what भाई, can आज happen मैं in अपना the अकाउंट कर लूँ, sky, मेरे लिए वही काफी happening है। to see a shooting star and managing to make a wish before it disappears. But this time, either everyone's getting lucky or they're appearing far more frequently than usual. ओए एक मिनट देना गाइस, एक बार गॉगॉग भी अबे हट साले। न्यू गेमिंग मुझे पता है, मैं मेरी वॉइस नहीं जा रही होगी स्ट्रीम पे, मैंने खुद ही बंद किया। जस्ट एक मिनट देना मुझे, ठीक है?
ओके गाइस, आई एम बैक। चलो कंटिन्यू करते हैं आकन क्वेस्ट। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। Yehoda's out gathering intel as we speak. In the meantime, let me check off some points of interest. First, the ones we saw seem to be abyssal. Indeed. But we have identified one location where many more of them have made an appearance. And not just monsters, but human phantoms too. Given the scale and nature of the phantoms, it's almost as if आज से नहीं तो कल से कर ले। अब ठीक है, कल से कर देखता। भाई सबके सब मेरे को ही बोल दोगे, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि सब का ही कर दूं मैं। So you mean the phantom monsters are hunting down the phantom humans? Exactly. The phantoms can interact with each other, but we have no means of intervening. In addition, some of the human phantoms would seem to be from the very distant past. This is clear both from the clothing they wear and the stories they tell. भैंसिया भगा रहा है। They claim to be from Hyperborea, a name which I've heard from Lauma before. If this is true, it means they must be from 6,000 years ago. Did Paimon hear that right? 6,000 years? हाँ मैं हूँ ना कुत्ता। It sounds like this merits further exploration. That'd be a big help. I'll leave it with you, Albedo. My knowledge of ancient history is non-existent. I used to doze off every time the pre-Knights Favonius era came up in class. It's quite a miracle that you were able to understand. चिराग ने पहली बार मैंने फेलियर्स किया था, दूसरी बार भी वही करेगा। थैंक यू भाई। मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका जो आपने हमें ये मौका दिया आपके अकाउंट में ऐसा कुछ करने का। As an intelligence broker, my sole interest is in the value of the information I gather, which, in this case, hopefully means earning myself some good favor with our dear Lady Moon-Chanter. सही में शांति ज्यादा चली जाती है। This intel broker logic always catches Paimon by surprise. Sounds to me like we could split the work up. I think the abyssal phenomenon is best left to Albedo, Flints, and me. Agreed. It coincides with my duty as a For my part, I'd like to understand the abyss better. Even a little knowledge would go a long way. This is certainly a rare opportunity to study the abyss. चिराग को एलान से भी सुंदर बेबी मिले। Is the chance to make contact with the ancients. ना सिर्फ नेफर बिल्ड करनी है, मेरे को नेफर का सेंस एनकोडर चाहिए। अच्छा। It seems only fair that we get some quantity of exclusive intel. That just leaves our trusty team of 2 unassigned. एक मिनट रुको, सारा इन हरामखोरों का आवाज मुझे कम करने दो, बहुत चिल्ला रहे हैं। Okay. Since you became an honorary knight, of course. मिसिंग हो गया मेरा, क्या बात है, नाइस नाइस। कुनार की चैट, हाँ स्टैजन वापस आ गया, अब मजा आएगा। प्रीमोज ने कर लो कुनार को वहां से अपने। एंड आर्टिफैक्ट स्टैजन से ही फार्म करना, ठीक है? उससे तुमको एक एक्स्ट्रा फेदर मिलेगा रिशेप करने के लिए। Quite an achievement. Never underestimate the traveler, I guess. I'd be happy to join. No point shutting myself inside when the streets are all decked out. I doubt any clients will be visiting during the festival in any case. And Yehoda loves a party, so I'm sure she'll jump at the opportunity. No, 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 no. Way to contradict me in front of... Wait, no. Contradict me in front of... I have that news, boss. So many people. All right, everyone inside, quick. नेफर नीचे देखने का मन कर रहा है, तो देखो यार, जाओ फोटो भी खींच के भाग जाना, जाओ खुश रहो। This is gonna sound crazy, but hear me out. I saw one of those phantoms at Star Sand Shoal, and it was some sort of flying ship. Like a spaceship. ट्रैवलर की शिप है ये क्या? That's gotta be the one you came to Tibet in. You said
saw the same thing through the moon marrow, right? Huh? You already know about it? Ugh, I thought I was gonna blow people's minds. Turns out I'm the last to find out. Wait, back up. You came here in a spaceship? Now my mind is blown! What's it like on the inside? Was it like flying through space? I want to know everything! Yep, exactly. Huge discovery. You're the best. Second best intel broker in the world. After बेस्ट फिर नेफर को देखी फिर सेकंड बेस्ट भाई नेफर क्या घूर रही है भाई I don't know if I'm all that, but... ड्रीम मिल गया सियोन वेनी की जगह क्या वो वर्थ इट होगा और नेक्स्ट फेज क्या निकालो शिलोनेन Come on, don't look at me like that. I know the spaceship doesn't have anything to do with me, but you don't want to leave me as the only one twiddling my thumbs, do you? Fair enough. You can tag along. In that case, let's meet back here to discuss our findings once we're done. I wish everyone a productive investigation. You too. नेफरीना छी What's up, boss? Aren't we gonna head out? चलो मेरे पास कोलंबिना वाले अपडेट की बात अच्छा कोलंबिना वाले अपडेट की बात कर रहा है कोलंबिना निकालो भाई अरे भाई कैसे भाई क्या धमकाई है यहूदा को नेवर विल ये सारा धंधा खाएगी भाई उसमें न्यूवी आ रहा है न्यूवी अब भाई न्यूवी का फायदा नहीं है भाई रहने दो मैं तो कहूँगा न्यूवी रहने दो अब जितना न्यूवी इन्वेस्ट करोगे दूसरे मेटा के कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा से डैमेज निकलेगा तुमको ये रहा ट्रैवलर का स्पेसशिप एक मिनट ये स्पेसशिप है भी या फिर जैसे वो एबिसल मॉन्स्टर्स का वो रिफ्लेक्शन था वैसा ही कुछ है ये देख कर तो रिफ्लेक्शन लग रहा भाई मेरे को वेपन चाहिए खाली उसका भाई मत निकाल यार मत निकाल मेरे पास भी सीजर R1 है उतना अभी के टाइम पे बढ़ती नहीं जब मैंने R1 निकाला तब तो ठीक था बट अभी अब उतना अभी आप न्यू मिड हो गया यार चिराग मेरी वैसे इलेक्ट्रो चार्ट में ज्यादा डैमेज देती है पता नहीं कैसे भाई मेरे पास C6 है भाई सारे सपोर्ट्स उसके ओवरलोड सपोर्ट्स सो दैट्स व्हाई मे बी ज्यादा डैमेज देती है मेरी वाली आया मैं जरा वॉशरूम से Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. Okay. Wow, what do you know? Yehuda was right on the money. This phantom really is your spaceship.
it some kind of projection? Or a ghost? Like, maybe it no longer exists, but somehow it left an afterimage? Ah, you're already here. Miss Lauma, what a surprise. I thought you were busy with festival preparation. I was, until one of our people informed me that a strange sight had appeared at Star Sand Shoal. No one's ever seen something quite like this before. I thought I should see it for myself. Same here. Oh, so we heard that these things appear around the festival period. Any idea why that is? Unfortunately not. We have very limited information about them, since they can't be interacted with. And no human phantoms have ever made an appearance before now. The most we've been able to deduce is that these sightings appear to be connected to the increase in Kuvaki energy around this time. Yeah, seems like that's all we can do. This is all so confusing. Allow me to lend you a hand. Everyone, our friend here should be able to provide us with some information. Is that a phantom Rhyme-horn deer? I've heard about how the Frost Moon Scions live in harmony with the animals and can even communicate with them. That's coming in handy now, for sure. Okay. Yes, I understand. Then how about this? Meow, meow, nigga! It appears to share our curiosity about this giant spaceship, so I asked it if it wouldn't mind investigating along with some friends. In return, I told it about some nearby spots where the wild fruit grows abundantly. We may live in a different era from these phantoms, but I trust that the terrain, climate, and ecology here are more resistant to the effects of time than some things are. Let's give them a moment and hope for the best. All back together? Must have been a lot of fruit. एक सेकंड, एक चीज तो मैं भूल ही गया। चिराग जी के सीजन 3 आने वाला है, तो मैं देखता थोड़ी हूँ भाई। मेरे को नहीं पता भाई। क्लाउड बॉट, यहाँ पर आ गया मैं लॉयल्टी में, एंड अब रीसेट। ये लो, हो गए सबके 0 घंटे। Indeed. Now let me ask them some questions. चलो, कर देने का मन हो रहा, साले तेरे को स्पॉइल कर दूंगा मैं। It did ये सब मत find a करियो lot of भाई। wild fruit. Enough for them. This puffin circled in the air several times, but didn't spot anything out of the ordinary. Huh. Well, it definitely makes sense to get a bird's eye view. Indeed. Other than that, I was also thinking that the world these phantoms see is also different from ours. Oh, I get what you mean. The wild fruit exist in both times and spaces,
But there might also be things that only exist in that space-time, which we can't see. अब अगला reset 4K पे होगा. Good point. Great thinking, Llama. Blunthorn rhinos can use kuvaki to shift great rocks. But this one says it couldn't get that ship to budge by even an inch. The sniffer mole tried too, but despite being a skilled digger, it could not get through. They say that the spaceship looks robust and undamaged. It seems completely impervious to any and all attacks. Whatever lies within is well defended from harm. So, just like us humans, there was nothing they could do about this spaceship either. Yes. Still, they deserve our thanks. We are grateful for all your efforts, dear friends. Now go and enjoy your feast. कज़वारी रन होगा क्या? I've हाल noticed some फिलहाल other का तो human नहीं लग रहा phantoms भाई मेरे gathered को. nearby. Come on, let's go talk to them. What is this thing? I've never seen it move, and there's no way to get inside. Goodness knows. My grandpa says it's been sitting here at least since his grandpa was still alive. Chronicles Moon में हो सकता है Did he ऐसा. say anything to your grandpa's grandpa about it? अच्छा Chronicles में. Huh? Chronicles Moon I के don't know. पढ़ा भाई मैं उसको. In all likelihood, it was here back then too. Hard to imagine something this huge could move. Guess that means that as far as they're concerned, this ship's been around a long time. Hello Levi. दिमाग में मून मटन घुस गई है इसलिए. अरे मून मटन तो मेरे मुंह पे है, मतलब मेरे सिर पे. You mean Paimon? Yes, brother, I shall join you. Let's make our fortune. We should go with... What the? This thing is crazy tough. I can't even scratch it. What's it made of? Sorry, brother. Looks like we'll have to seek our fortunes elsewhere. Enjoying yourself? I was just seeing if I could influence this phantom's perception by playing. रख देख रहे मून मटन के no लिए. dice. रख नहीं, इसे तो प्यार कहते हैं भाई. I'm sure we're all starting to ये तो build up प्यारी an हरकतें हैं. idea of what's going on here now that we've spoken to some of the people. These phantoms are reenacting real historical events in Nodcry. It's almost like we're in some kind of interactive stage play. We can talk to the actors, but the plot is fixed and we can't influence it. It makes sense. History is नहीं तू लोग का आवाज आ रहा लेकिन बहुत कम लग रहा है ऐसे मक्खी बना रही है. cannot be changed. Paimon totally ये thought बड़ी you were मक्खी just थी. goofing around earlier. But actually, you were doing some serious investigating. Of course I was. Anyway, at this point, I think we're forced to conclude that although the Phantom spaceship is right there in front of us, we aren't going to learn much about it from these people. नहीं. Don't be discouraged. If nothing else, this is proof of the ship's existence. And think about it. So many people tried to hack their way inside, but no one could get the door open. It's made of very tough material. To me, that says that we'll either find the ship itself or the story behind it. It's just a matter of time. Huh. Every now and then, when Varka gets serious, he actually does seem like Grandmaster material for once. I wonder how the others are doing. Let's head back for now. Sounds good. Also, drinks are on me if Team Knights of Favonius is the first to finish. Wait, we have a team name now? Am I in Team Knights of Favonius as well? You're very welcome to join. We've even got a cathedral ready for you. Isn't that technically blasphemy? You wouldn't dare make a joke like that if Barbados was in earshot. Nah, I'm sure Barbados doesn't mind a little harmless blasphemy once in a while. ये वारगा तो बड़ा हरामखोर है भाई. बेटी शॉट कुछ ज्यादा ही मजाक करता है. Oh, no! Get away!
Oh. I know it's hard to stomach, Mr. Duran. But as I'm sure you've noticed, there is nothing we can do to intervene in that which unfolds before us. But we have to at least try. And try you have. But are you aware of how many unsuccessful attempts you've made now? I wasn't. वर्गा क्लिक करना याद बाप है. I'm afraid this is the 39th failure so far. नहीं. Or the 5th if we're only counting this क्लिक का पापा तो मैं हूँ. There are no indications that these phantoms may be altered in any way. You seem to have calmed down a little. I'll make us a fire. You should rest and have some water. ये पार्ट कोई बता, ये पार्ट तो मुझे उतना कुछ खास लग नहीं रहा है. It's like okay. I ask a few questions. Be my guest. What exactly are we witnessing here? What happened to those people? My guess would be that we are seeing Nodcry during the Conrian cataclysm. Would that be accurate? Conria. That is correct. As you know, once the abyss senses even the tiniest crack, it floods in and spreads like wildfire. There was a time in the distant past when it permeated all of Nodcry, causing immeasurable harm. The people paid a terrible price to heal this land. Then 500 years ago, the whole of Tevat suffered an abyssal disaster. Once more, Nodcry was dealt a devastating blow. I see. In the face of the abyssal onslaught, all were like grains of sand tossed around by a tidal wave. Be they human, fae, or god. The moment you witnessed is but one drop in a whole ocean of catastrophe. All right. I guess that answers my second question, too. I wanted to know why there's nothing I could do to help them, and that's because what we are seeing is history. That would be my guess as well. As I understand it, history and fate are not all that dissimilar. The latter may be unseen to us, but both are immutable. Yes. Fate was determined long, long ago. I still have a couple of other questions for you, Mr. Flint. You mentioned more than one abyssal disaster that has struck this land in the past. How can you be sure that what we're seeing is from the Conrian incident? And also, how are you able to stay so calm when you're talking about these events? From everything I know about you, you're not cold or ruthless, and you're not indifferent to the suffering of others. Alas, I am forced to show my age. I must be 600 or 700 years old by human measure. Oh, so यही 6-7 jokes की बात कर रहे थे लोग. One is not easily moved by history when one has witnessed. अगर ड्रोन लड़की होता तो पुल कर लेता. I'm sorry. You needn't apologize. Your passion is a good thing to have. Treasure it. Because someday you may find it in terribly short. Now, at the risk of offending you, I have a question in return. Your curiosity toward the abyss. Is it born from hatred or because you sense its call? I only ask because I kept a fragment of Rerear's body in my lantern for a short time. Specifically, his heart. So I know what a burden it can be to carry the abyss with you. And I hear its power growling from somewhere within you. In my eyes, your mere existence is a miracle. My honest answer is... I don't know. I don't think I have the confidence to say for certain. What I will say is the abyss is not the only issue that haunts me. Even before I became who I am today, the question dogged me constantly. Should I even exist at all? My doubts remain unresolved. But when we fought Rerear, something became a little clearer to me. Sometimes it is the darkness within us that allows us to achieve the impossible. I certainly got the sense from your 39 attempts that you were trying to achieve the impossible. It sounds like you've resolved to see the truth for yourself. Absolutely. In that sense, he and I are quite similar. Then I wish you every success. I look forward to the day of your transcension. Well, if everyone's caught their breath, I suppose we should head back.
Oh, and one last thing. I'd appreciate if you kept our discussion about history a secret. Incredibly, our separate investigations led us all to the same conclusion. Yeah, but we barely learned anything, though. I totally thought this would be the mother lode. Talking with the ancients? I mean, come on! But nope. All we got was useless snippets of conversation. And all this stuff about moons and hyperopia. What a load of baloney. Seems like people back then had a few screws loose. I understand your frustration. We found the same issue. Each phantom only showed a very brief moment in time. There isn't much value to be found in these miscellaneous fragments of a civilization's history, no matter how glorious it may have been. If there's a silver lining, it's that these phantoms are harmless to the present reality. They shouldn't get in the way of the festivities. Paimon agrees. And not just because it's the first thing she understood in this whole conversation. You look disappointed, Nefer. Is something the matter? What do you think? We all worked our tails off, but the only one to gain anything from it was you, Lady Moonjanter. Well, please do share the Hyperborean records with me. I will gladly inscribe them in our people's document. Oh, duh! Yeah! That was it! Hyperborea! आता मैं okay. I'm serious. Only an expert in the Frostmoon Scions and their history can turn these records into valuable research material. The alternative is to let them gather dust on the curatorium storage shelves until the pages turn yellow. Nefer, you're wise enough to know that cooperating and sharing the profits is the best course of action here. Well, that goes without saying. Sure, let's do— Huh? But didn't you say we aren't supposed to give out intel for free? Sorry. Shutting up. Now is not a good time to push Nefer's buttons. Nefer's buttons. Hey, Damn. anyway, back to Moon Prayer Night. I'm thinking that we should prepare something a little special, aside from the usual decoration. You mean a parting gift? Can't go wrong with food. Although, does food go bad on the moon? Perhaps a lantern would be a better choice. It might be dark up there. It could prove difficult to light a lantern on the moon. Magical stones might serve that purpose better. What about a clockwork mecha model from Fontaine? I've got a whole bunch at home. I use them for fighting practice in my free time. None of these sound like things she would be even remotely interested in. But we don't interact with her enough to know what she likes. Yeah. It would really save us the guesswork if someone could find out what she's into. Wait, what the? Traveler? They're all looking at you. Great! Haha, problem solved. Now, I need to stop by Dory's. Gonna need her help sourcing a bunch of stuff for the festival. Then let's leave it there for now. We all have our own business to attend to. Traveler, if you find out what Kutar likes, let us know right away. Kutar. Kutar likes. Please let us know. Is something the matter? I'm fine. It's just... I'm still feeling a little rattled after witnessing the horrors of the Abyss. But it's okay. This is something I have to work through. I'll be all right. Thanks for your concern. Well, don't put too much pressure on yourself. If you ever feel like something's wrong, physically or mentally, we're here to talk. Come on. Stop treating me like a kid. You are a kid, motherfucker. Go meet Columbina. Let's meet Columbina.
एक बंदे ने एम्बर जिन ट्रैवलर बेनी से डायरेक्ट कर दिया, मेरा फेयरलेस नहीं हो रहा, इज यूजिंग सेम ट्रिक। तुझ में और उसमें कोई फर्क तो है ना? Huh? She's not here. Weren't there a few Kuhenki here last time too? Where did they all go? Walkies? For Kuhenki? You're not pets, you know. Oh well, looks like we just came at a bad time. Let's try again tomorrow. There's still a few days until Moon Prayer Night, so we're in no rush. Besides, she needs time to rest anyway. Kalamina, are you back yet? Oh, how strange, right? It's not like her to spend so much time outside, especially since she's worried about attracting unwanted attention. What about Luonatar? Luonatar, you there? साला फ्लावर का कलर चेंज हुआ है ना? फ्लावर का कलर चेंज हुआ ना गाइस? Do you know where Kalambina went? Sorry, didn't understand. But if you know where she is, could you take us to her? Yeah, that's even stranger. What about him? Oh, that's not good news. They change color when Kalambina gets weaker, right? And they look super pale right now. Good idea. She might know what's happening. Ah, it's you. How is Kutar? Is she okay? No, she hasn't. I came here to check on her after I noticed the flowers had changed color. Based on past precedent, she must be very weak right now. Even getting up to walk would be a struggle. It seems unlikely that she wandered off outside. Hello, Kamui. Not to mention that she doesn't do that at the best of times either. So yeah, this is super weird. तू करके दिखा इतना प्रो है तो मैं तो नूब हूँ। मैंने कब बोला कि मैं प्रो हूँ भाई? No. Very few people are in the know about Kutar's whereabouts. And if anyone suspicious had visited, they'd have... Come on. Let's go to Nasha Town. If anyone has seen her, someone there will know about it. Makes sense. Moment. Is it just Paimon, or is this stall kind of suspicious? Has never been here before, right? No, I don't recognize... Alas, your free and easy adventure time is over. Now, prepare to face the final boss of Nod Cry. Whoa! Where'd that voice come? Not sure, but it's definitely hostile. No, not that way. The final boss is right. What the heck? Sniffer mole? Sniffer mole? Boss? Surely not. Also... Okay, the jig is up. I'll stop teasing you. Turn around. I'm right behind you. Alice! It seems I've managed to leave quite an indelible impression, even though you've never seen my face. ओहो, क्या बल खाते हुए आई है। ओए होए। अरे अरे, क्या बल खाती चाल है भाई। What is going on? I've heard that all the big shots in Teyvat have long, wordy titles that stun people speechless when they make their entrance. Unfortunately, none of them are affiliated with the Hexen Circle, and we ourselves keep a very low profile. The notorious name-dropping doesn't quite work for us. Still, I, for one, think I'm really quite amazing. So that didn't stop me from coming up with a title anyway. अरे? It's really you this time? Not a lantern or a Dodoko, but Alice in the flesh? Alice in the flesh? Oh, that's right. So, what do
think? How does it feel to finally meet me? You look so young. You look like just Klee या फिर look so young. नहीं बढ़िया है साली Klee की तरह बोले. That's the first thing you thought. A little surprising, but that actually makes me very happy. इसी की बेटी है तो इसकी तरह ही दिखेगी ना. She'll be just as stunningly beautiful as her mother. अरे ये तो भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी लगती है भाई मेरे को खुद की तारीफ कर रही है. This is actually the first time we've seen her in person. I see. Madam Mage, that was, quite a powerful entrance. I certainly won't be forgetting it anytime soon. सच में 10 घंटे लगेगा. अभी तक यहाँ पहुँचा. हाँ. This is Alice from the Hexen Circle. She's a friend of ours. And of Arcus too. That's right. पढ़ लिया चैट. Person, just kinda unpredictable. Well, what is the human heart if not unpredictable? If we could not do as we please, how would we differ from machine? I am Lauma, Moon Chanter of the Frost Moon Scions. It is a pleasure to meet you. Oh, I know. Before you got here, I spent a good, 15 minutes getting up to speed on Nodcry's present situation. In other words, I've read the whole in the last episode part, so we can skip the pleasantries. Fair enough. Well, Miss Alice, I can already tell that you have quite a unique personality. Yeah. You'll get used to it. Paimon sure is. अबे ये क्या बात हुई? 3 में से एक पढ़ के बोल रहा पढ़ लिया. Oh, I thought I told you already. This time I'm the final boss. अरे पार्ले प्लन सिर्फ 5 लाख भाई काफी है. शायद तो उतना भी नहीं मारता जबकि प्लन जीपीएस है. Powerful, confident, decisive. मोड ऑफ लाइफ कम नहीं होती. Good luck वाह. finding my weak spot. You will never succeed. Oh, drat! My one weakness, and you found it in an instant. Fate has been dealt a devastating blow. Thus falls the great Dodo King. Why are you playing along with this nonsense? For funsies, of course. What's wrong, Paimon? Are you disappointed in me? Am I a gigantic letdown? No, it's just... You seem like a busy lady. And this is the one time you've shown up in person. Paimon figured it would be for something more high stakes than just goofing around. You're quite right. I'm here in Nodcry because something big happened. Something big enough it caught the attention of the Hexen Circle. It concerns the 3 moons, Tevat's borders, and of course, the moon goddess you are currently searching for. Kind of. Why don't we discuss this over a pot of tea? My main reason for coming. अरे कोलंबिना खो गई है ये एलिस को भाई. चाय पीने से फुर्सत नहीं है. मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा तेरी तो. Technically have a job to do as well. Namely, काम कर ले मोटी. the stability of Tevat's borders. I'll skip over the complicated parts, but to sum it up, abyssal energies are all that lie beyond Tevat's border. We'd find ourselves in a real pickle if they ever made it through, and the phantoms you've been seeing are a sign that the border has been disturbed. No wonder they tend to show up around Moon Prayer Night. Is it because the real moon is now so close to us that its power can cross the border? In part, but only a negligible amount passes through. Just enough to influence the verdant crests and so on. And as you've noticed, there has been an unprecedented number of phantoms appearing this year. चाहता है कि हम 2 क्लिक मारें और तेरा सर्वर ही गायब हो जाए लिस्ट में से. Cannot explain this. No. There is another far greater factor at play. The trilunar syzygy. A trilunar syzygy. Eons ago, before the heavenly principles came to Tevat, it was the then 3 moon goddesses who controlled the laws of this world. Oh, that's exactly it! The 3 goddesses split these powers amongst themselves, promising never to consolidate them into one singular body. This was meant to keep the world stable. But, fast forwarding to the present, the eternal moon's marrow is with you, while the iridescent moon's marrow, which should never have appeared in this world, has been retrieved. Add that to the presence of a moon goddess in the flesh and... the power of all 3 moons is gathered here in Nodcry. There hasn't been an event like this
since the War of Funerary Flame, and it's having a noticeable effect on Tevat's borders. Because I wish to give my darling daughter a peaceful, sunny environment to grow up in. Is that a good enough reason? Kinda sounds like your dad भाई came to सिर्फ quest क्लिक के लिए killing, इतना कर रही है but it damn does make sense. Well, that's one reason anyway, and the most important one. The others are a little complicated to explain. For instance, cleaning up after dearest Miss R. R Miss R ओए क्या बोल रही है एलिस That if you're curious, but right now, I have a more important question to ask you. Why are you collecting the moon marrows? I see. Nicole told me about that legend once. Nicole? You mean Mage Anne? Oh, so you remember. Yes, of course. That was a ये story सोचो about तुम्हारे लिए and क्या her क्या expertise. करे क्या But back to the यहाँ से story देख of रहा है Archon. जो- I'm afraid her intended method of returning to the moon is unlikely to work anymore. क्या पता भाई क्या क्या करेगी What मेरे does that लिए mean? कुछ भी नहीं करेगी May भाई be missing, but she hasn't gone anywhere. She has disappeared. I mean just look at her ये एंड ये उसको पता भी नहीं चलेगा अगर ऐसी कोई इन रियल लाइफ होगी उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे ऐसा कोई चूतिया एग्जिस्ट भी करता है क्या कहाँ तू टाका भिड़ा रहा है भाई हो ही नहीं पाएगा ओ आ गई My body is so डैम स्लेट heavy. Wait, no. It's my mind that's heavy. My arms and legs are as light as a feather. What's happening to me? I feel drowsy, like I've been asleep for too long. Is it daytime or nighttime? Is the moon out? I think I'll go for a walk. अच्छा ये पहले का है जब वो बाहर गई उसके पहले का सीन दिखा रहा था ये बैन शॉट ओ कट सीन Are you out for a walk too? अरे The day has come at last. Have I grown so weak that I can't even sustain क्या my अपना physical form? फिजिकल फॉर्म खो But रही moon है prayer night is nearly here. I was so close to returning home. Death is near. Is this how it ends for me? Will I return to the moon after I disappear? Or... I don't want it to end like this. So far, at least, I still exist. Even if not physically, I can still feel. But as my power wanes, I'm sure that too will fade. I suppose I might take one final look at this world. The world where I was born. Come on! Wait for me! The Frost Moon Enclave. How much it has changed since I was born. These decorations, they're so... It's times like this when you kind of wish men could be priestesses and acolytes. How fascinating. I've never had the chance to be privy to people's private lives in this way. In the past, people would get so solemn and serious the moment I showed my ये face, मर रही है ये like they were frozen stiff. Karina, Lamette, it's
It's time to eat. Coming. I want to watch them a little longer. I'm sure you're both tired from playing all day. Come on, eat up. A plain, humble meal. That has always been the way of the Frost Moon Scions. Huh? How come Lamatti got a midsummer berry dessert? Oh, I always get Lockaberry. I don't mind sharing. You can have a bite of mine if I get to have a bite of yours. They're sharing food? I've never shared food with anyone before. Even at the Harbinger tea parties, everyone just ate off their own plate. And when I couldn't finish my food offerings from the Frost Moon Scions, they'd leave the leftovers out under the moonlight for the animals to claim. Hey! That was 2 bites! Oh, then you can have— Oh, you too. Oh, don't fret now. Here, have some of Granny's too. So this is what it means to be family. So just fill these balloons with air, right? Yep. Try a couple now to test things out. The rest can wait till Moon Prayer night. Think fast. Right up! Teasing an acolyte of the Frost Moon Scions? Surely that's a punishable offense. Take this! Huh? Alright, enough horsing around. Lady Lauma gave us a task. We should get back to it. The task is just to check that the balloons don't leak, right? Doesn't matter if we fill them with air or water. Yeah. Okay, you got me there. And you got me there. But still, we can't use all the balloons before the festival even starts. We won't use all of them. And as long as Lady Lauma's trusted acolyte doesn't snitch, this can stay as a little secret between friends. A couple more can't do any harm, right? Oh, you menace. Then, think fast! Is pumping a balloon full of water really so much fun? I'm seeing so much that I'd never usually get to see. They'd never act like this when I was around. It's nice, being able to just watch people in peace in these final moments. What a rare opportunity. I think I'll go take a look around Nasha Town too. Maybe the Traveler will be there. After the War of Funerary Flame, the Moon Goddesses were no longer recognized by Teyvat. They lost the whole foundation for their existence. That's why the Moon Goddess's strength is fading. She cannot withstand the world's rejection of her. To be more pedantic about it, the Moon Goddesses did something to offend the heavenly principles, and that's why they were ousted. Something of a recurring theme in Teyvat's history. Theoretically, speaking so candidly should put me in their crosshairs too, but they can't tell me what to do. I'll say whatever I want. Anywho, the Moon Marrow energies were but a drop in the bucket for her, and that battle against the Ray Hair of Solnari only weakened her further. Fortunately, it happened close enough to Moon Prayer Night when the Kuvaki concentration here is high. That's the only reason she managed to survive this long. What do you mean, fortunately? You said she disappeared. We're too late. Oh, what a headache. I thought this was all common knowledge. I guess I have some more explaining to do.
Okay, buckle up. It's time for another lecture. Now, I said earlier that the moon goddesses lost the foundation for their existence. The reason for that has to do with the natural order. Basically, the rationale for their existence in Tevat was lost. The same logic applies to the present moon goddess too. Consider her existence so far. Her comrades in the Fatui called her Damselette. And she was worshipped as Kutar by the Frost Moon Scions. But these connections have now been severed, whether by her hand or yours. So, the rationale that once sustained her existence is now gone. Wait, we did that to her? Oh, well, strictly speaking, yes. But let's not start pointing fingers, shall we? I'll only end up as the big bad villain, and that's not the kind of final boss I want to be. Of course I do. I'm only the greatest mage in the whole entire world. Now, if you wish to find your moon goddess, there are two problems we need to solve. Firstly, we'll need to strengthen the connection between her and Tevat, at least enough to sustain her until Moon Prayer Night. Strengthen her connection. But does that mean I'll have to rally all the Frost Moon faithful behind this? I'm afraid a bygone faith and फिर मुझे तो प्लीज नहीं दिया तो शादी के बाद ब्लू ड्रम में चले जाओगे. शादी नहीं करूँगा तो Her name? Oh, yes. Names are लिव इन में रह very लिया तो important things. A name is a fundamental concept that anchors one's entire existence. Then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. So, finding out her real name is enough to sustain her existence? Yes, I know it sounds like a small step, but every journey begins that way. So for now, that's all we need to focus on. The second problem is with her plan to use the moon marrows to चेक भैया तो लब मिलेगा कलेगा. हाँ Unfortunately, piercing through the false sky will take an enormous amount of power. Given her current condition, she won't be able to provide anywhere near enough power, even if she recovers her physical form. But no need to fret. Nicole's the expert in this field, and I'm sure she'll figure something out. Wait, Mage N is going to help us out too? That means we've got 2 Hexencircle mages on the case. This is turning into a pretty big deal. Actually, मेरे this लिए is more of a side quest for me. समझा नहीं भाई मैं. Like you said, I'm a busy lady, so I can't stay for too फिर long. प्लेन में बैठ I जाना. have to return to Tevat's border soon. फिर प्लेन में भी हाथ जाना है. That's the upside you get for looking out for my little Klee. Love Hopefully marriage. that will incentivize you to carry on keeping her company in the अच्छा. future. Anyway, jokes aside, देखा जाएगा let's भाई. get moving. It will take quite a miracle for the moon goddess's consciousness to hold out till Moon Prayer Night. Oh, I suppose I might as well tell you where Nicole is before I leave. Off you go now. Time to meet your new friend. Oh, yes, and a little suggestion. Don't forget to mind your heads. What? I wonder how Durian's doing. I should really go see him before I head back. You really are super busy. I most certainly am. There's so many children I have to keep tabs on just in Mondstadt. Durin, Albedo, Venti, Varka. Klee didn't make the list, huh? Of course not. Klee is my pride and joy. I have no qualms about her, because she's the best child in the whole wide world. Yep. Klee's a little angel. I'm glad you agree. Well, all the best. See you when I see you. See you when I see you. Wow. She left in a hurry. बहन दा खुदा. Yeah. She didn't pack up her stall. Should we handle it for her? I must say, I'm now very curious about her daughter. Klee, wasn't it? What's she like? That's a long story. Come on. We'll fill you in as we go. Come on. We will fill you as. What the heck?
लामा को फील कर रहे हैं भाई ये दोनों। चैट पढ़ लो। हाँ कहाँ है ध्रुवा। अब ये 0-0 कैसे हो गया? 0-0 क्या कैसे हो गया भाई? गुरु इतना लेजी है। लेजी कैसे? 15-15 का शेड्यूल करके अभी तक नहीं आया स्ट्रीम करने। मुझे क्या पता, मेरे फूफा का लड़का थोड़ी है। अच्छा वो मैंने रीसेट किया अभी। वो रीसेट किया। What a lively place. Hey, you old geezer! Your hammer's rusted through! What the heck, you old geezer, your hammer is rusted through. ये उसके हैमर की बात कर रहा है ना? Are they I'm looking right at him! You've really gone downhill since giving your daughter free reign in the workshop. Can you even swing a hammer anymore? It shouldn't take you days just to fix a single chair. You might as well use that hammer to massage my back for all the good it's doing. Don't run your mouth, or you'll फूफे get का a लड़का? back massage अरे that'll put फूफा का लड़का, फूफे का लड़का, बात तो वही है the ना? rest of your life. Look, the materials haven't arrived yet, all right? I'll bet you send all the materials to your little princess. Blood's always thicker than water, huh? All right, you've made your point, Uncle Koski. As soon as the materials arrive, fixing your chair will be the #1 priority. And Dad, if you've got time to chat, why don't you lend me a hand, See? Lolka knows what the score is. I guess they're friends. But the way they spoke to each other. भाई ये कोलम्बिनस जगह जगह घूम रही और सबको जज कर रही है भाई। It wouldn't be the first time I've seen something like this. मैरियनेट का। One more time, and I'll unscrew your vocal cords. You hear me? Unscrew your vocal cords. So that was her way of trying to be friends with me. What a pity. I won't get the chance to say any ugly things in reply. Hey, have you decided what to give her for Moon Prayer Night? I sure have. She's gonna get the surprise of her life when she's least expecting it. Then I'll whip out the ring and pop the question. The surprise of her life. What a fun... Cool, I get the picture. You can spare me the gushy details. Ooh, looks like we have a customer. Hello there, ma'am. Would you like some Moon Prayer Night candy? Huh? Is he talking to me? Can he see me? Here you go. Oh. अच्छा इससे बात नहीं कर रहे थे भाई। भाई मेरे को एक बार लगा कि ठीक कोलम्बिनस ठीक हो रहे हैं यार हार्ट में। I don't know why, but I still held out hope. The most important thing right now is to find that mage. This name thing seems super important too, but where do we even start looking? I'd better go pay the Fatui a visit. अरे यार बाबे मोदी जी तुम्हारा सिया मोदी जी। Columbina? Oh, she can sense her. Traveler? Let's go! This is no time to be spacing out! अच्छा मोदी जी ने मॉड जी बोला। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो गया। पता
They mentioned a mage and a name. Nicole. So, Mr. Varka, are you acquainted with this Nicole? Or should I call her Mage N? Ah, not really. We've never met, though she has come up in conversation. From what I've gathered, Alice kind of took Nicole under her wing. Taught her how to speak in a more ladylike fashion, that kind of thing. Huh. Hard to imagine Alice as an etiquette coach. Yeah. Alice is a larger-than-life personality, I'll give you that. But then again, that's why she's able to draw such an eclectic mix of people into her inner circle. If I remember correctly, being an interesting person is actually one of her main entry requirements. So, if you ever wanted to join the Hexen Circle, I'm sure you'd both be eligible to apply. Hey! Don't go around making promises on Alice's behalf. I wouldn't dare. I'm just trying to paint a picture of the Hexen Circle for you. Okay, sure. Anyway, since none of us have ever met Nicole, how are we supposed to find her? We can't just go up to every woman in sight and ask, "Hey, are you Nicole?" Maybe something she's wearing will give it away? Like a wind bloom pinned to her chest or something. आ गई निकोल भाई. Alice never said Nicole was from Mondstadt. Oh, true. That would be this young lady, then? This young lady. Hey there! Sorry to disturb you, but are you Miss Nicole? Varka, Knight of Boreas of the Knights of Favonius. Alice might have mentioned me before. If we got the wrong person? Well, this is awkward. When I shook my head, I meant, no, Alice hasn't mentioned you before. Huh? Where is this voice coming from? My apologies. For certain reasons, I am unable to speak. This is the only way I can communicate with you. It might take some getting used to, but I hope you can understand. Hey, it's fine. I'm more shocked by the fact that Alice never speaks about me. As for you two, we have crossed paths twice before, but it is nonetheless a pleasure to finally meet you. It's really you! Thanks for all your guidance in the past. तीन की You're watching. quite welcome. कोई ना. This time things are Unmute different. करेगा नहीं. We have reached the unwritten pages of the story. You might say that we stand at the crossroads of fate. Now then, allow me to formally introduce myself. My name is... No, stop! Alice! I can't believe it! I had a whole speech prepared. I'd agonized over every single word. She always picks the worst moments to ruin other people's plans. I'm so sorry about that. Alice took the liberty of devising some bespoke self-introduction magic for each member of the Hexen Circle. But I could have sworn I deleted all of the triggering conditions for it. How did it bypass everything? Oh gosh, this is so embarrassing. This is a very different side of Nicole than what we're used to. Is she not used to face-to-face interactions? Don't worry about it. We've seen that introduction magic once already, so it wasn't too much of a shock. Please go on, Miss Nicole. We'd love to hear what you have to say, or, well, communicate. Communicate. Are they talking to this lady? But will you all promise to forget that horrendously embarrassing introduction? Sorry? Embarrassing? When? Yes, my name is Nicole, and I am one of a very few angels who have retained both their preferred form and their power. The Traveler and Paimon should be no strangers to this concept. There is another of our kind in Natlan. They call her the Lord of the Night. Alright! Paimon remembers her! Yes. Well, I have retained more of my power than she.
It's because I don't have a आराम long-term खोरो duty to fulfill. बेटी शॉर्ट मोमो To be more specific, no. We'll be here all day if I get into the specifics. Moving on. If I'm not mistaken, you are here because you wish to learn how one might reach the moon beyond the sky. That's right. Is that something you can give us any guidance on? देखो फिजिकल फॉर्म की बात स्कर्क मेंस तो ना करे मेरे सामने एटलीस्ट कोलंबिना के पास प्रोस्थेटिक लिम्स तो नहीं है ना Yes, I do know a way. It began with the Hyperboreans, who lived after the War of Funerary Flame. Blank looks. Maybe I should start with the background of the war, or maybe not. It shouldn't be an issue. I'll fill in the gaps for you when we have more time. Anyway, after that war ended, the three moons retreated to beyond the false sky. The Hyperboreans were humans I once aided. They accepted the civilization and creations bestowed upon them by the angels. But despite accepting many blessings of the angels, many among them still held on to their faith in the moons. They were reluctant to accept the new order, even after the War of Funerary Flame. They sought to contact the moon goddesses beyond the sky and receive their guidance. But all three had passed away by that point. This mage has a unique method of communicating. Is she talking about the moons? Yes, but they did not know. And so, still they prayed for the moon goddess's mercy. After building titanic structures that consumed vast amounts of kuvaki, at last they glimpsed the moons and heard their voices. But of course, they were gravely disappointed. For it was then that they realized the three moon goddesses were dead. Oh, that's such a sad story. It is. Humanity was in a very sorry state at that time. The angels who had once aided them were gone, and the War of Funerary Flames had left them homeless and destitute. Just a second, I gotta ask. How relevant is all this history to the task at hand? Well, I mean, it's... Okay, it seems we've drifted into irrelevant narrative waters. It's been a while since I've had the chance to speak inside someone's head. As soon as I got started, I lost control, and the words just flowed out like a waterfall. What I'm trying to say is... Right, yes, that's it. The relevant part is the ritual created by the Hyperboreans. The fact that they bypassed the false sky and saw the true moons implies that they successfully built a connection between Teyvat and the outside world, which means, with enough kuvaki and a sufficiently stable connection, it should be feasible to send one person over the border. Okay, so they built some kind of portal? Yes, मेरे पास अभी कितना पुल्स होगा? Yes, a portal. अभी पापा को फोन करेंगे ना तो वो जो डंडा पुल आउट करेंगे उसके बाद जो तुमको चट चट पड़ेगा ना डंडा फट्टा तब पता चलेगा तुमको. करे पापा को फोन. You sound disappointed. I just didn't expect you to summarize it so well. It turns out I could have said all हाँ that भाई in one word. वो मैं कैसे ना If only करूँ I'd राज. managed to think of it. No, please, it's fine. This is invaluable knowledge. I'll be sure to record and preserve everything in writing. Oh, really? Well, in that case, I suppose I could backtrack and add some more detail. I did gloss over a few things so far. Whoa, time out. Let's summarize what we've got first. The Hyperboreans were the last ones to use this method, right? So we somehow need to find whatever structure they built and make sure there's enough kuvaki to power it up. Luckily, we have the moon marrow of both the eternal and iridescent moons, so we're all good for kuvaki. Which means the key issue we need to focus on is finding the place. Am I right so far? Yes. Although I expect the structure is long gone by now. That said, what if we could take advantage of the phantoms to travel back to a time when it still existed? Well, travel back isn't quite accurate.
It's more like we'd be creating a handshake between 2 points in space-time. We wouldn't even have to pick a time when it still existed. It could just be a time when it still appeared in phantom form via projection, or we could project our own phantoms, fold them together, and... You look lost. Was that too hard to follow? Yeah, things got a little, Technical there. Paimon's brain is reaching capacity. All right. Let me think about how to put this more simply. Okay, got it. Over the next few days, I'll search for phantoms that we can use. Once I find one that meets the criteria, I'll let you know and we'll regroup. By completing certain rituals, specific individuals will be able to enter the phantom and make it to the Hyperborean structure. If everything checks out and it looks feasible, we'll just need to wait for Moon Prayer Night, and we can send the Moon Goddess back home. I'm really skimping on the detail here. Is this making any sense at all? I think so. For now, we'll just wait to hear from you. Yes. Basically, yes. Great. Counting on you. In the meantime, we'll focus on finding the Moon Goddess's name. My name? Are they looking for a way to stop me from disappearing? Excuse me, Miss... Moon Go on, Goddesses. Miss Nicole. This conversation was a little all over the place. I didn't catch your name. I am Lauma, of the Frost Moon Scions. Ah, I did wonder. I noticed that you listened very intently when I spoke about Hyperborea and the moon's history. If you'd be interested, I'd love to visit you this evening and go through it again in greater detail. Also, if you were serious about making a record, it would be too risky to simply write down the raw details as is. I would suggest some tweaks. Maybe rewrite the stories as fairy tales or fables, perhaps even prayers. Anyway, we can cross that bridge when we come to it. So, see you later then? Oh, and no need to prepare anything. Just a cup of tea will do. See ya! She seems friendly. Ah, it's so nice to find someone who's actually willing to listen. I've been dying for a chance to finally go through all this systematically from start to finish. Any longer and I'd probably start forgetting it. Now Paimon gets why Alice told us to mind our heads. Ha 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 ha! What did I tell you? A lot of quirky people in Alice's orbit. Now then, the next order of business is... where do we start looking for the Moon Goddess's... Maybe the rest of what Nicole has to say might give us some clues. Once I've heard her out, I'll summarize the salient points and share them with you all. I'm also inclined to review our other documents. Yes, our faith was first established by our Hyperborean ancestor, but many of the more factually accurate records are from after Kutar's birth. Sounds like we're gonna follow Columbina's journey through Teyvat, huh? In that case, we'll start by heading to the Frost Moon Uncle. Sounds like a plan. Take this with you. I'll see about getting in touch with the Fatui. It'll probably just be Arlecchino and Sandroni again. They're the only ones who would want to help. Thank you, Mr. Varka. Don't mention it. Honestly, I'm more comfortable dealing with the Fatui than prying into the details of a young lady's childhood. Catch you later. I should follow them, just in case there's some way that I can help.
अबे क्यों तुम लोग मारा मारी करते रहते हो बे? A while ago, I took the time to organize all documents in our possession that pertain to Kutar. What you see here is the material I consider reliable. You're saying there's unreliable material too? Yes. Most of the information we have was transmitted through an oral tradition. Inevitably, some of her stories were mythologized and deified over the years through countless retellings. That's why I organized them into reliable and unreliable. There's no sense seeking answers in history unless we can ensure the veracity of— Makes sense. All right, let's take a look through. Almost all these records refer to Kutar instead of Columbina. Although neither of those is her real name. What we can gather from these records is that the Frost Moon Scions worshipped her as a god, placing impossible expectations upon her. I cannot fault them for their earnest faith, but for all their devotion, worshipping her day in, day out changed nothing. I imagine that none of it resonated with Columbina. It wouldn't surprise me if, even back then, she had already begun to reject the name Kutar and everything it represented. Lama speaks the truth. When I heard them call upon Kutar with hope and expectation in their voices, they may as well have been calling upon somebody else. Well, that's a bit complicated. I looked at the level of detail, perceived authenticity, prose style, and how realistic their portrayal of Kutar seemed to be. Amongst the Frost Moon Scions of today, only I know of her existence, and I alone have spoken to her face to face. As such, I know that there are certain things she simply would never do. That being said, I have sensed some changes in her lately. Changes? Me? Seems like this is getting us nowhere. For what it's worth, why don't we check the unreliable sources too? Sure. Give me a moment. क्या हो गया? बैंक में जाने के बाद भी अकाउंट बैलेंस पैसे में ही. Kutar sheared a great mass from the snow-capped mountain and cast it into the sea, upon whose surface shone the mirror image of the moon. Thus was formed the island of Hisi. Yeah, right. That doesn't even begin to pass the sniff test. The three moons are not but lies through and through. मैं थोड़ा गोली के चैनल से घूम के. And Kutar is her name. The vast majority of ancient texts are filled with fanciful tales like these. I trust you understand my criteria a little better now. Kutar did not speak, merely gazing into the distance in silence. And where her gaze landed, this was her prophecy. Clearly, whoever wrote this text never even met Kutar. Otherwise, they'd know that her eyes are always closed. What about you, traveler? What are you reading? Come on, let Paimon. The child wished to build a wooden nest with which to shield a fledgling bird from the cold. But being so young and lacking in strength, the child could not snap the branches from the trees. Kutar was passing by. Upon seeing the child, she summoned forth a Kuhenki, who built a beautiful nest for the child. I remember that. Not knowing the meaning of Kutar's divine intervention, the child dared not to respond, and thus ran home to call their parents. But Kutar was gone. The moon chanter declared the event a miracle and took the nest as a relic, placing it on high for all to see. The child was named as one favored by the goddess, and was greatly respected amongst the people. Yet, no further miracles were bestowed.
and this matter was forgotten in but a few years. Huh. Any thoughts after reading that? Yeah. Columbina probably just wanted to join the kid in making nests. Ah. I'd originally considered this a fabrication, because Kuthar did not perform any similar actions in subsequent records. But now that I think about it, it does seem like something Columbina would do. It's just that... She didn't know how other people would interpret her actions. She was probably worried about making things difficult for people. And so, she gradually stopped joining in. Yes. Oh, that's so sad. And now, I can make no such gestures of warmth, even if I want to. Still no name. That's a bit of a shame. But... Varka said he was gonna set up a meeting with Arlecchino and Sandrone, right? Let's go back to Nasha Town and see how he's doing. Let's see. There's Varka. Oh, and it's Durin and Albedo too. Yeah, this is pretty much the same place we bumped into each other last time. I convinced them to stick around a little longer. We were all waiting on people, so I figured having a little company would help pass the time. Ah, so you've been waiting for us? Does this mean that you've already arranged things with the Fatui? Sure does. Now you're back, we can go meet up with them together. How'd your investigation of the Frost Moon Enclave go? Well, we didn't find out Columbina's true name. But apart from that, it went pretty well. Aha, just as well that I didn't tag along then. I'm sure our moon goddess wouldn't want every man and his dog knowing all about her private life. Still, desperate times, desperate measures, I guess. Someone had to do it. So, Varka was waiting on us, but what about you two? Are you waiting for Alice? Oh, no. We already met with her. We discussed that experiment I mentioned to you last time. Oh, and she also handed me this communication device. That's right. I understand she informed you about the relationship फिर भी between Fontaine अगर कोई phantom speak है phenomena and Tevat's borders, yes? Fontaine She का wants me to उधर help her with some more काफी experiments ज्यादा on that सौरो front. था भाई. She said that she'll contact me through this device with more information. The nation of justice में ही injustice हो रहा था Following उधर तो. instructions and making observations. Pretty common research method. Takes me right back to Albedo's lab. Wait, then who exactly are you meeting? Someone you know. Albedo's met him too. But I don't think Miss Lauma or the Grand Master have been introduced. Introductions are overrated, especially in cases like this. मुझे भी याद है न्यूली डॉग फार्मिंग. So, it's not like the academia has Balladeer. prohibitions against going abroad. Also, I applied for leave. I've been writing to Hat Guy since obtaining a human form. I've already brought him up to speed on everything that's been going on in Nodcry. Hat guy? Turns out, I actually have heard that name before. Oh? Then why did you react the same way I did? I only knew the name, not the fella. But since we're all here, let's do some introductions for what it's worth. I'm Varka, Grand Master of the Knights of Favonius. Lauma, Moon Chanter of the Frost Moon Scions. And I'm a Driosh from the Vahumana Darshan of the Sumero Academia. Hat Guy. Good to see you again, Mr. Guy. I believe we last saw each other on the boat right here. Mind you, the only reason I came here is because there's someone I want to look into. लेकिन ट्रेलर को याद क्यों नहीं है वंडर का नाम? The Doctor, also known as Dottore, second of the Fatui Harbingers. From the tone of your voice, it sounds like there's bad blood between you. I was reviewing our archives and noticed that a lot of information about him was missing. Left a bad taste in my mouth. That's all there is to it. Dottore.
or Zondik, as he was then known, once studied at the academia, but he got kicked out before he could graduate. So the Harbinger's #2 man is a college dropout? Ah, how embarrassing for them. Last we heard, he was planning something. We actually heard that a few times before, even coming to Nocry, but we haven't seen a trace of him since we got here. He only appears when something interests him. For all we know, he might have left already. But the fact he did something here at all is worth noting. Why does it sound less like a file you're writing and more like a criminal record? Anyway, we were just about to meet 2 of the other Harbingers. Want to come along? You might learn a thing or two about him there. Sure. Even though they're Harbingers, well, they're old acquaintances of ours, so, you know, when you talk to them... I got it. The Frostmoon Scion's relations with the Fatui remain tense. Forgive me if I do not attend. In that case, we'll continue assisting Miss Alice with her experiments. Good stuff. Everyone's having a fruitful time. All right, we better get going. I'll lead the way. Well, yeah. That's obviously part of it. But I'm not the only one who has a score to settle with him. Neither you, nor Lesser Lord Kusanali, nor I want to see him meddling with things again. What's the hurry? Don't worry. Pigeons always know which way home is. Okay. You made it. Who is this? A scholar from Sumeru. They call him Hat Guy. He's an old friend of the Travelers. Wait, this is the academia representative you wrote about? He doesn't exactly look the part. I believe this will prove my identity. You'll notice it bears the seal of the Sanctuary of Surasthana. Well, what do you know? So it does. All right then. My mistake. It's fine. I expected as much. What? So as I mentioned in my letter, the academia's got its eyes on Dottore. But this matter remains top लग रहा था कि वंडर ब्रोकन कैरेक्टर होगा, सही में ब्रोकन निकला। बेटी को तो कोई काम नहीं। fewer people who know, the better. भाई आर्ले किनो कैसे बैठी हुई है भाई? I'm here in Nocry to pursue my personal academic interests. Gotta say, Varka, you did pretty well to keep all this under wraps for so long. Sounds like you got in touch with the academia about this way back. You flatter me. Where do I even start? Remember that time we fought Rerir at Star Sand Shoal? He sure let me have it then, didn't he? I'll bet Dottore had that all sketched out, with me as his convenient little pawn. He could not care less about us if he tried, but hey! The feeling's mutual. Does Dottore really strike you as the sort who values his relationships with his colleagues? Fair point. Definitely not. Which is why I always keep my guard up whenever he starts making suspicious moves. To that extent, our motivations align. On top of which, I consider you trustworthy people. Now, back on topic. In the wake of the Reikir of Solnari episode, Sandrone and I grew suspicious about Dottore's complete inaction during the entire affair. So we tried to find out what he'd been up to, but unfortunately to no avail. He never lets anyone in on his plans. The more he cares about something, the more secretive he gets. Indeed. Perhaps he believes that by keeping a low profile, he can avoid trouble. But that trick isn't going to work on his colleagues. Yeah, I mean, he's been researching the ancient moon's remnants. And he's been trying to get his paws on the moon marrows. Only an idiot would believe he doesn't have something more planned. With this in mind, I returned to Snezhnaya and relayed my thoughts to Her Majesty. हेलो ये फ्लावर्स के डिजाइन वो सेम डिजाइन सेंटर के बेल्ट पे देखो जरा.
That's pretty direct. Did the Tsaritsa agree? Yes. I made it abundantly clear that the Fatui's business in Nodcry is almost concluded, and we do not need 3 harbingers in this territory. Her Majesty concurred. Accordingly, Dottore has returned at her orders. I imagine he is continuing with experiments, which no one besides he would ever have any interest in. Common sense might mean nothing to him, but he's not stupid. He knows that no good can come from opposing the Tsaritsa. Smarts alone won't get him all the way. He needs the Rooster's resources and Regrator's Mora, both of which the Tsaritsa can strip from him by waggling a finger. But doesn't he have a track record of publicly following orders while going against them in private? He probably has it down to a fine art by now. Wouldn't put it past him. We worked together on a research project once. Exactly, तो वैसा नहीं है. But it was enough to show me that we're fundamentally different people. He has no interest in doing things methodically, stage by stage. His thoughts jump all over the place, and the moment his curiosity is satisfied, or he gets the results he wants, he disappears. The only similarity we share is that, once we set our minds on doing something, we will see it done, whatever it takes. Oh, we definitely saw some of that in your battle with Rerir. You got so competitive. Ugh, do not remind me. Then I believe we all concur. Dottore will not simply give up. Fantastic. Now this is turning into a whole day of unpleasant memories. Ugh. Are you talking about the moon marrow stuff? He also strikes me as the kind of person to disregard experimental regulations, ruin all the equipment, and go way over budget. Then leave the first person he can find to deal with the fallout. Exactly. This one time, he was running some high-temperature experiment and the substance exploded. But does he care? No. He orders his subordinates to open the device so he can observe the results, which causes the gas inside to leak out. That gas was poisonous. If I hadn't been there, who knows how many people might have died. And after all that, he left while I was still cleaning up after his mess. What a waste of time, he said. Waste of time? The nerve! He wasted my time! You've been bottling that up for a while, huh? Hat guy, I must say, you seem awfully familiar with internal Fatui affairs, especially when it comes to Dottore. Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. I have no other questions for now, so I'll be on my way. Wait, what? You're just gonna leave? You're welcome to join if you want. Ugh. Just when Paimon thought he'd finally mellowed out. He makes quite the impression. I'll say. I've met tons of headstrong people, but not many of them would join me in bad-mouthing Dottore. Anyway, back to the main agenda. Barca, you said that Columbina has gone missing? Or rather, disappeared. Yeah. We're working on building a connection between her and this world. The simplest method is to find out her real name. I've actually asked her that question before, but she said she didn't know. Considering our relationship, I doubt she was lying to me. बैठकर डिवीजन का क्वेस्ट करूंगा alongside every Agnes circle characters. As far as I recall, she was never dispatched by Her Majesty to claim a gnosis or anything like that. The Tsaritsa's plans had long contained a place specifically for her. I always thought that was weird. What could she do that the rest of us couldn't? Knowing what we do now, it's probably something related to Kavaki, right? More than likely. When she first arrived, Columbina would often go to Her Majesty and ask when she could start the task assigned to her. But Her Majesty always gave the same reply. The time has not yet come.
So she spent her days in Snezhnaya doing basically nothing. The Tsaritsa has summoned a beautiful blind maiden to be a harbinger, giving her the third seat by virtue only of her enchanting voice. It was a dumb and stupid rumor, but the reality of the situation made it hard to refute. And what happened after that? I imagine she stopped caring. She no longer seemed to care why she had been recruited, and Her Majesty never gave her any missions, so she just continued to sing in the flower garden. For my part, I was busy. So busy, in fact, that watching someone be that idol had me fuming. But still, I got the sense that she had long been used to a life of other people claiming she was needed when she wasn't. I just felt that having a place to stay would cost me something eventually, and so I waited quietly for the day that I would have to pay the price. And on the other end of that spectrum, you had me. Someone once told me that I had the lousiest work and the toughest luck. That's a good way of putting it. I forget who said it, but those words have always stuck with me. But you've done your job exceptionally well all this time. Because at heart, you are a conscientious person. What is it? Something come to mind? That makes sense. Nothing screams you are needed like your name shouted from across the town. Well, good luck with it. But if you ask इन्हें कैसा लगा जेन्युइन आंसर चाहिए नो गुनिंग टैप शी still the most yeah shoutable that's good Arlecchino का डिजाइन पीक है used भाई to it now, after all the arguments we've had. none compares to Arlecchino's design Bother trying to remember another name for her. Nor I. Sandrone. Arlecchino. Does that mean Nicole has news for us? Ladies, I thank you for your hospitality. If the chance ever comes up, I definitely owe you both a drink sometime. I'm sure it will. You can make your own way out. Heck, you've been here enough times, you probably know your way around better than I do. Okay, time to do what adventurers do best. Follow that zip. तो लेडी बॉस लगती है वेट अ मिनट वो तो है ही लेडी बॉस Here you are. Oh, that guy. How come you're back so soon? Did things go all right with the Fatui? Fine. Dotori's been summoned home by the Tsaritsa. Couldn't get much more than that. How about you? Any progress with the investigation? Unfortunately not. We've tried everything. Different phantoms, different locations, different points in history. But the results are the same each time. Abyssal monsters roaming the land. People crying out in despair, with no hope of being rescued. Every time I see it, I can't help but think, is this what it was like in Mondstadt when Dragonspine Durin attacked? And if I fail in the task I've been given, will I create yet another tragedy? That's just meaningless speculation. When we encountered similar phenomena previously, I tried to interfere with those illusions, using sounds and lights to guide them. However, we could not change their fates. At most, we were able to extend their existences. The events of the past are like fate that has been written into Irminsul. There isn't a living thing in Teyvat that can escape its past. But Miss Alice instructed us to try to find ways to change the outcome that these phantoms face. It's an impossible task. Can't you just refuse? Since she asked us to do this, I feel like it can't truly be impossible. Or if it is, वो एग्जाम खत्म हाँ mages can make the impossible possible. I could not have been born as Durin otherwise. But you also said that your past 39 attempts were fruitless. इसलिए मोबाइल लैग करते जा रहा था वाह
That's true. But you're still going. Yes. बात बता कोलंबिना आज तक तुझे प्रीमो देती आ रही है. After this many futile attempts, surely you realize that you're not doing this because you still believe what Welkin some Moon. mage told you. It's because you want her hypothesis to come true. It's something you wish for deep inside. So, think for yourself about what you want to do. As long as you don't believe it's futile, it isn't. Yeah. Previous experience indicates that we cannot touch the phantoms, which limits the effectiveness of our interventions. If we want to clear this hurdle, we need to break this rule somehow. Same thought here. Following the same rules means repeating the same failures. Reducing ourselves to mere playthings of fate. So you mean we need to figure out a way to make contact with them despite knowing that we can't? Yes, and I suspect that's something only you are capable of. Everything in Tevat is logged in Irminsul, but the withering that once occurred in Sumeru was a sign that the Great World Tree was being corrupted. This corruption allowed things that should not have existed in Tevat to appear. You're saying abyssal power might be able to affect those phantoms? No one's ever tried it before. If you're gonna try it, it'll take courage. And you have to be confident that you can control it. Is anyone there? Has anyone seen my daughter? She's missing. I have to. I hear someone inside. Spargana? Ah! If I can use my abyssal powers to warn him that there is danger here, maybe it'll change his decision. Maybe he'll stay away. Yes. The important thing is not the nature of the power, but rather how you use it. To intimidate and obstruct. Sounds about right for the Abyss. Let me try. I should be able to influence that thing. Have you seen a little girl? What? This isn't the time for that! Just run! I hear someone inside. Spargana? Are you in there? Where are all these monsters coming from? Have you seen a little girl? What? This isn't the time for that! Just run! I hear someone inside. Spargana? Are you in there? What is this? Looks dangerous. I should get out of here. He really left. Ha! We did it! Don't celebrate too soon. Follow him. See what he does next. Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. No! There's monsters ahead! Wait, is that the barrier I saw earlier? Why is it appearing now? It's as if someone's controlling it. The monsters are gone. Is it safe now? The barrier
too. How odd. Anyway, I guess I'll keep going. Quickly, let's keep up. Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere. But my daughter must just be up ahead. I have to go. This way's blocked. We might be able to use the explosives over there, but we need to take care not to hurt him. I'll use the barrier to keep him at a safe distance. This barrier seems to be helping me somehow. Hey, wake up! कोई बताया ड्यूरिंग वाइट मोड में यूज करो या डार्क मोड. हेलो आइजन. So many monsters. There's still a chance, Durin. Use the traps. अरे यार. Help me! ये बीकेल कैसे बच गया भाई? एक बीकेल बच कैसे गया? जी भाई डीपीएस एंड सपोर्ट कौन सा होगा? डीपीएस है भाई. अबे यार. एक चला गया फिर मां की आंख. एक तो साला एक कंट्रोलर टाइम पर काम नहीं करता. साला लेटेंसी क्यों फील हो रहा भाई मेरे कंट्रोलर में? हो गया. This is a new development. I've never seen this happen before. We might just be able to save this person. ये ड्यूरिन का क्वेश्चन चल रहा है क्या? देख कर तो ऐसा ही लग रहा भाई. Have you seen my daughter? Spargana is her name. She's... Get out while you still can, you fool. You won't find any survivors. But
I can't just leave her here. She must be... Sorry. Wish I could help. Okay. If I do find her, I'll get her to shelter and come back for you. Don't bother. I've got nowhere left to go. What's that noise? No, if he goes inside, he'll be walking into a trap. Let's try this once more. This time, we have to stop. Hello there. Have you seen my daughter? Get out while you... But I can't... Okay, if I do find her... Don't... What's that noise? Monster! No, if he goes... Why? How will I know where Spargana's gone like this? You know what? I'll trust this strange barrier. It's gotten me this far after all. Hey! What? Spargana? Are you there? I guess हो गया ये. Huh? That looks like one of my daughter's books. Thank you. Yes, it's one of hers for sure. Durin, just like last time. Use the explosives. It won't work, but then this clue could be the key to him It might not be the only one. Better he misses that clue than loses his life. I guess so. Stop him, Durin. We can't let him get any further in. It's my daughter's book! She's passed this way! Why? Why won't you let me? I've searched and searched and searched just for this! I no longer have anywhere else to go. I'm sorry. He refuses to go anywhere else. Whether he opens this door or not, all that awaits him now is death. We couldn't change his fate. Albedo? Hat guy? Let's try one more time. I don't know how we're gonna do this, but I don't want to give up either. Why am I here? What's going on? All these scenes running through my head. Huh? What? His reactions have changed. How many times have I... What's happening to me? Huh? Wait, who are you? You can see us now? I feel like I always could, but that I only just realized you were there. I'm sorry, I don't know how to describe what... But you were the ones guiding me using that marked barrier, right? I haven't done anything yet, but those monsters, those deaths, they feel like memories. Like things I really did experience. I won't find my daughter. In fact, I'll ultimately die trying to find her. Isn't that right?
No. Yes, it is. Even so, we're trying to find a way out of this. You've not seen my daughter either. It seems she really isn't here. I'm sorry. I'm just tired. Maybe this is destiny. Maybe it doesn't matter how hard I search. How long do I have left? Experience says 15 to 20 minutes. 15 to 20. Thank you for all your help. Let's rest a while. You look exhausted too. Now's not the time for you to start pitying us. It's not pity. I'm just realizing that I've only got 10 or so minutes left. You know? You say you're from Mondstadt, yes? A place with windmills, where people enjoy limitless freedom? And you're from Sumeru, where they've built an academy into a giant tree? Yes. It seems you've never heard of either place. Those names are unknown to me, I'm afraid. Yes. Have you heard of Hyperborea? I have, but I heard that it was destroyed in the distant past. I see. That was where my ancestors once lived. क्या हाल बना दिया किसका क्या हाल बना दिया भाई Was it later rebuilt? मेलिको कुणाल हाँ I've never heard that name. Then what about Sal Vindaknir? I have seen that name on stone tablets on Dragonspine. But I'm afraid the only things left of that place are its ruins. I see. Sure enough, there was no way to turn this around, huh? I'm sorry. I was the one who asked to chat, but it seems like we're too many ages apart. There's barely any common ground to start from. It's all right. We did hear something new, at least. From how you speak of your lives, things must be going all right for you, I guess. They are. Mondstadt is a place of freedom and happiness. There's a lot of good people in the church and the Knights of Favonius, and even outsiders find that it's an easy place to feel at home. We have festivals a few times a year. Everyone gets together to drink, sing, and be merry. Sumeru is a lot more uptight. Not really the kind of place where you can relax. It's a nation fraught with problems wherever you look. But if all you want in life is to seek knowledge, I guess it's pretty much paradise. That's wonderful. In other words, after this all-devouring black tide passed, humanity did not merely avoid check करके आया था सही बोले हैं Hello Shao I mean, I can see you all right now. That must mean the future isn't a total mess, right? That's true. Well, time's almost up. Let's part ways, I think. Might be best if you don't waste too much time on me. The chances are slim, I know, but I'd like to spend these last few minutes looking for Spargana. If things work out, I'd love to tell her about what I've heard. May we meet again. Well, or not, most probably. In that case, may your wishes come true. He's gone. In a few minutes, he will meet the end that was his to begin with. The ending of this tale did not change. But I believe that we've just made the most progress we have yet. May your wishes come true. If only it were so simple. Hat guy, could I ask you a question? You've never talked about your past. It seems complicated, and it weighs heavily on you, too. Would you be willing to tell me about it? I mean, sometimes it's better to get things out in the open. Take that guy we try to help, for instance. At least he said goodbye with a smile, right? I know about Albedo's past. Our experiences are very similar, and he created me. As for you, you're my first friend, and you've witnessed every step I've taken. But by comparison, I know nothing about you. Either way, I mean, we're still best friends. But if I knew more about you, I might understand your thoughts a bit better. I've told you about myself. I'm a student at the academia. And what did you do before that? Prepared for the entrance exam? All right. If you really don't want to talk about it, I won't press you any further. I was a puppet built from the branches of a white tree.
using technology left behind by the Conrian schools of mechanical engineering. A white tree? You mean an Irminsul tree? Yes. A branch of Irminsul that was once connected to the main tree. So you had a human creator too? Yeah. But my creator abandoned me after deciding that I was a failure. After that, Durin. Resisting the influence of the abyss, suppressing the urge to destroy, trying to do the right thing. None of these things are easy, but no matter how hard they are, trying to rewrite past wrongs is far harder. You asked me if you would create a new tragedy if you failed. I told you there was no point speculating about that, but the real answer is, yes, you absolutely will. That guy. But at least you've got people here to help steer you away from the wrong path. So, just keep aiming towards the light. I will. I promise. Alright, break time's over. Hello? Hello, friends, it's me! What have you been up to, I'm detecting some unmistakable fluctuations here at the border. The amplitude isn't particularly high, but they're completely different signals from the ones before. And the scale is comparable to those I've detected previously. Alice, we were unable to save that person. However, he appears to have retained a portion of the memories gained through that cycle, and was able to hold a conversation with us. I see. Well, that is rather odd indeed. It definitely merits further attention. Could I trouble you to keep trying the same approach? I need to gather some more data. Counting on you. I should probably have Nicole come and check this out as well. There you are. I was worried you might stop to collect treasure chests opened by the Seelie along the way. It would have taken you so much longer to get here. Another conversation I cannot hear. I am delighted to see that you understand what takes priority, and that your adventurer's instinct has not swayed your resolve. Really, I must applaud you for it. Paimon's head. Okay, I'll try and keep it short. My senses are telling me that this is where we shall find the entrance to the ruins. Oh, cool! Well, what are we waiting for? Let's open it up and see! Patience. This was a sanctuary of great importance to the Hyperboreans. Oh! Like the place that housed the Eternal Moon's marrow? Okay, so what's the plan? Need us to do anything? And just the short version, if you can. Ah, alright then. I was planning to start with some background on the invention of these techniques. Are you sure you don't want to hear it? It's quite informative. Remember what you were saying about priorities? Fine. Simply put, we need 3 human representatives to successfully undergo a process of Kuvaki resonance. Think of it as a test from the 3 moon goddesses to see if the entrants are qualified, with the most recognizable qualification being Kuvaki. Pretty sure Lauma would ace that test. Oh, wait. But we need 3 people. I also have no doubt that the Moon Chanter would be qualified. But we would need 2 other people with the same constitution. Therefore, the most feasible method is not so much to follow the rules, but to figure out how the test functions and find a workaround. I've done some research, and it turns out the mechanism is rather crude. We'll simply need humans to stand before it, who have sufficient Kuvaki energy within them. I'm with you so far. How do we get the Kuvaki in them? The easiest way would be transfusion. Take some Kuvaki from Nodcry's soil, put it into the bloodstream, and get it circulating in the body. So we're going to cheat on the test? Precisely. There are other methods, but this is the simplest one. Cheating the system is much easier than trying to hide from it. Huh? Sorry?
Does the idea of cheating upset you, Miss Lauma? No, that's not it. I suddenly had an idea. Ooh, what is it? It's about Moon Prayer Night. I figured out a way for Kuthar to join in the festivities. Huh? But as Paimon said, we need to have our priorities straight. Let's get back to the test. I'll follow up with Nefer on the festival arrangements. Oh, okay. Anyway, is this really the best method we have? A Kuvaki transfusion sounds dangerous, no matter how you slice it. If you think that's dangerous, wait till you hear the other methods. I'd be more than happy to go through them if you'd like. There are several. No need, we're good. Let's go with this one. Very well. Kuvaki transfusion it is. Now, I should mention that the risks can be greater or lower depending on individual compatibility. It would be rash to simply infuse the Kuvaki and hope for the best. If the body rejects it, the reaction can be quite severe. The symptoms are similar to another condition that some people living here suffer from, known as congenital Kuvaki sensitivity. So, before we execute our plan, I will perform a simple test of my own to see who is compatible and who is not. Once that is done, we will have to complete the resonance process as rapidly as possible. The participants must remain stationary. अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब. मेरा बल्कि तो भाई 10 दिन में खत्म होने वाला है. देख लो. Hardcore fasting. रमजान जीत जाता है भाई. कल साला अगर एक रोल जो लास्ट में जो हगरा था ना मेरा, अगर वो नहीं मेरा हगरा होता तो मैं जीत चुका होता वो वाला. 3 days. लेकिन चलो कोई बात नहीं. बट 40 CVPCs तो ठीक ठाक मिल गए कल 2-3. Not just compatible, but also willing to volunteer. Fasting? What are they talking about? Really? Don't you want to think this through? Haha, count me in too. 3 days without food? I can handle that. Miss Nicole has made it clear that this is the easiest way. The way I see it, there's nothing else to discuss. It's time to step up. Yeah, you're right. In that case, Paimon volunteers to be captain of logistics. She'll keep the fires lit and grab some spare clothes to keep you comfortable. Then we'll start with you first, Traveler. Please step forward. How's it going? Do you feel anything? How about now? And now? What about now? You guys, it's not a competition, you know. All right, I'm officially impressed. Even as a descender, you can withstand far more than I imagined. It's like I summoned a giant stone titan to arm wrestle you, and your arm hasn't even moved an inch. In my last attempt, I infused 5 times the amount of Kuvaki required. Yes, safe to say, compatibility won't be an issue for you. You're eligible to join. You're next, Mr. Varka. Sure. All right. I'll start where we left off. 5 times the required Kuvaki dose. Whoa, whoa, whoa. Hey, wait a minute. How's it going? No, not great. I kind of want to puke. Feels like I've been drinking too much. A few bottles of wine, then a big stein of Dark Horse, with some hard liquor from Liyue mixed in. You think this is funny? I just lost to a young lady in an arm wrestling contest. I'm never gonna live that down. My apologies. I'll lower the concentration and try again. Oh. How's it going now? I'm not as dizzy as last time, but I can still feel it pulsing around. In that case, you wouldn't be an ideal choice, Mr. Varka. Let's try someone else.
Okay, let's go ask some of our other friends. वारका की तो हवा ही निकल गई भाई. No surprises here, Miss Moonchanter. You're perfectly compatible. You may join. I'm getting a slight headache. Shame. You were so close. Whoa, I'm itching all over. Allergic reaction. We can't have that. Huh? Well, are you gonna start a what? The Hexenzirkel is an organization that cares for and protects children. We will not have them do dangerous things. Not even tests. इन्हें सस्टेन कर लेगी, I guess. Is something the matter? The candidates have to be human. That rules me out too. Everyone except the Moonchanter got beaten. Guess I don't need to feel so bad after all. I mean, looks like this isn't gonna be as easy as we thought. Perhaps I could ask for volunteers among the Frost Moon Scions. I'll see about talking to some trusted Lightkeeper colleagues. Itlua springs to mind. In fact, I think we had some former Frost Moon Scions join our ranks recently. Can you give me the scientific explanation for how the test works? I can probably make some kind of test bot. Then we can just zip through Nasha Town, going up to people and pressing a button to check their status. Wouldn't that be way easier? No. Wow. No elaboration for once. How about I contact the Knights of Favonia's garrison in the Wave Chaser plane? Shame that. Strange. The moon goddess is clearly revered by many people. So why is she on the brink of disappearing? She mentioned that the world has rejected her from the very beginning. And when we fought the Reikir of Solnari, it seemed like she exhausted her power for our sake. Also, Paimon's not sure revered is the right word for how people feel about her. Gratitude, certainly. For my part, anyway. It's basic reciprocity. She helped us, so she deserves our help in return. Yeah. Even though she looked like she didn't care, she still saved a ton of people, including me. A review of the relevant data leads me to conclude that Miss Columbina is a good person. Miss Columbina is a good person. She is a good person, and by the way, you have nice camel too. I'm super surprised that Columbina isn't her actual name, though. I think it really suits her. It's light and graceful and... yeah, just a really pretty name. I know, right? Unfortunately, that's not our decision to... Columbina. That was the code name the Fatui gave me. But... is that really all there is to it? What do I truly think of my own name? 30 से 60 मिनट में खत्म हो जाएगा. इतना ही था क्वेस्ट. Still call me by that name? Moon Prayer Night is getting closer by the day. We're running out of time. We need to look for other candidates. Then allow me to try. नेव ये तो withstand कर लेगी भाई. ये तो भाई. Friends via the Adventurers Guild. The Crimson Moon has been keeping an Descendant. eye out for something like that, so she informed me. Descendant क्या I है? ये have तो the ना. ability to accommodate a moon marrow. I should prove to be a suitable candidate. Arlecchino. When can we begin? I Just see. now. We can begin right away. How was it? Did you feel any discomfort? None at all. Then it seems we shan't need to look for additional candidates after all. Great! Cool. All right, like Paimon said, the rest of us can take turns making sure the three of them stay warm and comfy. Then, my job is to take care of the caretakers. I will ensure everyone receives food and accommodation. I'm ready as well.
कर ही लेगी रिसेंट मून मैरो वाली। हाँ ये तो कर ही लेगी, अरे यार अभी और फार्म करती है ये। कोलंबिना भी वहीं सोई हुई है। आता मैं ओके। The work is done. The sacred scroll shut. The stars grow dim, the people silent. The white sun sets, the silver moon rises. O path to the temple, appear now before us. Wow! It really opened! So that's what all this is about. They've been trying to open this gate. Come, let us enter. It might be best to eat something first. Take care to chew properly and swallow slowly. It will give your body time to readjust to the digestion process. They will head in soon. They will need to enter this gate. Huh? I cannot pass through. It has been 3 days. My strength is all but completely faded. Can I really hold on until Moon Prayer Night? No. आया मैं वॉशरूम से, ठीक है वॉशरूम से आया मैं जस्ट 2 मिनट में। फिर लोमा वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन हो गए भाई। डियर है ना, डियर्स तो वेजिटेरियन ही होते हैं भाई। भाई मैं सुनो, मैं क्या कह रहा था ना
कि मैं 12 बजे से ही लगभग बैठा हुआ हूँ। मुझे खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगी है ज़ोरों की भूख। तो मे भी 5-10 मिनट का ब्रेक और मैं आया सुसु करके। भाई सुसु बोल रहा हूँ, लिटरल में क्या बोल गया। हाँ, आप 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ अपना क्या कहते हैं कुछ खाने को लेकर बाहर से फटाक से, क्योंकि कुछ है नहीं भाई यहाँ पर, मैं मर जाऊंगा ऐसे, भूख लगी बहुत जोर की। तब तक मैं चैट में हूँ, ठीक है। Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. What could the children be up to? Never mind. Let them do as they please.
Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. मैं भी आ गया. हाँ. जब तक मैं ये खा रहा हूँ तब तक के लिए कैमरा ऑफ कर देता हूँ एंड फोन भी चार्ज हो जाएगा. Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. तुम्हें भी भूख लग गया, जा मम्मी को बोलो, मम्मी दे देगी. और क्या. मैं पनीर खा रहा. वाह भाई, मस्त. खाओ खाओ.
अमीर लोग कभी नहीं मानते हैं कि वो अमीर हैं। बस 2-4 मिनट और हो ही गया है मेरा। भाई लोग कितने मतलबी हैं यार। अकाउंट रिव्यू करवाने की जब कर रहा था तब 3058 सब्सक्राइबर थे, 5 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया अकाउंट रिव्यू करवाने के बाद। किसको नहीं चाहिए होते हैं मुजान? Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. ये कहाँ गया? यहीं हो बे। Okay, 2 more minutes.
What could the children be up to? Never mind. Let them do as they please. इतना ठीक है, I guess. सोच रहा है एक और वीडियो बनाओ. वाह, आइडिया है लेकिन पता नहीं है. ओके, लेट्स सी. मुझान चैट ना, मैं कोई गलत कदम नहीं उठा रहा भाई. Judging by their clothes, they appear to be phantom Hyperboreans from the distant past. That could mean they फिर have कैसा बनेगा वो बोल रहा हूँ. द आउटकम. अच्छा, बना के देख कैसा बनता है. Hey there! Could you tell us what the moon goddess's name is? Sorry. That's probably a weird question, huh? How do we explain this? The moons are long gone, and their goddesses are dead. Their names no longer mean anything. When a new moon goddess is born, we will surely know her name. We have used every last resource at our disposal. All that remains is to wait, patiently and quietly. Were the people of the past all this devout? It looks like... Surely the new moon goddess he speaks of must be Columbina. Alas, Kutar's birth came long after the age in which he lived. But, maybe if we find a phantom from a more recent age, they might know Columbina's real name. True. Keep an eye out. We should be able to tell which era they're from by the clothes they wear. 1.8. Yeah, you've been pretty talkative this whole time. What changed? Oh, nothing. I'm fine. You all make good points. When the Hyperboreans speak of moon goddesses, they mean the three from truly ancient times. I can't imagine they would know anything about our current moon goddess.
There once was a time when the moon goddesses blessed them greatly मुझे and नहीं पता protected भाई them from harm. So, ऐसा कुछ होता नहीं when the होता war between the gods and dragons plunged the world into chaos, it seems they looked once more to the moons for help, praying for a new goddess to be born. Yeah, that checks out. Let's continue on. Who knows what else we may discover. There's a door blocking this path. Not a problem. Try this. What the heck? अच्छा This device was maintaining the door's integrity. Remove the core. Is this our destination? Impressive. More precisely, this is a device that will help us reach our destination. Let's go. We still have a long distance to cover. टकरा गए क्या टकराए थे आई गेस Let's try that device again. Remember the door from earlier? अबे आ क्यों नहीं रहा इस पे क्लिक करने को अबे what the heck oh ये रहा The humans we see are all phantoms, but the monsters are real. What a fascinating place. There'll be plenty of time to fire it later. Commendable. What the heck? Let the mountain's veins boil. Ooh, there's a whole bunch of artwork in here. That's the Lily Sala. Old. Nicole, this is probably your area of expertise. What do all these paintings mean? Let me see. To understand these murals requires some knowledge of the history surrounding the War of Funerary Flame. I shared a little of this with Lauma before. Yes, I think I follow. The dispute between the Moon Sisters, the transformation by Nibelung. Oh no,
it's no trouble. I'd be delighted to share the tale again. It will look like she is mine. Tevat's 3 moons सुधर जा कि किसी पे लाइन सब पे नहीं मारते. By the will of Nibelung, the then ruler of Tevat. But when the heavenly principles came, they changed the world completely, down to its very foundations. By the way, guys, can you see the V? The moon goddesses were nowhere near strong enough to challenge this entity. But the heavenly principles did not view them as heretical entities that had to be removed. Essentially, the 3 moons existed to keep this planet alive and operational, which did not directly conflict with the heavenly principles' aims. Nevertheless, the inherent precariousness of this arrangement would soon be revealed. Nibelung returned. Yes. He did, and thus began the War of Funerary Flame, a battle for dominance between Nibelung and the heavenly principles. Discord would soon emerge between the 3 moon sisters. One would voice the opinion that they should follow Nibelung, for it was he who first hung the moons in the sky. Another would argue that taking sides in the conflict would only bring the world closer to ruin. There was no telling where it would lead. Especially since their creator had returned, bearing the perilous power of the abyss. Nibelung would eventually discover their disloyalty. He had all 3 imprisoned before transforming the moons into weapons with which to fight against the heavenly principles. What? Weapon? Yes. The very moons that had once defended the planet became instruments of death and destruction, striking terror into the hearts of all living things. And although the heavenly principles and the 3 moon sisters had once been at peace, it now seemed that the moons posed an unacceptable threat to Tevat. It is possible that the heavenly principles did not know of the goddess's imprisonment. If so, the weaponization of the moons would surely have been viewed as an intentional breach of the peace agreement. Regardless of who knew what, when, the heavenly principles shattered 2 moons and flung the other beyond the skies. Whether the goddesses managed to escape Nibelung's captivity after his fall, nobody knows. But this much is certain. From that day on, the moons no longer belonged to Tevat. The rejection slowly drained their power until eventually they passed away. So that's the full story. You say the moon ceased belonging to Tevat from then on. Why then would Columbina be born here? That is perhaps due to the lingering connection between the Frost Moon, which was not shattered, and this world. You could see it as the 3 sisters' dying wish. They never desired war. All they ever wished for was to protect this land. I see. If the final fate of the 3 goddesses is as you say, then Columbina faces the same grave danger. Our investigation has yet to bear fruit. We must hurry. Yeah, you're right. Let's keep going. बार बार आता है ओके निकल गया विजन क्या पायरो
We're finally here. Guessing we'll need to activate this thing? Indeed. I was a Live little stream में worried दिखा था ना? about that at first, but as we got closer, I sensed that the Kuvaki within it flows unimpeded. It should be functioning normally. The only issue is how to activate it. It's looking a little worse for wear. What about the cores from some of the other devices we've seen? Can we repair it using those? In all likelihood, yes. I imagine that would have been the Hyperborean's backup plan. Let's look for some वीडियो लॉगिन क्वेस्ट के बेस्ट पार्ट पे आने वाला है तू अब 15-20 मिनट में. ओके, लेट्स सी. Teamwork is dreamwork. Wind Strider. ये किसी में डालना पड़ेगा. अच्छा, ओह ओके. Walk up, then jump down. Be enough cores. Let's head back.
Okay. The device is up and running. क्या time in chest कहाँ है? To believe that the ancients were capable of constructing such things. I'm on Caesar destination. It's right. Oh अच्छा हाँ बे. Yes, let's go. कहाँ? जिधर से आते उधर ही. Oh. Nice. उठा लिए चेस्ट हरामखोर. ये खुद को टाइम आउट क्यों मारा? This is where the people of Hyperborea communicated with the moons. We need only place the moon marrow upon this platform on Moon Prayer Night, and we shall be able to open a portal to the moon and send our moon goddess back home. The assumption being, of course, that we can find her first. That's right. You want to know if it's safe there, don't you? And yet, she has no choice but to return. You know this. That's not the only issue here. This is the end of the line, right? We've explored everything we can, and despite looking at historical artwork and talking to people from Hyperborean times, we're still no closer to learning Columbina's name. If it's not too much trouble, could you tell me exactly what Alice said to you about finding her name? Oh, sure. What she said was... Then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. Is it not also possible that she has never had a true name? Not at any point in history? That would be a hard pill to swallow. But at this point, we may have to accept that that is the truth. Well, no one knows how she came into being, and she certainly doesn't have parents in any sense. से कुछ याद आया अभी से रेहान मैजिक मोड ले इसे उन्होंने को टाइम आउट मारने का ट्राई किया था. और चीप प्राइस नहीं होता क्या? लेकिन कितने मिल रहा है? 340. अब कितना चीप होगा भाई? Huh? Wait, why all this pessimism? Was it the way I phrased this question? You all seem to be taking this in completely the wrong way. Well, just because she's never had a real name in the past doesn't mean she can't have one now. What? Think about what Alice said again. She never once said that you'd have to find a new name, did she? Are you saying what I think you're saying? Yes. Names are anchors that connect us to the world. If she doesn't have one already, then all we have to do is create one, no? It's like... yes. Traveler, when you first arrived in Teyvat, do you think you would have turned around if someone behind you shouted, "Hey, Tumaini"? But what about now? I understand what you mean. Life is a long journey. Even the friends and family by our side can change over time. When people call you by different names, what matters isn't so much the words themselves, but what they symbolize, and of course, whether that resonates with you. Ether. So, close your eyes and picture the moon goddess in your mind. If you were to call out to her in this moment, what would you say?
Columbina. Columbina. Paimon would call her Columbina too. Well, she has long forsaken everything that Kuthar represents. I think from now on I should call her Columbina too. Well, it sounds to me like you found your answer. Are you sure? Is it really that simple? We haven't found her this whole time, and not for lack of trying. For a journey like this, the process is every bit as important as the outcome. Had you not searched far and wide, rejecting every other answer you were offered, how could you have come to an answer you felt was finally correct? Oh, it all makes sense now. This has Alice's fingerprints all over it. Are you suggesting that mage knew from the start that Columbina never had a real name to begin with? I can't say for sure, but I can definitely imagine her chuckling in satisfaction somewhere right now, saying, "Ah, what fun." Llama, your antlers! You should hurry. The festive moon has begun to rise. Do not worry, for when you called the name Columbina just now, I could sense that the power within was enough to summon back the moon goddess. The power within what? Yes. So, the thing is... What's wrong now? This is so annoying. I really want to explain how that whole thing works. Starting from the founding principles of Teyvat and... Oh, I could talk about this for hours. But... Deep breaths, Nicole. Deep breaths. You're an angel. A sober, sensible, solemn angel who has her priorities straight. Okay then. Sorry for asking. Clearly a bad call on Paimon's part. Anyway, you all need to hurry. Last thing, remember how it felt when you called out that name. Then it is agreed. By the name Columbina, we shall find her. Then we'll throw her the best Moon Prayer Night party ever! I hope कि ये तो work कर ही जाए. And at last, we will send her home. I can barely move anymore. My consciousness is fading away. Have they come back out? I'd love to see them one more time. They didn't make it. Could you tell me your name? My name is... Columbina! Columbina! Are you here? Columbina! That's the name you gave when we first met. And it's what I've called you ever since. Columbina. It's a fine name. I have many fond memories of Columbina, and so do all of your friends. If you like this name, looking for me? I like it. You can carry on using it. My name is Columbina Hyposelenia. Oh, Columbina finally, Hyposelenia. bhai. That's
That's a wonderful name. वो जो उसके कान में आके बोली ना, मेरे को लगा कि अब ये किस कर लेंगे क्या भाई? Columbina would become my real name. But after I met you and my other friends, the things that this name stood for slowly began to change. It went from being a Fatui code name to something my जल्दी friends सोच. call me. Lesbian Lex. हरामखोर. ओ भाई. ओ भाई. Okay, she is back. What is it? Why aren't you saying anything? I'm just so happy for you. Thank you. So, where's everyone else? We can go and meet them very soon. Everyone went to different places to try calling your name. Great. I'd like to thank them as well. Everyone's done so much for me. Searching for my name. इधर कहाँ है? मुझे क्या पता? Entering those ancient ruins. Huh? Wait, so you were... Yes, I was there. Not physically, but my consciousness was still holding on. I followed you the whole way. Starting from when? You turned around and called out my name while you were in Nasha Town. Do you remember? Let's go. We don't want to keep them waiting. Sure. In that case, come with me. But... Hmm? Before that... Could you call my name one more time? Columbina. Sure. Come with me, Columbina hyposelenia. Such a cute name. Chat तो देखो भाई. Cannot dodge only my chat. एक्सेंट आर्ग्यूमेंट अप्रूव्ड है. ये तो वर्किंग कर जाएगा, लेकिन और एक आदमी इसका प्लान वर्क कर गया बहुत अच्छे से. अबे हट तेरी, तो इसलिए नहीं पढ़ता. फेसबुक बैन हो गया मित्र. अब मैं गेंशिन कैसे खेल पाऊंगा मित्र? गया तुम्हारा गेंशिन का अकाउंट. Columbina. Oh, this truly is wonderful. Llama, I can't breathe. She just choked the goddess with her titties. Thank you, my friends. With your help, I now have a name that belongs to me. Columbina. ये क्या लिखा है? कोलंबिना शर्मा? Where's the second half कोलंबिना from? You शर्मा got it रही है? yourself? That's right. It means... Born beneath the moon. Yes. And by extension, it can also mean born beneath this world. A fine name. Now, as much as it pains me to interrupt this beautiful reunion, I feel obliged to remind you that the Moon Prayer Night celebrations in Nasha Town have already begun. Don't you want to enjoy the festivities? There's so much to see and do. What the heck? And some of the ambient lighting and entertainments were sponsored by the kind souls in the Hexen Circle. सालों क्या क्या लिख रहे हो? Nicole? Why have you turned into Dodoko? So you're Miss Nicole. Thank you for helping us. And for helping me find my name. It's nice to finally hear your voice. You're quite welcome. Guiding lost people to hidden treasure is what we Sealy do. And if you ask me, spiritual treasures are far more precious than material ones. Chests are all well and good, but this was what it's all about. So satisfying. Anyway, I had to go help Alice. It seems like she ran into some trouble. That's why I couldn't be here in person. But don't worry, we're with you in spirit. We'll be celebrating right along with you. Keep an eye out for the Hexen Circle's festive stalls in Nasha Town. I think you'll like what we came up with.
Alice said she even managed to rope B in this time. The Frost Moon Scions have also prepared various attractions. I believe Aino and Effa and their crew are setting things up as we speak. On that note, Nefer, about that request I made. It's all in hand. Yehoda is on site to ensure that everything goes off without a hitch. Wonderful. In that case, travel. Huh? Come on, Columbina. It's time to celebrate the best moon prayer night ever. ये सस क्यों साउंड किया मेरे को? हाँ मुझे पता तो लाइव स्ट्रीम में ये बात कर रहा हरामखोर. Hey, young lady. Would you like some moon prayer night candy? Happy moon prayer night. Oh, yeah. I almost forgot to say. Welcome home, moon goddess. Damn. Welcome home, moon goddess. Welcome home, moon goddess. Welcome home, moon goddess. Turning Nashatown into her home is a festive gift. A rather brilliant idea. Perhaps this is what Nodcry, Columbina's home, should have been like all along. Thank you for the gift. I like it a lot. This feels like the surprise of Damn. my life. High literal high. Damn. I do. I never imagined I'd ever get to enjoy Moon Prayer Night with everyone so freely. कि निकोल तो हमको भी चाहिए. मेरा ट्रेजर तो निकोल होपफुली मैं भी मेरी डी को ट्रेजर तक गाइड करे. What the heck? हरामखोर. ये तो ये अच्छी चैट है. Your usual style, Lauma. Is there something about Moon Prayer Night that enhances what's in your head as well as the antlers on top? Apparently so. It even inspired a perennial penny pincher to use their resources for a greater cause. It truly is a magical festival. अरे बैन शॉट. I see it now. ये क्या सेस्बियन लेक्स होने वाला है क्या यहाँ पे अभी? It's actually a sign of a strong relationship. Huh? What's everyone doing here? Oh, Miss Columbina, you're back. Yes, I'm fine now. Thanks for your concern. How's your progress with Alice's assignment? Very well indeed. I've never heard her sound so excited. Not like this. This time her excitement seems more serious. Seems like she's had a major breakthrough. She said she'll contact us once she knows more. In the meantime, we're free to relax and have some fun. Enjoy the time off while it lasts. I have a feeling that our next task won't be so simple. प्रीमो होता है 7 प्रीमो तो एक पुल भी ना हुआ फिर भी मैंने वो डोलिंगो वाला क्वेस्ट किया. And I think I'll take a look around. With any luck, this once-in-a-year festival will come with once-in-a-year opportunities. Hold up a second. Where's Varka? I believe he made a beeline for the flagship the moment he entered Nashatown. Ah, that's Mondstadters for you. They know what they want when festivals roll around. Goodbye for now, Columbina. I hope you have a wonderful night. I will. Well, in that case, don't just stand there. Get out there and have some fun. You'll definitely get a warm welcome at every stall. Oh, also, take this map with you. It's a guide to the festival.
अच्छा ये क्वेस्ट वाला है क्या? वो क्वेस्ट का भी मतलब जो इवेंट है उसका भी क्वेस्ट इसी से साथ में ट्रिगर हो जाएगा। Alice seemed more excited than anyone about this festival, so she insisted on making it a grand affair. Oh, and then there's the Nasha Town local specialties, including... Actually, forget that. Better if you go check them out for yourself. Thank you. It looks like a lot of fun. You're not coming with me? We'll be around. But don't you want to browse by yourself for a bit first? Yep. If you find something you like and want to try it out together, just give us a shout. We'll be right with you. Otherwise, just relax and enjoy yourself. There's so much on offer, so try to experience as much as you can. And don't forget to stuff yourself with all the delicious festival food. All right then. Off I go. Where should I go first? This must be the mage's stall. नहीं, डोरी बहन की ओए डोरी के पास अगला चला गया। Aw, what a pity. I saw it with my own eyes. You were so close. So very close. That's not true. It dodged out of the way right as I was about to snag it. I'm sorry? You heard me. This paper frog can move. I swear. Dear, oh dear, what are you saying? How could a paper frog move? Unless you believe there really is magic. Even if I, the mere humble merchant that I am, knew such magic, surely I would not use it on a paper frog. I'd sooner give Mora legs, so I could walk right into my purse. My dear, dear customer, why not have one more try? This time I'll give you 12% off. A very generous discount for one of my most regular customers. Just think about how much experience you have under your belt now. You're sure to win the next one. Darn. I used to बच्चों को स्कैम कर रही है भाई। I'll be right back. Just gonna fetch some more from my house. Take your time, but don't take too long. This event is Moon Prayer Night only. Miss it, and you'll have to wait a whole year before I'm back. Next customer, please. Welcome. Hello. Whoa! What's this big one doing over here? How do I tell my employees not to go running around this time? Shooting them a glance won't work. I haven't known them long enough. Dory? Why, hello there, Miss Columbina. Would you like to play my ring toss game? The rules are very simple, and it's easy to get the hang of. डोरी इज अ स्कैमर भाई। बच्ची को स्कैम कर रही थी भाई, देखे First time's free. कितनी हरामी औरत है। After that, well, नॉट we औरत, can cross हरामी that bridge टिंगू। if and when we come to it. But with your sharp eye, sharp skills, I'm sure you'll win all the prizes in one fell swoop. That was an obvious enough hint for them, right? Here comes the ring! Oh, peanuts. Change tracks. Roselle, should we move or not? Just a tiny bit. All right, then I'll... Oh, sugar plums, not the clock hands. How do I move the legs again? Stop it! Stop dodging! नेक्स्ट बैनर कौन से हैं? नेक्स्ट पैच में किसके बैनर्स हैं? नेक्स्ट पैच में भाई तुम्हारे की कोलंबीना का तो बैनर पक्का से आएगा। एंड नेक्स्ट बैनर में तुम्हारा वेरिएंट सिलोनिना। And here's your prize. Now, how about another round? As for the card... Happy Moon Prayer Night, Miss Columbina. Happy Moon Prayer Night, Durin and Hat Guy. Are you here to play the game? Yes.
You said we were just coming here to say hello. I did, but then I recognized a few more people as I got closer. Do my eyes deceive me? It's our little dragon. He's all grown up. Well now, since you came all this way, why don't you try out this lovely game we have going? He'll have a go. It's only one free try per customer. You can't give your try to him. I'm aware. How has Elder Almond been lately? He's in great shape. He tried to go boat racing with Firecracker a while back, but he... कितने टाइम का है क्वेस्ट? कौन सा? ये वाला? Dragon, can you still ये वाला fly? क्वेस्ट 1 बजे स्टार्ट हुआ. एक या 1:30 बजे स्टार्ट किया था आई गेस. But you've become less chatty. Has growing up been tough on you? We call that maturity. You know, the thing people sing about. The knight wields a sword of stone to defend those hearts that are made of gold. Stone is very heavy. That's what keeps them from talking too much. That's awesome! I want to be a knight when I grow up too. Ring, here I come! Oh, the hat-wearing man. I never thought I'd see you again. You seem more determined than when I saw you last on the train. If you say so. Oh, I do say so. The people you once helped see it clearly. It's because you are once again on the right track. May the engine in our hearts propel us to the station of our dreams. I can move! I can move now, Rosette! What are you doing? Running into the rings like that? You got them all. I've never seen anything like this in all my travels. Is this... How? They're origami animals and clockwork people from a fairy tale. Getting to know them would be quite an arduous task. Unless they share a... I have to get to the bottom of this. Next time I see the great mage Alice, I shall demand... Thank you, Dory. I had a lot... now for your prize. Where did I put it? Give me a moment to dig it out. Oh, sweet grand prize. How I wish I didn't have to let you go. Good thing I've already turned a profit from the customers earlier in the night. Otherwise, I'd have wasted all my hard work. Okay, I'm back. What? I leave for 2 seconds and someone's... Oh, well, these things happen, you know? Perhaps you'd be interested in one of the other prizes instead. We've got all kinds of wonderful goodies here. Here, you can have it. Huh? But... Don't worry about it. It will be happier with you. Oh, thanks so much, miss. I mean, Moon Goddess. Oh, goodness gracious, Columbina. Give me strength. How am I supposed to make any more money from this child at this rate? Daddy, look! That's the game I was telling you about! Forget it. She is the Moon Goddess after all. I'll think of some other way to swing this. Maybe I can try to hook this ये कोलंबिया ज़्यादा पावरफुल है. What the heck? विशी चैट में लूफी कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा भाई? You can take mine if you want. What? Why? Why are all these bleeding hearts coming here to ruin my business? Happy Moon Prayer Night, everyone. Happy Moon Prayer Night. And furry creature वो बोला मेरे सर्वर डाउन है का? Jumps. Maybe हाँ. Moon Goddess. या फिर उनका स्टॉक्स खत्म This होगा. one talks too. Allow me to introduce myself. I am a Dodiko from a distant archipelago, the most mischievous of all my Dodo brothers and Dodo sisters.
When the going got tough, I powered through, and when I met obstacles, I boomed them away. That sounds like a lot of fun. Doesn't it just? Oh, but then the trouble started. ओए ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है क्या? ये मैं लाइन स्किप कर दूं? ये तो आएगा तो फालतू बकचोदी चल रही है और कुछ नहीं. So I dove in to have a look, only to find it overgrown with seagrass and nasty little spiky fish everywhere, Important है. looking to turn me into a Dodoko kebab. I made it back to shore by the skin of my teeth, but my tail was sorely hurt. Couldn't you just boom them away? Oh, I wanted to, believe me. But I've heard that you, Moon Goddess, can understand animal speak. The last thing I wanted was to cause a gigantic fuss and get taken to court by a school of spiky fish. I'd be driven out of these waters for good, and my winter holiday would be ruined. And so, dear Moon Goddess, I was wondering if you might lend me your allegiance. Are you roping me into a crime? Oh, let's call it a once-in-a-lifetime carefree adventure. All the festival goers tonight are dressed up as the Moon Goddess. But there's nothing to say that the Moon Goddess can't disguise herself as a Dodoko, is there? Besides, this is your home. You should be free to be whoever you wish. I'm afraid I'm not well acquainted with Dodokos, Madam Mage. Oh, that's quite all right. We Dodokos are innocent, happy creatures with a free-spirited nature. Many, like myself, are mischievous troublemakers. Others are lazy souls who like nothing better than to lie down on a nice rock and take a nap. In our eyes, every creature who yearns for happiness and freedom is a Dodoko. But perhaps in yours, we Dodoko are a fluffier and more mischievous breed of Kuhenki. Yes, that is a much easier image to follow. Oh, wonderful! Then let's play! Grab onto my tail and follow me into the sea! Time to settle some scores with the bad guy! हो गया complete. No, there's literally just me. What the heck? हाँ एक की वॉचिंग पता नहीं यार, जान दे यार. कोई ना. Ooh, a remarkable talent. So, what do you make of it? The use of jumpy dumpties doesn't come as naturally to me as Kuvaki. But their unpredictability makes it fun. I think they call this novelty. Indeed! And how did it feel blowing those pesky nuisances away? Not bad. Any guilt? What do you mean? ये सारे स्टैंड्स कंप्लीट कर लेगा तो आएगा मजा. क्या है मजा? अब कोई ज़्यादा 2-3 घंटे का अभी भी क्वेस्ट बाकी है. Remember, if you find any meanies living on the moon, you can use this to boom them into oblivion. I will.
काफी कुछ है ना। जाकर 1 घंटे मैक्स, ज़रा 30 मिनट। कोई 1 घंटे को 30 I मिनट। wouldn't say it's unfair exactly. I mean, your voice goes right into people's heads. How would you explain that to the kids? You can't just explain it away as magic. Is something the matter? Ah, Miss Columbina. No, nothing you need to worry yourself about. Ah, impeccable timing. Stick around for a second, Miss Columbina. I need your input on something. This self-proclaimed Knight of Justice has yet to give me a satisfactory answer. I, for one, would like to Self-proclaimed hear your Knight of verdict on the Justice. matter. Hey, now, I left the flagship just to help you out, Miss Nicole. What's going on? So Alice and I are both using long-range remote control spells that work on Okay. similar principles, allowing us to attend this festive fair in Dodeco form. Sorry, let me backtrack a little. While similar, there are some key differences. Alice, being a great mage, wanted her Dodeco to reflect something of her own charm and mystique. So she adjusted the way its tail moves when it spins around. An entirely gratuitous move, in my opinion. I hardly see how anyone is going to notice that. If anything, I'd say that anyone who stares intently enough at a Dodeco's tail to notice such a small detail is someone we ought to be highly concerned about. I only say this to emphasize that my question has nothing to do with tails. Now that we're clear on that, why is Alice's Dodeco Hello, Anime Channel. permitted to interact directly with the children celebrating Moon Prayer Night, while mine is not? Your voice Long time no see. हाँ मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे तो पढ़ाई कर रहा था भाई। Exactly what I said. कल एग्जाम्स खत्म हुए। Miss Nicole? Ugh, I can't stand it. I know that probably makes me sound like a whiny child acting out in front of their parents. And it's a little embarrassing now that I think about it. But hey, I said it now, I can't take it back. That would be even more embarrassing. Also, don't go reading too much into that analogy. It was off the top of my head. I'm actually an awful lot older than either of you. Miss Nicole, are you saying that you'd like someone to play the game you've prepared? I'm not so invested in that. It's just something cobbled together using items I borrowed from Alice. She probably didn't even make them herself. The point is, I want to know everyone's thoughts after they receive their prizes. But as you've said, I can't just ask. I've been biting my lip for टेंशन so फ्री आ रहे long, और नहीं तो क्या? and I've had no one to vent my frustrations on. I thought this was going to be a nice, straightforward festival where I'd get the chance to guide people to treasure. Well, can I play? I can't guarantee that I'll win a prize, but... You will? I'd like to try. Then what are we waiting for? It's like they forgot I was ever here. वारका को साइड कैरेक्टर क्यों बना दिया है एनपीसी टाइप्स?
The heck is this? Congratulations, Miss Columbina. With your great wisdom, you have overcome every obstacle in your path and conquered the great challenge posed to you by fate. Fate? Well, something to that effect. If you'd prefer something more poetic, it could be the icy winds or the dawn. Anything you like, really. You could even go with the challenge posed to you by Dodeko, if that's what you're into. Anyway, you can take or leave my suggestions. Moving on. All my hopes are now resting on this. A new event take early after Archon quest. Open it now? Stop teasing me. Please, I'm begging you. No more talk. Just... Wow. What a lovely sculpture. Classic and cute at the same time. Thank you, Miss Nicole. I'll always treasure it. Ah, there we go. Music to my ears. You have my sincerest gratitude, Miss Columbina. Thank you for sharing your precious time with me and fulfilling my wish. Don't mention it. HIV positive You've all tu done sale. much to help me. And still, I'm the one receiving all these gifts. ओ भाई साहब रुको 1 मिनट में आया हरामियों इतने जल्दी नहीं होता भाई Welcome home, Moon Goddess. Oh, you're the genuine article. Alice was right. This Moon Prayer Night was worth watching after all. Another one that talks. Greetings. Pleased to make your acquaintance. I am the Hexenzirkel member they call B. Barbeloth Trismegistus. बड़ा जल्दी हो गया तेरा साले Pleased to meet you too. कल मैंने को नीचे से देख चिराग अबे तेरी तो हट Hyposelenia. A fine name indeed. Now then, Miss Columbina, do you wish to hear a mage's divination? No. Divination. The frost moon No scions used to no ask करने me का what ऑप्शन है happened क्या in the future. Is this like that? From the perspective of the one seeking answers, perhaps. ये भाई मैन As मैटर you look शिलाजीत to your गोली लो journey लॉन्ग ahead, ड्यूरेशन के लिए If you seek to understand the unknown, resolve your doubts, आराम and करो soothe the confusion in your heart, divination could be for you. The unknowns on my journey. Of course, if one wishes to peer into fate, then hydromancy is the more precise Dad देख option. आज बोलता है But that कि is a complex affair. And to relegate that majestic art to the चलो status भाई of a festive amusement would seem आराम somewhat करो uncouth. Besides, it is sometimes better to not know fate with great certainty. Hence, I shall use the suitably festive Luna Arcana to tell your fortune instead. It is more popular with the youth in any case. Lunar Arcana. Indeed. Unlike hydromancy, this will only display possibilities and trends. People like to think of themselves as creatures of agency and free will. Peering too far and too clearly into the future is detrimental to both body and soul. I'd like to give it a try. Of course you may. Come then, take a seat, Miss Columbina.
Before we begin, are there any specific questions you would like to ask? Let's stick to general possibilities and trends, like you suggested. Ah, very well. Then I shall use the basic Lunar Arcana deck. Now, try to relax. Cast your mind upon the things you have experienced and the things you are soon to experience. I will shuffle the deck. Would you like to cut the cards yourself? You do it. No problem. Now then, to make things easier for the seeker, that is to say, you, I shall decipher the cards from your perspective. Please, draw the first Lunar Arcana. This represents destiny and is the foundation for the divination as a whole. Now, draw your second card. This will stand for the past, the sum of all your experiences that have come before. And now the third Arcana. This is the present, your interpretation of the current moment. क्या भाई गुप्त रोग के लिए गुप्त तरीके से गुप्ता जी से मिले? तेरी तो डर वाली नहीं, अभी तक तो नहीं हुई. Finally, the last card. This shall speak of the future, which... Oh. Kuvaki Pulse? Fascinating. I've never encountered this before in my role as a diviner. Something has exerted an influence upon this card, causing it to leave its designated position. What do you make of this, Miss Columbina? Perhaps this is the guiding hand of fate in action. Of course, if you wish, you can choose to deny the validity of this card and draw the future for yourself. No, it's fine. Let's go with this one. A bold decision. I must say I'm looking forward to the results. Well then, let us flip the Lunar Arcana in sequence and see what emerges. Sure. First, Destiny. No surprises here. The moon. Indeed. The moon can represent the truth at some times, but deception at others. False peace, destructive calamity, and the world-changing power that lies within. When the moon is placed on the destiny tile, it indicates that your destiny is not what it may appear on the surface. Instead, it may yet have a hidden side. It symbolizes a journey through the fog, fraught with uncertainty and deception, where one must face inner challenges head-on. I don't understand. Patience, my dear. This is but the first card, which serves as a basis for the interpretations that follow. Our divination will only grow clearer from here on out. Now then, flip the second card, the one that speaks for the past. The Hermit, but inverted. Inverted? Yes. The Hermit symbolizes solitude, introspection, and the pursuit of truth. When inverted, it represents isolation, truth out of reach, and a path that leads one astray. Combined with the moon as one's destiny, the Hermit inverted represents a choice you made to stand alone in the past. It was a choice made not out of fear or arrogance, but for reasons that others could not perceive. You fumbled through the darkness without a guide, but you did not find your way. Rather, you went astray. More than once, it would seem.
Is this about how I became Kutar despite not wishing to become a god? I suspect only you know the answer to this question. All is not lost. The past is in the past, and so it shall remain. Shall we look into the present now? Oh my. The lovers. One of the most interesting Luna Arcana. What does this one mean? This means that you have had an unprecedented emotional experience. The joy of finding your soul becoming intertwined with that of another. A precious and wonderful thing indeed. It's true. I've made a lot of friends recently, and they are very good to me. I like them a lot. That sounds lovely. I am most delighted for you. The lovers can also represent important decisions, perhaps related to a parting of ways. Now, if I were to guess... Yes. My return to the moon. I understand. Parting with friends is never easy, Columbina. But rest assured, this is not the end of your journey. There is always another story waiting to be told. The future always lies ahead. The future. Well now, it's finally time to flip this most mysterious of cards. Why did it appear? And what does it wish to tell you? I'm ready. Very well. Flip this card and see what lies on the other side. Oh. Miss Barbeloth? What is it? This card Death. is death. That doesn't sound very good. It depends on how we interpret it. It is true that it can represent an agonizing death, a complete and utter end, but at the same time, it can also represent rebirth. Do not forget that your destiny card is the moon. That lends your future many different potential meanings. If death spells the end, is it unavoidable? As I have said, divination can only display general trends. It is a rough guide, but it does not show predetermined outcomes. Allow me to summarize it for you. In the past, you may have lost your way, but now you have gained new connections and new strength. You now face an important decision, one that may bring about a great change in what is yet to be. This change might, in turn, be the end of all things, or their beginning. But remember, everything is subject to change because of the moon present in your destiny. You must see the truth clearly and face your innermost thoughts. The truth. My innermost thoughts. Thank you, Miss Barbeloth. Don't mention it. Some people dislike divinations, for fear of glimpsing an ending to their story that they wish was not so. But I can see that you're different. The result of this divination will not sway your decision. This is a rare quality, and one that diviners always hope to see in the seeker. I understand. Go then, and illuminate your future, Miss Columbina. The moonlight that shines from you now is most captivating. Huh? Albedo? This sketch is for you, Grandma. Oh, a gift for me. The North Wind. So this is the Frost Moon Scions area.
think it looks quite funny. Well, Paimon thinks it's super cute. It looks like a silly chic badger and a rhyme-horn deer that's about to fall asleep. Maybe I'll stand on the chic badger's side instead. It looks like we've attracted the attention of quite a few animals. Let's make... Dodoko's Whirligig! Come check out Dodoko's Whirligig! Ah, welcome home, Moon Goddess. Hello, Tarun. Might I ask what this is? Ah, it's a very special amusement sponsored by the great mage herself. Ride on a soft and furry Dodoko and embark on an unforgettable adventure. I say that, but I'm just following a script here. Who is this mage, anyway? And what the heck is a Dodoko? I'd like to ride. No problem. But, are you by yourself? Is that not okay? Oh, no, it's fine. It's just that each Dodoko can accommodate 2 passengers. My friend. Traveler. That should do it. Now, we just need to get everyone else to draw something on it too. But we gotta keep it a secret from Columbina. Traveler. I want to go on that ride. Will you join me? Why not? I will join you. Let's go then. Let's go. Don't worry. Paimon will do the rounds. You go have fun. All right. I think we have to wait in line over there. Please take your seats. For safety reasons, you mustn't try to leave the ride before it comes to a complete stop. All right, you're all set. ओहो, ये तो झूला झूल रही है. Not bad. It reminds me of riding a moon lane. Sometimes, the Kuhenki circle around me like this, playing their beautiful melodies. Yeah. I'm going to miss them. It does. I've felt scared in the past, too. But this is a little different. You know something? I got to see a lot of fascinating things during my disappearance. I saw how the Frost Moon Scions act around their families. So different than how they used to act in my presence. And I also saw how they interact with their friends. It made me curious at first. Why do people act so sincere when they're worshipping gods, but save their truest, warmest feelings for each other? Slowly, I came to realize that it's because they trust one another. They know, deep down, that they'll be accepted for who they are. All of it. The good and the bad. I know. I knew it the moment you started calling out my name. What I fear now is the end. I fear losing all this the very night I have gained it. Thank you for this conversation. Thank you for listening to me. Don't worry. This fear I have, and the unknown that awaits me, they cannot hurt me. Not when I possess a treasure far greater. I just want you to remember this version of me. The real me. On this final night together. Dear passengers, Dodoko's awesome adventure has come to a close. Please leave in an orderly fashion, and we look forward to seeing you again in the future. Don't want the journey to end, huh? Don't worry, you two. There's always another adventure waiting just around the corner. Meow meow nigga. Meow meow nigga.
Frost Moon Scion's stall looks kind of plain, but I don't go to Hisi Island much, but it's got that, like, old world cultural feel. And if culture means we get more festivals, I'm all for it! Hello, Yaho. Columbine... hello, Moon Goddess? That was too close. I almost gave the game away in front of the staff. Oh, wait. What's the deal with her shoes? They don't make a sound when she walks. I could do with ये इसके heels को notice कर रही है भाई. Do you like balloons too? Balloons? Oh, what's so fun about balloons? I'm not a kid anymore. They're probably more up Aino's alley. Yes. The animals seem very curious about these strange flying objects. I was drawn here by their voices. I recently learned a fun new game you can play with balloons, so I decided to come and give it a try. A new game? Hello. Welcome home, Moon Goddess. Here to buy some balloons? Yes. Could you give me a few that haven't been inflated yet? Are you sure? I guess it's not a problem, but... Yes, please. Uninflated balloons? But those are just little rubber pouches. What does she want with those? Would you like to play the balloon game, Yehuda? Huh? Sure. I guess. How do you play it? Wait here a moment. Oh. This is so weird. What have I got myself into now? मतलब Frost में फिर वो hydro element shouldn't she be cryo? वो cryo बना लेगा. Uh-oh, that's the fourth harbinger. Although she's helped us out quite a bit, she's good people, right? Is she looking for Columbina? Oh, guess that's my ticket out of here. I'm not sure my heart can take being sandwiched between two harbingers. Yehuda कोई पकड़ेगी. Which stall is she checking out? Oh, it's that other Frost Moon Scion's one. Try on the headgear, see what it's like having antlers or animal ears for a day. Oh, I wouldn't be caught dead wearing that stuff. So embarrassing. I have enough gear to carry as it is. Wait, what? She put it on? This would take some getting used to. I wonder if this is what it's like for Lynette. अरे वाह, आर्ले क्या क्यूट सी स्माइल दे रही है भाई. आर्ले क्या क्यूट स्माइल दे रही है मैन शॉट. She was so intimidating a moment ago, but now, dang, she's really rocking those ears. How does she make them look so cool? I suppose I may as well keep them Oof. on for now. Cat mommy. The festive experience. She's coming this way. अभी आर्ले पता किसकी तरह लग रही है? वो क्या नाम था उसका? जानी के तरह लग रही है. बस जानी जो एक्स्ट्रा थिक एंड जो उसके एक्स्ट्रा साइज है वो एक आर्ले की स्लीक सी पर्सनैलिटी में वो जानी वाला फेस. उफ. ओ माय गॉड. How do you do, Miss Yehuda? नहीं लग रही है जानी. मतलब आई नो जानी के हॉर्न्स है लेकिन कुछ उसका देखो इसके हेयर स्टाइल एंड उसकी पर्सनैलिटी कुछ जानी जैसी ही है. Oh jeez, don't talk to me while wearing that thing. Where am I supposed to look? Oh, hey there. I'm looking for Columbina. Have you seen her? Mute Chirag, what mute? She just... भाई क्या तो बच्चों की तरह करती है भाई. That what she meant by balloon? ये जाने कौन है? वो खेलोगे तो पता चलेगा. एक बार सर्च करके आओ. जानी सेस्बियन लेग्स. अरे मार. No fair. How come I get caught in the crossfire? An ambush from the rear? Is this a declaration of war, Columbina? Would you like to play too, Arlecchino? Seriously? Are they gonna
gonna start some beef right here, right now? भाई ये दोनों मजाक मजाक में खेलेंगे और उसकी फटी पड़ी है। Another who would like to join? Boss Nev! Thank goodness! You've got to get me out of here. Things are kicking off big time. अब एक और आएगी, नेफर भी। I'd like 10. No, make that 20 balloons, please. Uninflated. What? Miss Moon Goddess, I hope you're prepared to pay the price for assaulting my employee. Welcome to the game, Nefer. Just to be clear, let's keep this a fair fight, okay? No अभी आएगा ना मजा। thank you. Naturally. Can I join? क्या मैं भी इनके साथ खेल सकता हूँ? Stand there, Yehoda. Aren't you going to team up with me? Huh? Do I have to? Of course. Don't forget, the curatorium has a reputation to uphold. I knew something like this was gonna happen. भाई क्या भागी है भाई। क्या फुड़फुड़ा के भागी मैं। अरे भाई 10 करने हैं बेंच। What's this? I wish for a never सुनने वाला एंड में करियो फील आएगा। supply of ओके ओके ठड़की What a बुड्ढा humble पर wish. ठड़की थोड़ी हो भाई। Probably written by a child. ओह Is that Lama the Moon Center? I wish that the long plume ibises would stop. Oh dear, poor Lauma. All right. I'll write that one down for you. I got it. While everyone else is celebrating Moon Prayer Night, you're as busy as ever. I don't mind. It's rewarding work. A good kind of busy. My antlers are at their heaviest tonight, and the Kuvaki waves are especially strong. But as I help these dear friends hang their wishes up, I feel a great peace within myself that is hard to describe. You see, they are all such beautiful wishes, and they are ones that we can fulfill by our own strength. Do you blame me, Lama? I want to hear your honest answer. It is by the help of so many people that I can return to the moon. But I feel as though I've hardly done anything in return. You've done plenty, Columbina. I say this in earnest, both as someone who knows your history, and also as a friend who has seen what you've been through. What about as a moon chanter? I feel proud to honor our moon goddess's wish, and I'm sure any moon chanter in history would have felt the same way. Thank you for your kind words, Lama. But since you asked for my honesty, I won't lie to you. My feelings are mixed right now. Besides pride, I also feel, I suppose, it's a reluctance to let go. Once you return to the moon, we will be far apart and separated by a false sky. I'm sure those of us left behind will gaze up at that sky, yearning for the moon once in a while, just as you used to do. I will miss you, Lama. I will miss you all.
I hope to stay क्यों in touch. भाई? I will try and find some way to Why? send messages अगर down from the moon. मून पर कोलंबिना को जाकर पता है नहीं कि मतलब मून पे जाकर उसके साथ क्या होगा, एंड तेवात में जब इसके फ्रेंड्स हैं तो क्यों जाना चाह रही है यार? मत जाओ ना. Perhaps you could use Kuvaki. I've heard Yehoda say that signals can be sent using long and short waves, or strong and weak lights. पता चला वहां जाकर अकेली पड़ गई तो? That sounds a little complicated. What if we forget what the signals mean? We could prepare a code book beforehand, but you're right. भाई कोई तो तरीका होगा ना उसको बचाने का, कोई तो तरीका होगा ही भाई. Whatever happens, I believe that you will find your own unique way of communicating with us. And now that I think about that, my heart feels lighter. Because you trust in me? Yes. I have faith in you, and in the power of truth. In my experience, the truth tends to be difficult. But that's what makes it stand अरे बोल रहा out कुछ from तो what is तरीका false. होगा यार, कुछ तो So तरीका I'm होगा. confident that your thoughts and your love कुछ तो तरीका हो will जिससे shine तेवात उसको through the एक्सेप्ट कर curtain of ले. lies. We will know it when we see it. Thank you. Now, could you help me hang up my wish? Is this? बता है अपनी जवानी. I wish that all who dwell in this moonlit world can find a place to belong. And I wish that I shall one day see my friends again. It's 2 wishes. I hope that's not too greedy of me. Not at all. And I think you speak for us all with the second one. I shall continue to pray until the day that all of these wishes come true. यार मतलब कुछ भी हो जाए कोलंबिना को जाना तो पड़ेगा ही. Zani is girl to early with llama body, yes. What's this? Should I give it a try? I don't have enough data. It is an eternal More first. samples. Ha. But who should I ask for help? Is this one of the amusements? Or is it a research project? Bit of column A, bit of column B. I'm currently running some synchronization tests on these bots. Basically, you need to press the button to help them successfully obtain the treasure. But you've got to time it right. I'll record your data, which will be used to improve the robot's accuracy. But, ma'am, I mean, Moon Goddess, don't you think you should take your eye mask off first? There's no need. I will be all right. Okay then. Whatever you're comfortable with. Great. Then let... Would you like to try again? ओए करना क्या है? Would you like to try again? Would you like to try...
अरे यार. Would you like to try? ये करके कुछ मिल भी रहा है. अबे Since I rarely get out, I might as well make the most of it. Nice. Data collection complete. This doesn't make any sense. How am I losing every single time? Wait, Inefa, you're cheating, aren't you? Yeah, that must be it. I am not cheating, I know. Uh-oh, sounds like Inefa's turning into a big baloney bot. I think it's time for some serious maintenance. Moon Goddess, help me. Miss Columbina, I know, is attempting to cheat. What the? I'm not the cheater. You're the cheater. How dare you throw it back at me? Alright, fine. Let's all laugh at I know. Just you wait till I get home, because I'm gonna make a game bot that can win 100% of the time. Let's see you laugh when I come back and beat your butts. You'll all Beat have your your heads butts? covered in stickers when I'm through with you. We came to check everything was okay after all that yelling, but, Whatever it is, it sounds like cheating is allowed. Kuhenki concentration. Each player starts with differently colored kuhenki. Each round, they draw one kuhenki from their opponent. When a player has two kuhenki of the same color, they make a pair and can be discarded. Any that can't form a pair must be kept. The round ends when a player can't form any more kuhenki pairs, and that player gets a sticker. ooh, can 4 people play as well? That is fine, so long as the turn order is fixed beforehand. Alrighty then. In that case, the 2 of us will join as one team. Okay, but if you lose, you're both getting stickered. I don't want to hear any excuses. Sure. And if we win? If you win, only one of you gets to sticker someone else. I have taken to calling this. I know logic. Hey, lay off me, alright? Okay, so we're starting the game from scratch again. You which means all my can stickers take so far names. don't Mantis count. Avengers Endgame क्या? Looks like Luanatar is the Kuhenki of honor for this game. Anyway, let's go clockwise, starting from Inefa. What the heck? Nice! That's a pair! Go, go, fly! Go on. I have a pair. Uh-oh! We got a
I win. क्या चल रहा है ये? That was too close. I thought I was gonna lose. Good luck, everyone. We're out. Let me pick a good one. What's it gonna be? You're not looking very pleased with yourself there. What happened to being a huge grumposaurus? I won. Duh. गेम चल रहा? हाँ चल रहा है। जब कुछ बोल रहा है क्या चीज? आवाज बहुत कम है, बहुत कम। मैंने 5 पर कर रखा है आवाज डिस्कॉर्ड का। Don't fidget too much, I know, or the sticker's going to fall off. I don't care. If it falls off, it falls off. हाँ लगातार खेल ही रहा हूँ मैं। अब आई गेस खत्म होने वाला है शायद से। ये लोग बोल रहे हैं आधा घंटा बचा हुआ है। हाँ ठीक है। I've lost. Sticker, sticker, sticker. ये लो इसके मुंह पे स्टिकर। ये लो। You think अच्छी दिख रही है यार स्टिकर के साथ भी। क्यूट दिख रही है। What did Luanatar say? She said it looks so cute that she wants me to lose a few more rounds. Who put these stickers on Paima's eyebrows? Ugh, she can barely see. All right, now, I think we got enough evidence to prove that there's a serious problem here. Yes, I agree as well. The culprit is... Ineffa! Culprit? Quit acting dumb, Ineffa. You're not wriggling your way out of this one. I've been watching you. Not only did you remember whose side Yeah, Luanatar imagine started sticker at, on. but every time someone drew a kuhenki, you were logging it and calculating every last possibility. Which kuhenki pairs were gone, who had what color मैं का गोल गोल घुमाओ लाइक क्या? expressions. You were keeping track मैं of it the WSD entire यूज नहीं time. करता भाई। Exactly. What I know said. Putting aside the fact that running calculations is not against the game rules, do you have any evidence to support your allegations? But that's not against the rules either. So she admits it. She certainly does. All right, everyone grab a sticker. It's time to get Ineffa back. But take that. We thank you for your patience. I guess हो गए सारे। सेंड्रोने कहीं बचा हुआ है क्या लास्ट में अब? तीन बचा हुआ है। 3 बचा हुआ है। Moon Prayer Candy! Beautiful, tasty Moon Prayer Candy! Buy a whole box, share it with your friends and family! Candy? To share? I wonder what flavors everyone would like. Welcome home, Moon Goddess. Fancy a box of Moon Prayer Candy? Sure. I knew you would! Now, what flavor would you like? I'm not sure.
What flavors do you have? Is this for yourself or A gift for my friend. Ah, I see. In that case, I'd recommend... Do you have nocturnal blossom flavor? Huh. I've seen couples give those as gifts before, but I did not know they were edible. No? Okay then. Moonfall silver? You did say this was for friends? Maybe smetana then. Hey, now that's a स्टेजन creative करेगा ना अब idea. I've देखते never हैं tried it before, but if you're happy to wait, I can see about whipping up a batch on the spot. While we're at it, you got any other ideas? करो ना भाई क्या करूं अरे यार ये गोल गोल घुमाने के लिए कह रहा है भाई बड़ा तकलीफ आता है मजा आएगा Here you go. Every flavor you asked for is in there. Thank you. I should be the one thanking you. हेलो प्रखर You brought me मेहता a whole bunch of new business. It's like a genuine blessing from the moon goddess. I hope you and your friends have a lovely night. दो बचे हैं अब What's this? Should I give it a try? स्पिरिट शुगर स्कल्पचर सही है क्या ओह ये वाला बचा हुआ है ब्रो प्लीज लिसन टू मी हाँ बोलो हेलो ऋषु ऋषु तू ही है ना कोई और है Very well. I believe your spirit animal has to be this most adorable chic badger. मैं कोलंबिया का बस्ट एनिमेशन दिखाओ कोलंबिया का बस्ट एनिमेशन तुमने अब तक नहीं देखा Have a very happy festival, moon goddess. अलबेड़ी हो गया था क्या ओ साला लांटेन में बैठा हुआ भाई वो स्टेजन करो हटे बे पहले ये करूं मैं कोलंबिया बस्ट एनिमेशन इज शिट माय गॉड Everyone celebrates. Thank you so much for that valuable information. Spending time around gravestones all year. Appreciated. What better way to relax than to see sunny smiles on the faces of the living? Besides that, I like to think of myself as a fair judge of character. I dare say matching personalities to confection suits me rather well. That's not what Paimon was talking about. Aren't you afraid that your true identity might be exposed? Should I be? There is all manner of magic in the air तो this बैन ने कमन हो रहा नहीं दे सकता thanks to the work of the great mages. I see Miss Columbina is hiding in plain sight. Why should I not do the same? Why miss this rare opportunity to enjoy a special evening in my true form? Fair enough. You got a point there. People who don't know you will probably think you're just a talking lantern. Well, now that we see eye to eye, what brings you here? Not a search for your spirit animal, I presume? Ah, well, actually... Here, see for yourself. Oh, this is... How wonderful. A beautiful idea. Yeah, we just met Bark
at, and he said that having everyone draw their own section was kind of boring. So, he did your bit for you. Ah, Varka. Ever the maverick. I see his artistic skills are truly one I of can a block. करके In काम that खत्म case, करो I shall यार. paint something on Mr. Albedo's behalf in a short while. What? Why not now? Ahem. Welcome home, Moon Goddess. Phew, that was close. Hello, Flins. She recognized you right away! What keen eyes you have, Miss Columbina. Especially considering they are shut. ये साला देखो ये फ्लिंसबर्ग चोरी कर रहा है भाई कोलंबिया से फिर. ये गलत बात है भाई. Fluctuations in Kuvaki all around me. साला रिस्क करने का ट्राई कर रहा है क्या हरामखोर? Might I interest you in some candy? Yes, please. Excellent. I shall make some for you right away. देख रहा है मजाक बनाता भाई कोलंबिया का. Something the matter, Miss Columbina? What about my spirit animal? All the other children carrying sugar sculptures are talking about it. Wait, is she taking the test seriously? Ah, my apologies. How could I neglect that? You are quite right, Miss Columbina. Every one of us has a magical creature living in their heart. Would you permit me to help you find yours? Yes, please. Do you prefer the day or the night? Night. Which of the 4 seasons is your favorite? Winter. अरे वह शॉट मुझे कैसे पता था? Of a perfect day. What is the weather like? Sunny, rainy, or perhaps cloudy? Cloudy. In the morning, sunny at night. What kind of answer is that? Yeah. Rainy in the morning, Forests, sunny at night. lakes, and open seas. Which do you prefer of these? Forest. I like them all. Imagine you all. opened your very own shop. What would you sell there? Moonlight, I think. Moonlight I बेचेगी? would totally shop there. It wouldn't cost anything. You'd just need to visit. Aha! I believe I know what your spirit animal is. Here. Oh, it's a kohenki! Indeed. A free-spirited being with a deep love for all things here in Nodcry. Who selflessly Means lends दिन her को aid बारिश to and as रात many को साफ people as she आसमान. can reach. It is the अच्छा. perfect fit for you. Just need to visit. साले हराम खोर टड़की. हर चीज में उल्टा ही मतलब निकालना होता है कवि ने. It would be my honor. But you shall have to forgive me. We have known each other for quite some time. I doubt there is any answer I could give that would come as a surprise to you. So instead, would you accept this sugar sculpture as a token of our friendship? It's a lantern. Hey, why don't you two go enjoy your candy over there? Paimon wants to try out this spirit animal thing too. Right, Flint's? Come on, play ball. I get this drawing done. But I want to hear Paimon's answers. But it'll probably take ages. Paimon's a complex soul. Simply gentleman Columbina ही अबे हराम खोर. Wait, huh? Oh. Okay then. ऐसे नहीं बोलते भाई. Phew. Nice excuse, Lady Paimon. That was some quick thinking. Yeah, no thanks to you. Although, help next time. It's sweet. Is that Laka berry? I wonder what flavor the traveler got. This way, this way! It's the candy-selling lantern! I'm coming! मैं इधर से जेलस हो जाता भाई. बोल रहा ध्रुव मैं इधर से जेलस हो जाता साला. अरे we can share? Yes. I found out recently that people share their food sometimes, so I'd like to try it. Or is that a no? Thank you. Oh, 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 oh.
ओए ये कैसे गंदी गंदी आवाजें आ रही हैं कोलंबिना? Yours is a little more sour than mine. Here, you try it. Are you sure? Amazing. My sugar sculpture has shrunk, yet my heart is filled with feelings of sweetness. I will remember this feeling. Sure. मैटर हो जाएगा भाई। ये लुमिन कोलंबिना को छेड़ रही है साली सेस्बियन। इतना होता तो फिर भी मान लेता, बट लुमिन नहीं भाई, क्यों मान लेता यार? I heard someone went and disappeared on us the moment we let her out of our sight. They looked all over for you. Frankly, I didn't think you'd be back for Moon Prayer Night. Were you worried about me, Sandrone? You would like that, wouldn't you? Do you even hear what you're saying? It seems to me like you disguised yourself with festive headgear, just so that you could come see me on Moon Prayer Night and make sure I'm okay. इधर तो You didn't even किसकी bring चैट मिस कर दी मैंने? सांजी की। You? I thought you couldn't see. I cannot. सांजी तेरी चैट नहीं आई। But I sense the confusion of those around us rippling through the Kuvaki currents. Based on हराम what I know खोर about मोमो। you, let me guess what you're wearing. Is it cat ears? Let me guess what you are wearing. क्या गंदी गंदी बातें हो रही है भाई? Interest in this territory. Running into you was pure bad luck. Really? ठीक है तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन ये कैसे बातें पूछ रही हो एक दूसरे से? To ठीक? help everyone find my name. अंदर की बातें पूछती है। Just one more word and I'll unscrew your vocal cords. अरे अरे अरे। Columbina hyposelenia now. Tell someone who cares. I've missed you, Sandrone. The whole time I was gone, I was thinking. I hope I get a chance to say some ugly words to you. ugly words to you? Is that supposed to be a joke? Anyway, let's go play that game. What? You frostfin whale? Yes. It's some kind of game where you get bitten if you step on the wrong tooth. भाई कोलंबिना ने और किसी को नहीं छेड़ा अभी तक, लेकिन सैंड्रोने को जरूर छेड़ देगी भाई वो। जानबूझ के चिढ़ाती है भाई। Because you're not a scaredy cat. Fine. You wanna play? Let's play. Don't complain when I kick your sorry butt. Sorry butt. लवली है? बट किक के नाम पे लवली क्यों बोली? Just you watch. I almost forgot. Sandrone? What is it now? You'd better not lose, or I'm going to beat your head in. What? Allow me to demonstrate since I'm feeling so nice. You just step on the teeth, like this. अब मैं उस पर कैसे खड़ा हूँ? Your turn, Sandrone. Don't come crying to me if you get bitten. There are less and less teeth remaining. Huh? What's that noise? I think you might have picked a bad tooth, Sandrone. फंस गई। Shut it! Do you need any help?
It seems like you're stuck. No! It's just a blasted toy! How is its grip Are you stuck, baby girl? strong? Stop laughing! All right. Well, you lost. So just like I promised. I don't know, demon. Hey! What are you doing? Are you seriously? Hiya. Why you? ले भाई टपली मार दी उसको. Just you wait. Rematch. Are you all right, Sandrone? That was quite a strong bite. Are your clockwork parts? All good. Quit That. your fussing. I don't need it. All right. I'll go first this time. I see it now. She can sense which teeth are rigged. So I just need to avoid the same ones that she does. This one. Seems fine. She avoided that one मैं then. लड़के को भी नहीं बख्शता. All right, my turn. वो तुम्हें कोलंबिना के पीओवी से सेंट्रोने को बोल रहा था. What? Looks like you lost again, Sandrone. Wait! There's more than one bad tooth! ये देखो साला हरामखोर पिंड चैट बिगाड़ दिया. भाई कितने बार हारी है कोलंबिना से. फिर गई. What idiot came up with this? Are you all right, Sandrone? You said some nasty things just now. Oh, I'm peachy. Should I let you bonk? ये परसेंटेज इज लाइक चिराग एग्जाम पढ़ो तो भी फेल नहीं पढ़ो तो भी. मैं चीटिंग कर रही हूँ. मशीन को आके यूज करता है. शी कैन सेंस को आके. For losing so badly. I told you, forget it! Gah, you've always been so annoying. Singing right outside my door, inviting yourself to my tea parties, going AWOL. And now you're off to the moon or something. Of all my days with the Fatui, the times I spent with you, Arlecchino, and Rosaline, they were my favorite. I will not forget them. Just as I shall not forget this moment. We'll always be friends, no matter where we are, right? Who would want to be your... I'll miss you, Sandrone. Goodbye, Sandrone. भाई सारे म्यूजिक रुक गए. सब कुछ रुक गया. सेंट्रोने को बुरा लग रहा है भाई. I'll miss you too, Columbina. Sorry, what was that? No need to freak out. What's wrong? We've been looking everywhere for you. What do you want? Oh, nice ears. वो बस दिखाती है. वो टफ पर्सनालिटी है नहीं वो उस टाइप की. What do you want? This. Huh? It's your turn to draw something. हाँ बोलो You're रोंडेड. one of her friends too, बाय द वे aren't you? साले वो ठीक तो भाई लिख तो वो दोबारा से पिन कर. Doesn't know how lucky she नेक्स्ट अनाउंसमेंट कर दी. लॉल मतलब Sorry? Nothing. I'm done. Take it. अच्छा. Oh, that was fast. Oh, and one more thing. ज़्यादा दिन नहीं बचा है. You mentioned you were interested in the Narcissus Kreuz Ordo's research, remember?
bad, so we didn't get the chance to do this. What are you talking about? अबे पिंड चैट कुत्ते, पिंड चैट। भाई हद है भाई। भाई कितना ग्लिच करता है यार ये। टाइमर दिया था क्या? हाँ देखने में पिंजेट हट गया। हटे यार, मैं अब साउंड ही नहीं बढ़ा पाऊंगा डिस्कॉर्ड का। ग्लिच कर गया साला विंडोज। मैंने विंडोज की सेटिंग में जाकर डिस्कॉर्ड का साउंड कम कर दिया था एंड अब विंडोज की सेटिंग ही ग्लिच कर गई। वो सेटिंग ओपन ही नहीं, मैं उस पर क्लिक करा वो ओपन ही नहीं हो रही है। होप सो। नहीं आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है मेरे को, पूरा ध्यान लगाकर सुनना पड़ रहा है सुनने के लिए अभी। This is... Oh. Alain, Renee, and Marianne. Huh. The Holy Blade. A savior's plaything. It's not about whether I approve or not. These people, they would sacrifice themselves for the sake of the world. Especially Alain Guillotin and Renee. That is something I would never choose to do. Still, I didn't know they had any pictures left from that time. If I'd have thought to bring a camera, I'd have... What? Yeah, of you being bitten by the frostfin whale and Columbina bonking you on the head. Tear it up! Now! ओए लास्ट वाले के तो 20 प्रीमो तो मिले ही नहीं मेरे को। Traveler. Oh. Hey there, Columbina. Are you done checking out the festive amusements already? Are you sure you don't want to look around some more? You might not get another Okay. Right now, what I'd like to do is... Thank you. But I think I've had enough fun for one night. I've made plenty of precious memories. Really? You sure you don't want to have a little more fun out there? Final answer? Yes, I am sure. भाई क्या तो डेकोरेशंस है यार। बहुत प्यारा लग रहा है भाई। Welcome home, and there were friends at every turn. I only wish it could last longer than one night. अब जा रही है ये। Yes, you're right. The moon prayer blossoms. Ooh, look! Look! Moon prayer night has come.
The moon. It's so beautiful. Happy Moon Prayer Night, dear. Happy Moon Prayer Night. Happy Moon Prayer Night. Aww. Huh. Time flies when you're having fun. Oh. Looks like the time has come. Columbina. You're heading off then? Yes, to the ruins you mentioned. And from there, back home to the moon. Wait! I know? At least... Take one of our craft shop's crumb cookies up to the moon with you. You know, for a snack. Sure. Why not? The Curatorium of Secrets believes in proper farewells. No story should be left without a satisfactory endnote. Never. Farewells are an important affair for the Ratniki, too. We never know when we might meet again. Haha! And here I thought grand farewells wouldn't suit tonight's mood. But I suppose friendly passion is not to be stopped, eh? We made a little something for you, Columbina. Ta-da! What is it? A Moon Prayer Night greeting card with drawings by all of your friends. You did mention that you'd like a portrait done, so I took the liberty of creating one for you. I, meanwhile, did the portrait of Mr. Albedo. And Mr. Varka did the same for me. I mean, I think my work was pretty true to life, don't you think? The picture of Ashru was my doing. The two of you वाका seem की to ड्राइंग get देखो along फ्लिंट्स rather की well. Oh wait, was I the only one who did a full क्या तो body बनाया है picture? भाई. That's so embarrassing. I did pictures of me and Anefa. I did my own portrait and one for Hat Guy. Plus, there's the two mages, Arlecchino and Sandrone. So, if you ever miss us, just flip the card open and we'll all be right there with you. I don't know what to say. Thank you so much, everyone. This whole moon prayer night was more than I could have ever asked for. It is the greatest gift I have ever received. Lama, I figured it out. Figured what out? Remember how the Frost Moon Scions used to use milk as invisible ink to write hidden messages? That was a very long time ago. Yes. When I miss you all, I shall use moonlight in the same way, to write words that only you can see upon the moon itself. Wow, that sounds lovely. Quite. But how will we see them? Simply open your windows on nights when the moon shines bright, and the moonlight will naturally flow towards the words I have written. That sounds most fitting indeed. Very true to form. I'll try to write them in places that won't disturb your sleep. I, for one, would sleep all the better for having read one of your messages before settling down for the night. Exactly. So don't worry about disturbing anyone's sleep. Just promise you'll write to let us know you're okay. All right. In that case, Columbina. I'm ready. Very well. What? In just a few moments, I will
will be gone. I still don't know what to expect on the moon. Will I really be able to send messages to my friends? The kuhenki, the animals of Not Cry. I'll never get to see them again. I wonder where I'll be. This is where the people of Hyperborea used to communicate with the moons. Eternal moon, frost moon, iridescent moon. When the power of all three converge, the gate to the moons shall open. Moon marrow preparations are complete. Only the final step remains. और चिराग कुछ एग्जाम गुजर गया तुम मैं तो बच ही गया एग्जाम ही गुजर गया क्या मतलब मुझे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं मिलेंगे तो एंड ही चल रहा है बट अब तो बाय द वे वेलकम टू द स्ट्रीम सिद्धि It's fine. I'm more than happy with this. भाई ये खत्म होने दो उसके बाद सबके चैट पढ़ता हूँ My only piece of luggage. I can already feel the moon calling to me. Your home lies on the far side of this light, Columbina. From now on, we will at last have a reason to pray to the true moon. Columbina. Yes? I'm listening. Be sure to come back and see us when you get the chance. Of course. But if that chance doesn't come, then remember that you have friends on this planet. People who will miss Columbina. Yes, I will. Thank you for everything you've done for me. And remember, come night or day, the moonlight shall always connect us. Well then, farewell, my friends. This was my happiest night in Teyvat. Farewell, Columbina. The moon really is closer than ever tonight. Columbina. All three moons in one place. Time for one final experiment. Reason, life, death, Mother. time and space. They all believed I would fail. बहन का लौड़ा But Teyvat's primordial power never did belong to साला the throne of कुत्ता का heaven. बच्चा And now,
तीनों 2 मून मैरो उसके पास है और कोलम्बिना भी उसी के पास है। सबको डैमेज लो कर। डॉक्टर को तीनों मून का पावर चाहिए। I guess I won't be going home today. यार उसको घर भी नहीं जाने दिया यार। Stubborn world, do not try to control me. Mina. Are you all right? Do your wounds still hurt?
I had someone prepare a little medicine that could prove effective. Take it if you need to. अबे यार ये साउंड सेटिंग्स काम नहीं कर रहा। नहीं हो क्या? टॉक व्हाट टॉक? -50 चिराग ब्रो व्हाट द हेक? अबे यार ये साला हट बे। सेकंड ऑप्शन रुक जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अबे यार माँ की आँख हट बे। अबे यार सारा लैपटॉप रीसेट करना पड़ेगा मेरे को। हेलो हेदर, कैसा लगा एंडिंग? भाई बड़ा बेकार था एंडिंग। In माँ that की case, आँख let डटोरे me की relate the बहन का contents घोड़ा। of the call we made to Alice after the भाई incident occurred. कितना कितना बिल्डअप किया गया, अब वो जा रही है भाई, इतना अच्छा फेयरवेल, फिर लास्ट में हरामखोर ने पूरा खराब कर दिया भाई, पूरा खराब कर दिया कमीना साला। That Dottore is a crafty one. He हद distracted है the भाई। Hexen Circle by creating a huge fuss at Tevat's borders. एग्जाम्स भी ठीक ठाक ही चले गए यार मेरे, देख कर तो यही लगता है। Assumed that the cause was an abyssal intrusion from the outside world. 6.3 में बिगली बॉस बनाया उसको। साला कोलंबिना की टीम पुल करके कोलंबिना से मारूंगा आराम के पिल्ले को। Influenced the phantoms in Nordcry. Should I give a little information But about perhaps what? this interference could have come from within Tevat instead. But we weren't able to change their fates. True, you couldn't change how their stories ended, but you did build some variables around yourself. Variables? Yes, things you heard that you could not otherwise have learned, ideas that would otherwise have never crossed your mind. All these things are variables. Of course, most variables Mods be ready. usually The pale heck into will mods be ready. insignificance with the myriad of पहले बता दो किस बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद देना भाई। एंड अगर कोई आर्कन क्वेस्ट का लीक्स वगैरह है तुम्हारे पास तो प्लीज मत ही देना, रहन दो। मैं वेट कर लूंगा 40 दिन के लिए, बट मैं खुद से करके एक्सपीरियंस करना उसको ज्यादा अच्छा मेरे लिए है भाई। However, मैं वो ज्यादा we पसंद have करूंगा। no way of knowing exactly what he did. Yeah, we also need to ascertain Columbina's status. And that about sums it up. As I suspected, Dottore has disappeared completely. If it's any consolation, he wasn't able to control Columbina as he might have wished to. चले, अरे हाँ मतलब वही भाई, बड़ा बहुत बेकार था भाई, हराम खोर। गुस्सा आ रहा माँ क्या कि उसके ऊपर मेरे को। Ban Sane for 40 days. What? She did what? All we saw was Dottore appeared and used some kind of power. The next thing we knew, he and Columbina were gone and you were falling into the sea. क्या हो गया लूफी?
सुनो लेकिन नया विषय तेरे वेलकिन अटका हुआ है। सुन तो तू एक काम कर, जो परचेज का तेरा स्क्रीनशॉट है ना वो मेरे को भेज दो। ड्राइवर सबको टाइम आउट मार दिया। अबे साले स्क्रीनशॉट भेजो, मैं करता बात उनसे। So, Columbina intentionally opened the moon gate and escaped into the same mysterious world as Rerir and Thalindis. Sounds like bad news. Sounds like bad news. भाई आर्ले के चेहरे पर वो तुमको दिख रहा है, वो घबराहट सी। जो आर्ले को नहीं दिखा भाई घबराते हुए कभी। Seen in that way, the trilunar भाई आर्ले उदास लग रही है भाई पहली बार। नहीं तो उसका मतलब कैसे बता, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता रहा जल्दी। He is attempting to transcend his destiny and finish an experiment. गुस्सा नहीं, उदास ज्यादा लग रही है भाई वो। An utter lunatic. गुस्सा तो उसका नॉर्मल एक्सप्रेशन है उसके चेहरे का। तीन परचेज किए हैं तूने कि दो ही किए हैं? कोई एक फोटो तो दो बार भेज के रखा है क्या? क्योंकि यहाँ पे मेरे को तीन परचेजेस दिख रहे हैं, मतलब जो तू फोटो भेजा है। नहीं भाई, एक सेकंड में मैं उनको भेज रहा, डोंट वरी। मैंने उनको भेज दिया है, देखता हूँ कितने जल्दी रिप्लाई करते हैं। Where's that guy? Seems like he'd want to be here for this. He took off with the Dodo communication device after we spoke to Alice. He said he had a hunch that he wanted to investigate by himself. The look on his face was terrifying. I've never seen him like that before. कब लिया है तू? I'm back. That guy! I went to look for the Hyperborean phantoms हाँ again. ठीक है। I think I've gotten to the bottom of it. I got them to talk to Nicole on the other end of the communications line. Turns out, the history they describe is different from how Nicole remembers it. Really? But how?
I'm dying. काहे मर रहे हो? Because the phantoms are the ones who are deceived. They speak of a savior who appeared in their history. One who never should have existed. This savior promised to create a new moon within the false sky, and even bring back their moon goddesses. Foolishly, they believed in him, and told him everything he wanted to know about the moons. It's obvious that this was Dottoro's doing. Now you mention it, the first time we entered the Hyperborean ruins, we heard the phantoms discussing their history, and I remember Nicole commenting that something sounded a little strange. By the way, welcome to the stream, Aman. But Dottore shouldn't have been able to get in there in the first place. He didn't. Nicole said that this was an anomalous state triggered by disruptions in the causal connections between phantoms from the same era. The variables that Dottore put in place were substantial enough that they even affected phantoms that he never met. So it's not that their memories were unclear. They'd been tampered with. That's exactly the possibility Dottore was trying to manufacture. He turned these variables into knowledge and engineered the situation so all that knowledge would fall into his hands. Then, he harnessed that knowledge on Moon Prayer Night to truly create a false moon. I think disturbing at a very To be precise, charming he school. exploited a What the weakness in heck? the way the spell works. कहना क्या चाहते हो? The spell senses Kuvaki to detect the moon's location. So, as long as the false moon more strongly resembled the moon than the frost moon beyond the skies, the gate would teleport Columbina to the false moon's location. In other words, to Dottore's side. Once he had her under control, the teleportation spell remained active, and he manipulated her power to seize both moon marrows. At that moment, the moon marrows disappeared right before our eyes. It was already too late, even as we were leaving the ruins. By then, Dottore had already amassed the power of all three moons. So, where does that leave us? What do we do now? I'd certainly like to know what Her Majesty thinks, now that the concerns I expressed to her have come to pass. But we cannot simply sit and wait for her to decide Just the matter. sad बाद में आता हूँ. And in any case, it is not Okay, the take Fatui rest. Harbinger Damselette who sees us as her friends, but rather Columbina Hyposelenia. If, even in such extreme circumstances, Her Majesty will not lift the prohibition on Harbingers drawing steel against one another, then I will do as my heart demands. I will fight as Peruware instead. Arlecchino! Time is short, so I'll make the first move. भाई आर्चिनो एक्शन में आ गई भाई. अब ना छोड़ेंगे. Even Arlecchino seems to be losing her cool now. All right. Lose those dejected looks for a moment and let me get a word in. It looks bad, I won't lie. Very bad, in fact. So Dottore's pulled भाई मेरे लैपटॉप में नहीं चला. the upper hand. For now. मेरे लैपटॉप में नहीं चला भाई वेरिएंट्स मीट भाई. लैग हो रहा है बहुत भयंकर. एंड चल भी रहा है तो मतलब 35-40 FPS. उस पे कोई मतलब ही नहीं है भाई उसको खेलने का. Many have told me that Tevat's destiny is fixed, and that does appear to be the case. Well, what makes Dottore so sure he'll be the exception? And since he was able to stack these variables up, who's to say we can't do the same? You of all people should not be discouraged, traveler from afar. This isn't over yet. And you're not alone in that. Everyone here does, whether they've spoken thus far or not. But none of us are the type to sit back and wait for the sun to shine again. That's exactly how a knight should roll. If they knock you down, you get back up and get back in it. Don't forget, honorary knight, you're a legitimate member of Mondstadt too. Fark is right. This is far from over. Dottore's already way overdue a butt-kicking given his past shenanigans. And after this, he's earned himself a double dose. That's what I'm talking about. How's everyone else feeling? I'll use Kuvaki to investigate Columbina's whereabouts. I am not ready to give up either. Leave the intel gathering to me. Whatever happens within Nodcry's borders,
When the Curatorium of Secrets wants to be in the know, we सब भाई always सब find a मिल way. के आप मावेन करेंगे भाई Arno and I will do टटोरे all we की can to support you. We will attempt to reverse engineer Dotori's actions and seek a breakthrough that way. Alice and Nicole are busy dealing with an emergency at Tevat's borders, so they can't return just yet. But they're both very angry about this. They've asked Albedo and me to act on the Hex and Zircle's behalf and do everything in our power to fight back against Dotori. Are you ready then? We're going to have to conduct a lot of research, even in the early stages. I'll do my best. As for me, I'm pretty familiar with Dotori's way of doing things, so I can try to predict his next move. I'll help with your investigation. Nice! Looks like we have our basic division of labor. I'll get in touch with Flints and Eatlua, get them to have a chat with their Starshiner. It couldn't hurt to bring the Lightkeepers on board as well. At the same time, I'll pass on instructions to the knights present in Nodcry to assist the Lightkeepers and other organizations in ensuring the safety of those living here. Yeah, we'll show it. भाई बड़ा सैड एंडिंग दे दिया यार साला इस बार का आर्कन कोस्ट में I never thought that Columbina would हाँ become हाँ my real name. देखता मैं उधर जाके चेक करता It went from being a Fatui code name to something my friends call me. And remember, come night or day, the moonlight shall always connect us. अबे एंडिंग मतलब एंडिंग ये 6.2 के आर्कन क्वेस्ट का एंडिंग बहुत सैड एंडिंग दे दिया भाई ऐसा कह रहा मैं The fuck? The fuck? Thanks! Other free membership got to its end. Love you! Free membership? Free membership तेरे को कैसे मिली थी भाई? Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you like what you see. किसी देव मानुष ने दी होगी. Stygian time. देखो सो नाउ इट्स टाइम कि मुझे अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हो चुका है ग्लिच. आर्कन क्वेस्ट भी खत्म हो चुका है
ठीक है, पुल कर दो ड्यूरिन पे। नहीं भाई, कोलंबिना के लिए सेव हो रहा है ये। वो तो आर्ले आ गई थी जो आर्ले पे पुल कर दिया भाई मैंने, नहीं तो भाई एक भी पुल नहीं खर्च होने वाला था। आर्ले मुझे स्टार्टिंग से, जैसे ही आर्ले, पता है जब आर्ले का बैनर पहली बार आया था एंड जैसे ही बैनर गया तब से ही मुझे आर्ले चाहिए थी, जाते के साथ मुझे आर्ले चाहिए थी। जब तक थी तब तक पता नहीं मुझे आर्ले का कुछ सीन ही समझ नहीं आया था, जैसे ही तभी से मेरे को आर्ले चाहिए थी। फाइनली गॉट हर C1 R1। ओके, सो मैं आता हूँ अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करके। ओके okay guys, I'm back. हो गया आ गया। हाँ जी, ओके ना, ओके स्टाइजन टाइम। भाई तू स्टाइजन के पीछे क्यों पड़ा? तो मेरे को ये बता, मेरा स्टाइजन होते देख तुझे ऐसा कौन सा ऑर्गेज़म आ जाएगा? मैं मैनेजिंग करके खुश हो जाता हूँ। ओ, फिर से बंडा मारा लो। भाई इतना खराब कंपैरिजन मत कर भाई। साला अब इसका माइक चला गया। चरम सुख आ गया सांजी को, पता। अजी भाई स्टाइजन के पीछे पड़ा हुआ है वो। मैंने तुझे गाली दे दी स्ट्रीम लैब ने। देखते हैं, अभी स्टाइजन होगा तो होगा, नहीं तो फिर अब लूना बैठ के मेरे अकाउंट में वो करेगा, थिएटर करेगा तुम बैठ के मेरे अकाउंट में।
आर्ले बेनेट। ओए ये क्या था? जीन से हो जा रहा है क्या? सीन है इसका जीन से करने का? What the heck? वो क्या? एकदम वो नहीं है भोसड़ी के वो नहीं है नायक की मैंने वो नहीं है चिरागुरु कैसे हो? बारबरा बारबरा लाऊं? ना रहन दो, तुम रहन दो, नहीं चाहिए तुम्हारी बारबरा। आप अपनी बारबरा को अपने पास रखिए। देखो भाई बात यूं है कि मेरी वैसा है चूतिया टाइप बिल्ड। शिन्यून बेटर है क्या शिलोनन? क्या बोल दो जल्दी बताओ। बैकग्राउंड म्यूजिक कम कर लो, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज है क्या? ओ हाँ भाई सही में बहुत तेज था। अभी ठीक है क्या? आई गेस इतना ठीक है। आज 11 PM को डीसी के ऊपर मस्त मजा आया। 11 PM को लेट्स सी। मावी का शेवी ले ले, रुक जा, ट्राई कर दे ये वाली टीम को, अगर ना हो है तो फिर मावी का शेवी ले लेता हूँ। मैनेसिंग ही करना है भाई, मैनेसिंग में इतना दिमाग कौन लगाता है? हट यार, बीवी तो फीना खा जाएगी, मेरा सैल कुछ ना कर रही। हट बे।
ये टीम कमजोर है, मेरे पे यानसन के कॉन्स जरा भी नहीं है। ओके एंड शेवी का बिल्डिंग वन चेक कर लो। वाह, ये पहले सिंडर सिटी पे लग रखी है, लेकिन दो सिंडर सिटी डाल के मैं क्या कर लूंगा टीम में। कोडेक्स पे डाल देता हूँ इसको। भाई अभी भी काफी ज्यादा है, सीआर काफी है। ओके अब तो इससे हो जाए। That's more like it. Start the clock! Try and stop me! Wrath from the sky! Drop your weapons! Yeah! Headbutt! Hero incoming! Yeah! एक मिनट, यानसन को नोबलेस डैमेज कम क्यों है? क्योंकि बिल्ड अच्छा नहीं है और क्या? Stop right there! Light it up! Yeah! Charge! Yeah! Stand down! Step aside! On my mark! Final warning! Rev the engines! Pyroclastic surge! Hero incoming! Yeah! Volcano kablam! Quick as a flash! Start the clock! Hands where I can see them! Drop your weapon! Wrath from the sky! Try and stop me! Headbutt! It's justice o'clock! Control breathing. On my mark. Pyroclastic surge. Rev the. Look out below. Hi. Yeah. Volcano kablam. Yeah. That was a cheap shot. Quick as a flash. Let's move. You asked for it. Stop right there. Wrath from the sky. Headbutt. ओके ही
ज़्यादा मारती है ये, ध्यान से देखो, सपोर्ट तो नहीं खो दिया कोई नहीं तो। Get to work. Going in. Wind strike. Suffer the wrath of Eatfly. Laid bare. Everybody stand back. Transfixed. Adventure time. Going in. Fulfill our pact. You two. Time to end them. चलो झूठ बोल रहे हैं, NVFCR है इसका विदाउट 20+ CD है। A bitter pill to swallow. Busted. Illusion shattered. I need redemption. Fight your salvation. Quietly now. Burn this barren wasteland. For the everlasting forest. Mind the side effects. There is no escape. Here comes the catch. Gotcha. One more sin upon your soul. Receive my blessing. Be washed away. By the frost moon of all. Remember, health comes first. A bitter pill to swallow. Quietly now. Things are about to get dicey. Shine down, torn to oblivion. Right. Retribution. With one heart, we pray. The road to Busted. Seems like an emergency. Illusion shattered. Quietly now. Game's up. Lush as the moon. By the frost moon of all. Mind the side effects. Shine down. Receive my blessing. Things are about to get dicey. Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. Illusion shattered. Busted. the light. Lush as the moon. One more sin. Quietly now. Game's up. Time's over. A bitter pill to swallow. With one heart, we pray. Gotcha. Mind the side effects.
Seems like an emergency. Busted. Things are about to get dicey. For the everlasting forest. Right! Retribute one more sin on your soul. There is no escape. Receive my blessing. Now you shall perish. Your salvation. Quietly now. Here comes the cash. Remember, help comes first. By the frostman of old. Branches of dawn. With one heart, we pray. Mind the side effects. The light! Receive my blessing. हाँ स्कर कर देगी इसको एक और क्या डाल सकते हैं इसमें शार्लेट है ना मेरे पे क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा अरे यार अभी एक्टिवेट रुक जा एक बार मुझे खेल लेने दे एक बार चेक कर लेता हूँ खेल कर तुम बुरा कैलकुलेटर बनोगे तुम जा सके चौदह सारा एक आर्टिफैक्ट मैंने छेड़ा उसका चलो कोई ना देखते हैं Gotcha. Hold that pose. Right! Let one more sin upon your soul. The unholy dross. Quietly now. Things are about to get dicey. Let the world collide! Say cheese! Here comes the cash. Time to shine! Truth bomb! Smile! Power. One more sin upon your soul. Burn this barren wasteland. Gotcha. Take it easy. Your salvation. Game's up. Fun's over. Let the world collide! Say cheese! Mine to wield. Am I still शार्लेट पे ईआर की कमी है weak? क्यों तो फिर क्या सितलाले डाल दूं उसमें सितलाले डाल दूं अबे तो वहां पे सितलाली आर्ले के साथ यूज कर रहे हैं आर्ले सेकंड वाले में हाँ हाँ निकाल दी हाँ तो भाई आप ही कुत्ते की तरह कान लटके आ गए थे बात करने के लिए हम कहाँ से बोल भी नहीं रहे कुछ
क्या करे सर, आप लोग प्रो हो भाई, आप लोग इतना अच्छा अकाउंट नहीं है मेरा। वाओ $185 यार। होप हो जाए। टैड एज अल्फीना पे फेवोनियस है ना? नहीं, रुक तो जा। अब इसमें भी देख, अगर एआर रिक्वायरमेंट अभी भी पूरा नहीं होता तो फरीना भी फेवोनियस डाल देंगे। चलो इस बार हो जाएगा। चलो हो गया, बस थोड़ा सा ईआर की कमी थी। ओके, फील्ड जनरेटर में एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा क्या करा जाए। Controlled breathing. Final warning. Burn it down. On my mark. Faster, stronger. Keep. Stop right there. Pyroclastic surge. Kapow! Hero incoming! Charge! Start the... Quick as a flash! Drop your weapons! Hands where I can see them! Wrath from the sky! Full throttle! Headbutt! Charge! Hero incoming! On my mark! Controlled breathing! Stop right there! Pyroclastic surge! Ready? Yeah! Heads up! Hero incoming! Headbutt! अबे यार, माँ की यहाँ की ये मशीन पर क्यों चढ़ गई बेवकूफ औरत? Justice will prevail! Light of the blazing sun! Full throttle!
हो गया, मैनेसिंग हो गया, मैं खुश हो गया मेरा काम। वो पूरे मशीन के ऊपर चढ़ गए ज्यादा ही ऊंचा प्लंज कर गए। अरे यार टाइपिंग करा दो इससे। रीशेप बैठो, अभी रीशेप वगैरह नहीं कर रहा। बहन What the heck भाई। $79 $185 ये वाला रेशो है बेटर है। बिल्ड कमजोर तो है भाई मेरा अभी। ओए मेरा अब स्टैजन टाइम देख ना देख रहा मैं। नेट इशू कवरेज एरिया में आने के बाद आता हूँ। अच्छा ये हो गया भाई। मेरा 77 और 22 अटैक 1700 हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। ए लूना थिएटर करना मेरा। हाँ ठीक है तेरा काम रिलीज कर रहा है। अच्छा तो डेलीज किया था इसका। क्या चीज कर रहा है? कैरेक्टर अपग्रेड कर रहा था ना अभी तो। देखूं
क्या बोल रहे चिराग? 95 to 40 किया जाए स्कर्क का बिल्ड, क्या किया जाए या स्कर्क की बिल्ड करो? अबे स्कर्क की बिल्ड कर ले जरा, भी जितना बिल्ड है काफी है वो। ऐसी कौन सी बैडी आ गई भाई? भाई यहाँ मैसेज लॉग में भी He नहीं who है। wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. तक 29 to 40 है। ये अत्याचार करके साथ क्यों कर रहा है तू? दो 450 से भी निकाल ले, 75 to 50 करने हैं। ओए 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 कोपेलिया पे नहीं करना था, कोपेलियस करना था मेरे को। हट बे तेरी तो। नहीं क्लेम नहीं किया था बट स्टार्ट गलत कर दिया। टेलीपोर्ट से बेटर है कि मैं इसी को मार के दोबारा से स्टार्ट कर लूं। अरे हट साला। जब तक स्कर का वेपन या इसको नहीं मिलती बिल्ड होना इम्पॉसिबल लग रहा है भाई। नाइस। मैं बोल रहा उस सेन की आरले से, ठीक है, सेन की आरले से मैं खेल रहा था फुल EMVM पूरा का EM क्या कहते हैं सुक्रोज वगैरह जुगाड़ लगा के तब सितलाई लेकर गया। तो वो जो माउंटेन किंग रहता है ना, जब वो अपने डाउन फेज में रहता है तब जाकर 5 लाख मारी थी वो भी एबिस में, एंडूस एबिस में क्या कहते हैं अटैक का बफ था। नहीं इस बार नहीं, इसके पहले वाला 1-2 एबिस पहले वाला, उसमें 40% अटैक लिए थे हम तब जाकर यार। साला स्ट्रीम पे कोई नहीं है, सब चले गए। वो सुन ना, तू जब भी गेम खेलने बैठता है भाई थोड़ा मटेरियल वगैरह घूमते फिरते जमा कर दे, अगर तू बकचोदी करने बैठा है बीसी में तो। हाँ तू अबे सुबह में खेलता है, बोलेगा क्या? कल पहुंच जाऊंगा अपना बस्ता उठाकर। नहीं पहले तो हम 10 का ही बोले थे, लेकिन फिर मैसेज कर दिया कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से 11 से आना था। काहे कुत्ता भौंक रहा है? खुला का है, छोड़ बांध के रखो ना।
इसको बिल्ड करने वाला है। अबे इस कैरेक्टर से अपग्रेड करा भाई 70 के लिए, मतलब लेवल 70 करूंगा जस्ट। वैसे ये फिशल को 80 असेंड किसने किया है? Created another universe and founded paradise. अरे For भाई सभी I, खत्म हो जाएगा Fischl, इसमें। बुक से फार्म कर लेते इससे बेटर 20 रेजिन का। ओके पीस ऑफ डर्ट। चैट मिस मैं फ्लिंस एंड नेफर टीम में नेफा एंड लोमा यूज करूँ तो जितना डैमेज देता है उतना डैमेज देगा कोलम्बिना यूज करूँ तो ना। मतलब मेरे को स्कर का लेना है बट अभी क्या अब मैं शिलोनेन बेनेट लामा के बॉस में मैं मार सकता हूँ बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू डिफीट फ्लिंस टैलेंट बॉस। उसको मारने के लिए तुम्हारे पास क्रायो डीपीएस चाहिए। क्रायो क्रायो समझ रहा है? क्रायो वो नहीं है तो रहने दो फिर। अरे यार मैं साला कॉम्बैट में हूँ अब तक लाइव में। यस हेलो रोहन। रोहन द शिलोनेन सिम्प। वाई शिलोनेन सिम्प क्यों बने भाई? इतनी भी क्या बुरी मुसीबत आ पड़ी थी तुम पे? 8 घंटे की स्ट्रीम तो हो गई होगी ना? हाँ आई गेस हाँ 12-1 बजे स्टार्ट किया था मैंने। क्या फायदा इतनी मजदूरी करने का? 50-60 रुपए बने होंगे, वो भी 3 मेंबरशिप बाय हुई है तब। If you ever 11 महीने हो गए। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। तुम पुलिस बीसी में लव यू। हो गया इसका अकाउंट का काम। भाई YouTube मेरे साथ ऐसे ही करता रहता है, पता नहीं क्या ही तकलीफ है YouTube को। एक महीने अच्छी रीच देगा, एक महीने रीच गिरा देगा, पता नहीं क्या है साला। Did you got Durin? I never pulled for him. चाहिए नहीं मेरे को ड्यूरिन भाई, क्या करूँगा ड्यूरिन लेकर? एक तो पता नहीं मुझे ड्यूरिन, एल्विडो और वेंटी ऐसे पता नहीं ये तीनों एक साथ कभी खड़े होते मुझे क्यों लगता है एक दूसरे में लग जाएंगे अब ये तीनों। पेगॉन बन जाएगा। क्या चीज वैसे हाँ 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 देखे आगे बता। कंटिन्यू द जोक, कंटिन्यू द जोक। फिनियस एंड फर्ब देखा? भाई यार ये सारे मटेरियल्स मेरे से अकेले जमा करवाओगे क्या यार? नहीं भाई मेरा अकाउंट तो नहीं है, धीरज का अकाउंट है।
नक्कल डक्कल मार लेते हैं। क्या है अभी मेरे पास 39 प्लस पर 14 प्लस इन फॉर्म ऑफ प्रीमोस है। वाह ठीक ठाक चल रहा है। चैट देख ले दोनों। जिबाई में जितवा दियो चिका मम्मी है पूरी जिबाई निकाल रहा है तुम। देखते हैं क्या होता है भाई। वैसे ये बताओ नेक्स्ट बैनर शिलोनियन एंड वेरेसा कोई पुल वगैरह करा रहा क्या? कब तक स्ट्रीम करोगे यार? देखो भाई 11 बजे तक। केवल करने को स्कर बिल्ड करने को बोल रहा। Laid bare. Let's light it up. Going in. Absorption test. Keep lolly. Keep papa. Get him. Everlasting as the मर दियो moon. भाई तू। जब कल मैं भाई दोनों पुल करूंगा। पुल से हैं तेरे पे इतने? पुल से भी तो होना चाहिए ना भाई। मैं इसे करना में वेरेसा पुल कर दियो। कितना टाइम ओए कितना दिन बचा है बैनर खत्म होने में? 12 दिन बचा है। रुक जब 3-4 दिन बचेगा ना तब मैं उधर डालूंगा अनाउंसमेंट। उस पर डाल दियो भाई बस अपना नाम लिख के एटलीस्ट डाल दियो उधर। नहीं तेरे को नहीं बोल रहा। लास्ट दिन चैट देख लियो। सॉरी भाई मैं चैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बेसी ये अब न्यू इशू एक विल्किन आया एक विल्किन नहीं जबकि दोनों पे सक्सेसफुल का सिंबल आ गया। दूसरा वाला व्हाट द हेक एक ही आया है दोनों नहीं आया। एक बार दोबारा चेक कर ले फिर मैं मैसेज कर देता हूँ उनको। दोबारा चेक करके बता फिर मैं मैसेज करता। Teamwork is drill with animal Get to work. You two. Time to end it. Transfix. Everybody stand back. Stand clear. अरे अकाउंट बैन भी सी क्या? गेम ओपन ही है। अच्छा गेम ओपन ही है तेरा तो नहीं आया। मेरा चैट देख ले भाई। ओ एक सेकंड देख रहा। चिराग भाई मैं रेजिडेंशियल स्ट्रेटजी में नेफर के आर्टिफैक्ट्स फार्म करता हूं। ठीक है कोलंबिना कंफर्म है पीटी 47 की एंड वेपन बैनर में 51 की पीटी है। ओके देखते क्या होता है। प्रीमो मैं सोच रहा पुल्स बचा लेता हूँ। शिलोने आ रही है शिलोने निकलते इस अकाउंट में ज़्यादा बेटर होगा। पच्चीस 27 की पिटी एंड 2 पुल्स हैं। Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. तो 50-50 विन करना पड़ेगा भाई। गुड नाइट चिराग। गुड नाइट सांजी। चल देखते क्या होता है। भाई हो गया। किसका कर रहा है तू इतनी देर से बैठ कर? भाई सुन ना थिएटर हो जाएगा ना एक बार में। उसके लिए तुम लगल रहेगा और हमसे मेरा थिएटर कसम से नहीं खिलाया था। तुम मेरे नो बोलो जो बोलो भाई
मेरा 12। मेरे को मन नहीं, मेरे को गुस्सा आ जाता है थिएटर खेलने में, गुस्सा आ जाता है खेलने में भाई। मुझे मुझे अगर कुछ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है ना यार। क्यों? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि थिएटर ना खेलने से स्ट्रीम ना कर सकते हैं? नहीं करना है, मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो, सीधा बात मेरा आंसर। क्या किसी के डीएम पे क्लिक कर रहा है तो वाह, लॉन्चर में ओपन हो रहा है। ओपन डिस्कॉर्ड कर, यहाँ से ओपन ऐप कर, ओपन ऐप कर डिस्कॉर्ड ऐप। अब डिस्कॉर्ड पे जा, आ गया ले भाई। सेकंड अकाउंट में 60 पीटी वेरेसा गारंटीड है। 60 पीटी वेरेसा गारंटीड है मतलब 20 ही पुल करना है, मतलब हद तो हद, यानी एकदम बुरा से बुरा गया तो 30 पुल करना है। नॉट दैट बैड यार, ठीक है। चिराग भाई चैट कहाँ है तेरी चैट? लास्ट कितने 50-50 लॉस हुआ था? लास्ट 50-50 यार तो आर्ले पे जीत गया था। तो अगर कैप्चरिंग रेडियंस जो भी होगा वो रीसेट हो चुका होगा मेरा अब। गारंटेड थी ना C2 याद भाई, मेरे को भी ढंग से याद नहीं यार, प्रॉपर मेरे को भी याद नहीं, काफी टाइम हो गया एंड ध्यान से उतर गया मेरे को गेम में क्या सीन था नहीं था, मेरे को देखना पड़ेगा दोबारा से। वो लैपटॉप रीस्टार्ट करने गया। पता नहीं स्क्रीन शेयर ऑन कर, तेरा स्क्रीन लगा के जाऊंगा मैं। गारंटेड थी, मुझे याद नहीं। फाइनल C1 पे 50-50 हारा था एंड 40 पीटी रीच किया था, ये भी ठीक है। ओए एक मिनट, अभी स्टाइजन चल रहा है ना, स्टाइजन का थंबनेल लगाना पड़ेगा साला। स्टाइजन का थंबनेल तो था मेरे पास, बनवाने की जरूरत नहीं है। बिसी धरो मॉडलों का, हाँ बस थंबनेल बनवाना है, मॉडलों को पिंग मारो भाई। वो जो वो बंदा वेलकिन जीता था उसका भी पैसा है तो उसको नहीं डाला मैं साला। नहीं दे देंगे, देर सवेर लेकिन दे ही देंगे। हो जाता है, दिमाग हिल जाता है भाई। इंटरेस्टिंग। चलो आया मैं खाना लेकर भाई। बाय ब्रो। क्लाउड एज ऑलवेज माते चो। ये तो गया। हाँ फिर खाने जा रहा हूँ ऑब्वियसली, फिर खाने जा रहा हूँ ऑब्वियसली। मस्जिद के चौधरी अभी तक 340 से दिए ना हो पहले वो छी भाई।
अब करेगा लूना मजदूर। हाँ नहीं तो साला स्ट्रीमर है, इसको खुद को नहीं आता सीजन कोई एंड गेम क्लियर करने। है या लाइक नॉट इवन हिज ओन अकाउंट, कम ऑन मी। फिर हमको बोलेगा कि भूसड़ी का भाव खाता है, आता है तेरे को तो। ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ आज एक सीरीज देख रहा था, ठीक है, थोड़ा पुराना सीरीज है, हीरोज करके, बहुत सही लगा मुझे, पहला सीजन देख लिया पूरा। क्लाउड स्ट्रीम पे आवाज जा रहा है बाय द वे, तो ज्यादा मां मत चूसी। आई मीन स्ट्रीम तो येलो हो ही गया होगा ऑलरेडी। उसका स्टैट्स देखा वापस? ये मादरचोद 2 बार अटेम्प्ट किया है क्या ये भड़वा, दोनों का वेस्ट कर दिया यार। सपोर्ट्स होंगे इसमें अच्छे अच्छे, इसमें भाग बेंचोद। वो बुलाने का बिल्ड दिखा? एवरेज है यार, आई मीन ईएम कम था, बाकी सब ठीक था। ये देखो 110 ही है। पूछो 8 घंटे से स्ट्रीम। हाँ भाई क्या पता है क्या कर रहा था साला, सुबह से कुछ किया भी नहीं बेटी चोद, 8 घंटा फालतू में वेस्ट किया है नहीं तो। यू क्या दिख गया? प्रोटोटाइप अंदर गोली का क्या ले, डरिन ही ले लेते हैं आपका डरिन। ये रहा। What the f? Mona, where is TTDS? Nice. 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 Not nice. बात तो सही बोला यार रेहान तू। Nice. 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 कुछ तो फायदा होता। Nice. My God, bro, what the f? Nice. Not nice. देखिए बिल्ड उतना अच्छा नहीं होगा। मोबिका है। इंटर्नशिप खत्म हो गई ना अबे? ने Where is the EM bro? EM का सेंड दे देना। यार रहने दो। EM सेंड पे ज्यादा मारती है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तालियां दे बजाए, हम ज्यादा मारती है। अबे तो चूती है, जब ज्यादा मार रही है वाले पे तो EM लेके जाना गधे।
अरे लेकिन उसके साथ वर्क कौन करेगा? है क्या, कोई है क्या उसके साथ काम करने के लिए? है हाइड्रो है क्या? सितलाली 2 ही बार मिलेगी। What the fuck? Fuck! 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 Damn bro. आज तो संडे भी नहीं है। अबे ऐसे ही आज एक दिन का गैप लिया था भाई। एग्जाम कल खत्म हुआ है, सोचा आज गैप लेके फिर अब कल से कंटिन्यू करूंगा ऑफिस। किताब कॉपी अभी तो गए पानी ले, किताब कॉपी समेटे थे। Fuck. 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 What the heck? Nobody gives a shit. Why do you have Crimson Moon semblance, bro? क्या? Why do you have Crimson Moon semblance? इसमें वाई वाले क्या बात है बे? आंसर दीजिए। आर्ले को चाहिए था। बैड आंसर। गुड आंसर क्या होता? वो आप दीजिएगा तो हम जज करें। वो छड़ी दे। EM bro, EM. संडे को तो अनचार्टेड कंटिन्यू होगा भाई। कर दूं अपग्रेड? रिसोर्सेज है तो कर दे। किसके लिए कर रहा है ये? EM? अच्छा डैमेज डीलर है। पानी पी लो लाडले, 21 साल से प्यासे हो। व्हाट द हेक? उसको जिस्म की प्यास बोलते भाई। वो पानी से नहीं बुझती है। किसी का स्क्वाट से बुझती। पहले गान डैम ब्रो। छोड़ो यार, जैसा है जैसा रहे तो। ला इस पे भी नहीं है। अरे सब पे भी चला गया। अरे अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया भी कंप्लीट। अबे साले हराम को रेहान 64 GB DDR5 5 स्टिक मिल जाए रेयर। रेयर नहीं है रेहान, रेयर नहीं है, इजीली मिल जाएगा। इट्स एक्सपेंसिव, इट्स नॉट रेयर, यू नो डिफरेंस है। रेयर है तभी एक्सपेंसिव है। नहीं रेयर होता है मतलब कि पैसा कितना भी लगा रहे हैं फिर भी मिलना मुश्किल हो रहा है। बट ऐसा है ना कि आपको हर तरीके का रैम मिल जा रहा है, बट एक्सपेंसिव। थैंक्स Which is not rare. 3 महीने हो गया। Love you. 6 more months to go. फिर तुम भी अपने उतड़ में से एक बच्चा फेंकोगे। चलो बताओ क्या लूं? बताओ स्ट्रीमर, क्या सेलेक्ट करना है? अगर मुझे पता होता कि क्या कैसे करना है तुमको क्यों बोलता? नहीं आपको पता है, आप बताइए। नहीं पता है मेरे को। तो कोशिश करिए बताने का। भाई खाने देना मेरे को ढंग से, शांति से। This guy man, this guy does not even tries. Like ठीक है मेरे को नहीं पता, ठीक है नहीं पता तो नहीं पता, मेरे को नहीं पता। The fuck is his problem? Get your bitches out of here. Damn bro. खा ही रहा हूँ, ये साले बीच में बकचोदी कर रहा, मैं क्या करूँ?
थोड़ी देर बाद बोलेगा दिन भर खाता ही रहता है। बोल बोल। चाय पियो और चिल करो, वो भी मम्मी के हाथ का। मम्मी के हाथ का जानबूझ के बोला है। एग्जैक्टली। क्या लूं भाई? इडली मत बोल देना। नहीं भाई, कड़ी पकौड़ी और चावल है। यू असली स्ट्रीमर तो लूना चिराग बस फेस है, क्या ही कर सकते हैं भाई। अब one thing I do बड़ा not want, चूतिया फेस है। ये लो भाई, कुछ ज्यादा ही इजी था ये तो। शिट। देखो यार, मेरे से ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे से ये गेम प्ले मत एक्सपेक्ट करो कि एकदम जो बोलोगे ऐसे वैसे एकदम प्रो प्लेयर हूँ, वो सब नहीं भाई। वो सब ना होता मेरे से। हो गया, मेरा भरोसा उठ गया अभी सब चीज से। It's like अब मैं I वहाँ try compete to करने का learn मेरा it, मन है। and this guy like, nah bro, I don't give a fuck. हाँ, मेरा सही में इसमें कुछ भी नहीं मन करता है मेरा करने का। हाँ वो हमको पता है, but just because you're a streamer, you should know almost everything, almost. जिस दिन स्ट्रीमर बनने के लिए रूल्स में ये बात लिखा आएगा ना, उस दिन मेरे से बात करियो। तो ये Streamer is equals to influencer, you know. है तो इंसान ही, हर चीज थोड़ी पता होगा। Almost. Yeah. ये देखो, as I said, bro doesn't even try to do it. हाँ, Come on. गलत टाइम में बंद गया है रेहान। अभी गेंशिन अच्छा चल रहा है भाई। अब लोड तो अच्छा आ रहा है भाई। नेपालिया कहाँ गया? बोला नहीं बहुत देर से। दारू पीने पापा के चैट साथ। पर चैट नहीं आई, तेरी चैट ही नहीं आई है भाई। अरे यार टॉप चैट पे है शो। एक सेकंड। मैं तो आलू का पराठा विद दही खाया, वो भी मम्मी के हाथ का। वो भी मम्मी के हाथ। खाओ भाई। ओ ये खाओ, हेक्सराइक ली है। Interesting. The hell, man. Okay. It will work. Actually, it will work very good. Great, great, great. Session. इंटरेस्टिंग लगता है खेलने में। एग्जैक्टली रेहान, एग्जैक्टली। This is the only game that kept me hooked. इसके अलावा तो कोई गेम में मजा नहीं आया आज तक। बैड ओपिनियन ना। Damn. हाँ वो क्वेस्ट करने पे अनलॉक होती है, बट आई थिंक इसमें ट्रायल वाला हैक्स ही है, क्योंकि वो 4 अटैक खुद से कर रही थी। आई वाज नॉट डूइंग इट। मैंने भी कुछ नोटिस किया। क्या? स्टूडियो में मैं खाना खाते खाते 10 व्यू घट गए। What? What nonsense, bro. हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? पता नहीं भाई। Never knew though. कोई ना।
बढ़ जाएंगे बाद में। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखने वाला भाई। आरआर मेरा आरआर करना मुझे पसंद नहीं भाई उतना। ओ ले। और अगर आरआर करना भी है चैनल की रीच के लिए कौन आरआर करता है भाई? कुछ महंगा आरआर करो। What is it even supposed to mean, dude? लैपटॉप के लिए आरआर करो। पीसी गिफ्ट कर। छी। महंगा आरआर। Crazy dude, crazy. Bro, my mother is sitting behind me and ये इस तरीके से अल्ट करती है। ये कौन? मिज़ुकी का। देखो हरकत। अल्टे नहीं करेंगे। हमें बोलेगा रे कुछ करते हैं रे। बोले that must not be the wind, bro. That cannot be the wind. This is why Mizuki is important, guys. Why? अरे दिखा नहीं अंधेगी। मेरा ध्यान खाना पे था। As expected. हर टाइम ध्यान खाने पे ही होना चाहिए भाई। बाप रे बाप। What about eating your wife's pussy? ध्यान वहाँ भी वही होना चाहिए। हमको बस वही एक डिश ऐसा लगता है जिसे हम खाते टाइम उसी पे ध्यान देंगे, उसके अलावा मेरा ध्यान कहीं और नहीं होगा। बाकी तो बिना कुछ और देखे मेरा खाना अंदर नहीं जाना है। Oh God. भाई इन फटुई को थोड़ा टरेट सिंड्रोम वगैरह है क्या? आई डोंट गेट इट। क्यों? हिलाने लगते हैं तुरंत। What the heck? पी रहे? जर्किंग? शवल हिलाते हैं बाबड़। सॉरी, माय मॉम इज बिहाइंड। All right, let's head off. Fuck my call. Never mind. कौन सा करूं? लूनर भी हो रहा है क्या मेरा? 4 कैरेक्टर कम। 4 कैरेक्टर कम पड़ गया। छोड़ो, अगले बार होगा। So stupid. अबे इसमें हमको एक्चुअली नहीं पता कि कौन सा करूं मैं। छोड़ो, यही कर लेते हैं। फिर बोलेगा मेरे से ओपिनियन लेता है खाने टाइम। हाँ अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोलने में तो इजी लगता है, फिर हमको पीछे करके करना पड़ेगा ना जब एक्ट 1 से, तब पता चलेगा। हम ही को पता चलेगा, आपको तो पता भी नहीं। साले अंधे रेहान अभी से वो अभी नहीं भाई, अब देखो अब एक्टिंग कर रही है। लमेंट स्टाइजन, भोफड़ी के स्टाइजन है ये। लमेंट लेमन 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 लेमन। मेरे पे मोविका है ब्रो, क्यों हम यूज कर रहे हैं? ले तेरी ऐसे की तैसे। ओह मतलब टीम में गेम का बेस्ट डीपीएस है, बट फिर भी अजीब सी हरकतें करनी है इन्हें। गानों खुजली होती है ना इसलिए। हाँ भाई, आप तक देखे भी हैं खुजाते हैं एकदम लाइव स्ट्रीम पे। एकदम हाथ घुसा खड़ा दिया था। हमको पता नहीं भाई हम नींद में क्या क्या करते हैं। हम ऐसे देख तो लास्ट की तरह सोते हैं, देखे ही होंगे। मेरा तो मन क्या कुछ रख दे तुम्हारे मुंह पे। क्या मतलब? हम नींद में नहीं था।
What the fuck? हाँ जेविन भैया भी लाइक अच्छा हो मेरा शादी हो गया, नहीं तो इनके साथ कौन ही रहे। अरे इंसिनरेट इंसिनरेट छोड़ो चिराग, आपका रेट क्या है? 5070 Ti वाला लैपटॉप। देखो चकबोधी तो कर रहे हो। सियानन का वॉइस ऐसा था। पैथेटिक। भाई मैं एक बंदे को देखा, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप वाला वो जो चूतिया चीज है ना, उस पे टीम क्या कौन सा लिया? चीज? वो एक्सपेरिमेंटल फील्ड जनरेटर, वो चूतिया चीज। ओके वो क्या बोलते हैं, उस पे टीम यूज कर रहा है क्ली C2 Oh my स्पेशल शेवरुस और Oh वरिसा। What the तो क्ली किस खुशी में है बे? C2 क्ली वो रेस अप्लाई करती है बट स्टिल तो फक। तो भाई उसका वरिसा A900 का प्लंज मार दिया। ठीक है ना, अभी खाना खा रहा था, ठीक है, खाते खाते भावुक हो गया। क्या है भाई? एक हफ्ता बाद साला मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा और मुझे ही बर्तन साफ करने पड़ेंगे। वो सब करके घर भी मुझे ही साफ करना है। कहाँ जा रहे हो क्लाउड? चकबोधी बंद करो। जहन्नम में जा रहा हूँ भाई, जहन्नम में। चकबोधी बंद करो, इधर नेगेटिव में होता है एक ही भाई। लैपटॉप पीसी से जब तो पीसी बिल्ड करना है, अगर घर जाऊंगा तो पीसी माथे पे लेके जाऊंगा। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, पीसी 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 क्या है पीसी? पीसी बोले तो पटाखा चिक। Damn. देखो कोई मत बोलना कि हम स्कर्क क्यों लिया है, और कोई ये भी मत पूछना हम स्कर्क से प्लंज करेंगे कि नहीं। आज 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 जो मुझे फीलिंग है ना, तुम्हें भी ये फीलिंग आएगी लूना 6-7 महीने बाद, जब मैं तुम तो रसिया कॉलेज में। नहीं भाई, मैं 6-7 महीने बाद कॉलेज नहीं जाने वाला, ये तो हमको कंफर्म है। वाह, अरे कैसा आदमी है। अरे मारे तो डैमेज कैसे दे रही है? अगर उससे ना खुदा ना खास्ता, ठीक है, डोंट गेट इन रॉन्ग वे लूना, ठीक है ना। अगर डॉक्टर ये साल नहीं निकलता है पकड़ लो, ठीक है ना, खाली मत बैठना, ठीक है ना। तो एक कॉलेज में भर्ती ले ही लो, कुछ भी ले। आई मीन आई वाज थिंकिंग का बात नहीं, देखो ऐसा कॉलेज ले लो कि घर के पास हो और कॉलेज जाना भी ना पड़ जाए। या वो तो नहीं होने वाला बिहार में, एटलीस्ट। क्या बात कर रहा है? जाना पड़ेगा कॉलेज, दैट्स द प्रॉब्लम। ये लोग साले अटेंडिंग कर दिए हैं क्राइटेरिया, और कॉलेज वाले नहीं मानते। मेरे को पूछो, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुमको बिल्कुल टेंशन नहीं देगा, अंग्रेजी ऑनर्स ले लो। लॉल, बात तो सही हो, अंग्रेजी हमको टेंशन नहीं देने वाला। अगर देखो डॉक्टरी तुम्हारा मेन टारगेट है, ठीक है ना, डॉक्टरी अगर नहीं हुआ तो पास कोर्स ही क्यों ना कर लो, डिग्री तो डिग्री है। ट्रू। कि नहीं? और तुम यकीन नहीं करेगा, मेरा जो गांव है, ठीक है ना, मालदा है, इंडिया का सबसे ज्यादा डॉक्टर उसी सिटी में है। वाओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली। अच्छी चीज है ना, मुझे बैंगलोर में अच्छी चीज है, मुझे बैंगलोर में मिल जाती है। तो जो कोई हिलसा विलसा चाहिए 2-2.5 किलो का,
बैंगलोर में मुझे दे देगा, लेकिन गांव में क्या है ना, डॉक्टर लोग रहता है, बहुत दिन से रहता है, उन पे भी अंधा पैसा है। मतलब अगर मच्छी वच्छी आता है बहुत कम मेरे पास न्यूज आता है, पहला फोन उनको जाता है कि रेगुलर कस्टमर है वो। भाई Allegino plus Allegino, Bennett Bennett, plus Silorin Unit करो। plus Colombina and Allegino plus Bennett plus Inefa plus Colombina। हाँ, ये तो कोलंबिना तीन से रिलीज 5 साल का नहीं है टाइम ले यार, मत सकता है करो तो रेंडी होना अभी से ही कोलंबिना का। फुल सिलोनिन नहीं, the point of me सिलोनिन saying नहीं है, this इनेफा भी नहीं है कि मैंने वो लोग अपने बोर्ड लगाता है ना, भाई। इनेफा और कोलंबिना निकालो तो बोर्ड उन बोर्ड में मैं देखा हूँ कि बीए इंग्लिश ये उनका भी है। मतलब वो अच्छा लोग भी जब हाँ, हाँ ट्रिक वो यूज लोग भी कर किए रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो हैं। लोग भी किए, होता ही है। कोई एम फिलोसॉफी किया है भाई, फिलोसॉफी कौन डॉक्टर करता है, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ। ऐसा नहीं कि बैचलर्स किया है, एम फिल क्या है, समझ रहे हो? और थोड़ा होता तो पीएचडी हो जाता उसका। ओके क्या हुआ? या तो अगर तुम इंटरेस्टेड है मैं तुमको कांटेक्ट दे सकता हूँ। यहाँ पे एक कॉलेज है, ठीक है ना, MVIT कॉलेज, वहाँ पे डेंटल का अपना कांटेक्ट है, EDS जिसको बोलते हैं। भाई साव अच्छा मार रहा, आई हेट टू से इट। बिना बेनेट के 70 के मार रहा। तो मैं कुछ बोला, अनोइंग। क्या बोला? सुना कोई बोला? सुना मैंने, सुना। मैं सोच रहा था वही। देख लो, ठीक है ना, अब अल्टीमेटली लाइफ तुम्हारी है, ठीक है ना, मैं क्या ही बताऊं। ऑब्वियसली क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं। एक BDS का, ठीक है ना, डेंटल का है, ठीक है ना, ये तो डॉक्टर ही है। अरे लेकिन चिराग का तो है, साव तो चिराग का है, ये भी तो सोचो। MVIT का नाम सुना है केविन भाई? MVIT सुना, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, MVIT जो यलहंका में है, यलहंका में। हाँ। अच्छा कॉलेज है कि नहीं? विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ना? हाँ, इट इज डिसेंट। यस, महेश्वरा विश्वेश्वरैया के कुछ तो बोला मेरे को। हाँ, विश्वेश्वरैया। तो वही 4 MVIT कॉलेज है। हाँ, उस वहाँ पे डेंटल का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक क्लाइमेटिकुलर है। क्लाइमेटिकुलर है। और सबसे बड़ी बात है, इवन फॉर दैट कॉलेज इन इंजीनियरिंग, वहाँ पे 100% प्लेसमेंट में सुना। अरे बबूड़ी के उड़ क्या रहा है? चलो, हमारे लिए तो 100% प्लेसमेंट बहुत बड़ी बात होती है भाई। हमारा 0% प्लेसमेंट है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। इफ यू हैव 9 CGPA तब आपकी 100% प्लेसमेंट होगी। नहीं, इसके सोचो कि मेरे कॉलेज में तो यही है, 8 CGPA रहेगा ना, मतलब एटलीस्ट 7 CGPA एंड पिछले 1 साल में एक भी बैक नहीं होनी चाहिए, तब जाकर वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू में बैठने देंगे। इसमें वो 150 में से 150 140 अराउंड ऐसे वो फिल्टर कर दिया। अब 10 तो खुद से भी जॉब ले लेंगे भाई, तुम उनको नहीं बिठाओगे तब भी वो बैठ कर लेंगे भाई अपने। क्या है इसमें, कौन सी होशियारी कर ली तुमने? अरे भाई, तुम जो बोल रहा हो वो मतलब टॉप कंपनी, जैसे कि सोचो TCS जैसा फालतू एक कंपनी है, ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग ये सब रिक्वायरमेंट देते हैं। नहीं, कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं, हमारा कॉलेज नहीं बैठने देता यार, हमारा कॉलेज नहीं करने देता वो। कंपनी की रिक्वायरमेंट की बात नहीं है, कॉलेज की गलती है। नहीं, वो तुम्हारी कॉलेज की गलती है भाई। हाँ, वो तो इसीलिए तो मैं कॉलेज को कोसा, इसलिए तो मैं बोला कॉलेज वाली बात होती है ना, तभी तो मैं ये बात बोला। अभी कंपनी ने ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया होगा,
ये लोग अपना टॉप स्टूडेंट को पहले जॉब दिलाएंगे, ये सब करेंगे तो बैठ के। पहले जॉब नहीं दिलाएंगे, उन्हीं को टॉप स्टूडेंट को फिल्टर कर लेते हैं, उनको जॉब दिला देंगे और उनका फोटो पोस्टर पे छाप देंगे। हो गया, हो गई इनकी मार्केटिंग। और क्या, ऐसे चलता भाई। दैट्स नाइस। नहीं, अगर इसको भी तुम चेंज कर सकता है, ये मतलब वो जो मतलब इंटरव्यू जो होता है ना, कोऑर्डिनेटर होता है तुम्हारे कॉलेज में, कोऑर्डिनेटर तो होगा। कोऑर्डिनेटर से तुम्हारा कैसे रिश्ता है? रिश्ता ही नहीं। वो कौन है, मैं कौन हूँ, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। साला ये बढ़िया रिश्ता। अबे उनके साथ दारू पीने बैठना होता है, तुम कर क्या रहा है भाई? वो मैम है भाई। तो मैम है तो मैम है तो और इसीलिए बेड़ा easy है, करता है। ठीक है ना। मैम है तो हमेशा उसका चाटो, मैडम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा उसका चाटो। नाइस, साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैडम ओल्ड लोगे ना? नहीं भाई, यंग है। पिछले साल शादी हो गया यार उनका। अरे लौड़ा ले लो। मेरे को तो पसंद थी भाई। ये आवाज को क्या हो गया? क्या हो गया भाई आवाज को? लगाना पड़ता है आज के दुनिया में। तुम कहाँ साला कौन सा जमाने में है, क्या ही बोलूं मैं तो। ये मानेगा कि नहीं लूना? मक्खन तो कुछ ज्यादा लगाना पड़ता भाई आजकल। भाई बात हम तो बहुत छोटे हैं, फिर भी हमको लगाना पड़ता है संभव। तुम किसको मक्खन लगा रहे हो? अपनी चूतड़ में भोसड़ी वाले। फिर देखो स्ट्रीम पे गाली दे रहे हो तुम हरामखोर। अच्छा सॉरी भाई, स्ट्रीम पे आवाज ओ अभी भाई जा रहा नहीं था। तो हम तो ये वाला बात बोलते ही नहीं, इससे तो मेरा ही ऑरा लॉस हो रहा। मेजर ऑरा लॉस। अब तो बोल दिया, अब क्या? अब तो बोल दिया भाई, अब तो लौड़ा लग गया। इमेजिन दैट, मेरे पास पहले से एक गाली नहीं दे रहा हूँ, बाकी लोग दे रहे हैं भाई। कोई बात नहीं क्लाउड। अरे टीम बता रहे बोवाड़ी के तो क्या बीडीएस में बिल्कुल इंटरेस्ट लो ना। बताओ यार, टीम बताओ यार। मुझे नहीं पता भाई, तू देख ले। हेलो, हाँ क्लाउड। बीडीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? आवाज आपका नहीं आ रहा अच्छे से। बीडीएस हम मत जो बीडीएस। अरे अरे भाई इसलिए मौली का पसंद है। अभी कबूम फिर से एक आध होगा। छोड़ो, कबूम हो भी नहीं पाएगा, लेकिन हमको कबूम करना है। कबूम ये चलो पैंट खोल के रेडी रहना, आपका थिएटर 10 स्टार होने वाला। क्या बोल रहा है रेडी? 800 पे बस 5 पुल और निकल गए, 58 पुल्स हो गए मेरे फिर तो। और बोतल भी, या एक बोतल भी। एक गॉबलेट क्राफ्ट कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ हाँ? जिस फिंगर से माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं उस फिंगर को क्या बोलते हैं? इंडेक्स? मिडल तो नहीं बोलते होंगे, इंडेक्स बोलते हैं। हाँ भाई मेरा इंडेक्स फिंगर का बॉडी बिल्डर। ओ नौवे का प्लंज। भाई ब्रो इट्स एक्चुअली हार्ड राइट नाउ। गरम हो रखा, पता है मेरे पास 5 उंगलियां हैं, तुम लोग अगर पता ना हो तो। ओह क्या ज्ञान की बात की है आपने सर। आप नहीं पता तो तुम्हारा क्या मेरा इंडेक्स फिंगर गरम हो रखा है भाई, बाकी सब फिंगर ठंडे, वो गरम हो रखा है। लाइक आप ही तो हैं सर, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता पता नहीं। एग्जैक्टली ये इतनी ज्ञान की बात आपने बताई है कि क्या मेरे बिना क्या होता है। थिएटर कौन करता है आपका? बाइगन इंडेक्स फिंगर की बात कर रहा है ना? हाँ फ्रिक्शन के चक्कर में गरम है। क्लाउड लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ पे डालने से फ्रिक्शन नहीं होता, यू नो। A lot of option comes in mind. Good. One of them is carburetor. पता है तू सेवरस मार के ना वो मेल्ट खराब कर रहा है तू।
I don't give a f about melt. हम सेवरस का बफ ले रहे हैं, हम तो मोनो पायरो खेल रहे हैं. Do you really expect कि हम 0 EM वाली आर्ले से एक्सपेक्ट भी करेंगे वेव करने का या मेल्ट करने का? नहीं कर देगी और मार भी देगी 3 लाख. Nobody gives a shit. Wow. Oh my god. It is not where it falls. Wow. 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 हो गया 10 स्टार. Obviously भाई हो गया 10 स्टार. दस मिनट. वाओ. इसी बात है फिर टाटा नेपाली अभी था ना, किधर भाग गया? क्या बोले चिराग? टाटा के अकाउंट में भी चले जा. हाँ भाई जा रहा है. हमको भी एक दिन में जल्दी से कंप्लीट करना है क्योंकि हम चाइल्ड लेवल कब मिलेंगे आपको कभी नहीं. हाँ क्लाउड चाइल्ड लेवल का लूनर भी करना है. बोले टाटा का कर दो मेरा पास. आज कर ही दो तीनों फिर तो तुम. और प्यार से बोलिए थोड़ा. मार करना लौड़े. छी ससुरा, अब तो मेरा लौड़ा ना कर. आईडी पास डाल रहा टाटा जी का अकाउंट लॉगिन कर रहे, ठीक है? दिखा मत दीजिए ऐसा नंगी आंखों से. नहीं नंगी आंखों से दिखा कैसे सकते हैं, देख सकते हैं. देखो लूफी तुम्हारे पर हंस दिया. हम पे हंसा क्यों? हम पे हंसा. टॉप 3 होगा नहीं. चिराग भाई तुम तो बोल रहे हो तो के बाद हरियाणा शिफ्ट हो जाएगा. क्या जी के बाद? अरे तुम बताया था. अरे उधर थार से इसको लेके चले. थार से एक बार ठोकेगा और फिर पीछे आके ठोकेगा. हरियाणा बावड़. हरियाणा में तो पहले से हूँ मैं. आप पटना कब आ रहे हैं? I don't know. मे बी होली के टाइम पे आऊंगा. अरे भोसड़ी होली अभी 10 महीना बाद है. 10 महीने कहाँ भाई, तुम्हारे बर्थडे के टाइम पे ही है. हाँ लेकिन फिर भी यार होली बहुत दिन है अभी. हमको चूचे दाने हैं आपके. भाई तो उसके लिए हम अपना पैसा कटवाए हैं. इधर बहुत मनी मेंटेड हो गया साला. अबे घर में तुम जाके खुशी नहीं मनाएगा? हाँ वही तो, पैसा चाहिए साले को. मतलब ये 10 दिन कॉलेज के लिए छोड़ दिया जॉब. वही भेजेंगे तभी जाकर खुशी बढ़ेगा भाई. सुनो अब तुमको ठीक है ना, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी ना तब तुम जब होली में जाएगा तब ना पड़ोसी लोग घेर लेंगे कि मेरे लिए क्या लाया. अब तो तुम कॉपी करना है, ठीक है? क्या लाया है? मैं बोलूंगा देखो पैंट में रखा हुआ है जो भी लाया हूँ. एक बार देखो पैंट सरकाओ, देखो निकलेगा अंदर से. हाँ. तुम छांट का बोल पाएगा, ठीक है ना? तब बोलेगा कि देखो ये बंदा जॉब कर रहा है. तुमको ऐसे हवा में चला देगा, तुम घंटा कुछ बोल पाएगा, ठीक है ना? तो बोल दो ना, मैं बोलूंगा तो तुम कौन हो भाई जो तुम्हारे लिए लाऊं भाई. मैं कौन हो? तुम नहीं बोल पाएगा भाई, होता नहीं है ऐसा. मैं अभी भी बोलता हूँ. मैं तब की बात बोल रहा हूँ. मैं तो अभी भी बोलता हूँ. अभी इसलिए बोल पाता है कि मेरे से कोई फालतू आदमी आके मेरे से बोले क्या रहा है, मतलब कौन है तू? क्यों ना हो तेरे लिए मैं? तो फूफा बदमाश. तुम पे जो सबसे ज्यादा पहना बोले वो तुम्हारे चाचा ही होंगे, ठीक है ना? The pinnacle of death. उनको बोल देंगे पैसा What नहीं. बस हर चीज नहीं बोल सकते भाई, क्या ही बात कर रहे. What the? हम जितना बिल्ड देख रहे हैं और ये खराब होते हैं. डिस्कस नहीं कर रहे हम. लीव इट. मैं ये बोलो तुम प्रिपेयर रहो, ठीक है ना? ये इस बार दिस इज द फाइनल ईयर, ठीक है ना? जब तुम जाके घर में खुला एंजॉय कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू आर फक्ड. खुला एंजॉय तो अभी भी नहीं कर सकता मैं. यू खुला एंजॉय क्या? तुम क्या उधर गोली गोला चलाएगा क्या? अरे नंगा होने का बात कर रहे हैं. नहीं भाई इसको बेटी चौथ को सुनो इसको बीवी चाहिए बस. इसको बस ब्याह करना है. हमको पता है साले का कुछ दिखता ही नहीं है आगे ब्याह के आगे. इसको नहीं पीछे एक लिपस्टिक में बिक जाना है बेटी. Imagine bro is buying lipstick on EMI. That would be quite interesting. Like bro what the fuck.
नहीं भाई, एक बात बताओ ना, जो उस दिन सेटअप का फोटो भेजा था, उस दिन देख के मेरे ही रूम तक खड़ा हो गए थे। कितने खर्चा है उस पर। अरे कौन सा सेटअप का फोटो भेज दी भाभी ने। अच्छा डैम किसी के तो उठ खड़ा। व्हाट? मेकअप का सेटअप? मेकअप वाले सेटअप की बात कर रहा है क्या ज्ञान चोद रहे हो बोल तो फक? अबे तुम नहीं थे शायद, तुम शायद सोने चला गया था। हाँ भाई, मेकअप का सेटअप वहीं चोद। अरे सारा जो व्लॉग देख रही थी। नहीं भाई, मेरी बीवी पिट जाती है भाई, मैं बोल रहा हूँ। चलो मैं निकल रहा हूँ। बाय बाय। जा रहे हो? ओके बाय। भाई मैं बता रहा भाई, मेरी बीवी पिट जाती है। और 26 में तो 10-20 दुनिया में 50,000 कहीं नहीं गए। अरे गधा। यकीन नहीं कर रहा है ना? क्लाउड एक आइडिया मेरे पे। तो तुम्हारे पास है तो उसको जूम करो, ठीक है ना? एक का प्राइस अभी एनालाइज करेंगे। क्लाउड एक बात बताइए क्लाउड। एलिमनी एक उसके लिए नहीं है ना, जेंडर के लिए? जेंडर न्यूट्रल है ना वो? जेंडर न्यूट्रल है, यस। तो ऐसा एक आध ऐसा फेक वीडियो बीवी को मारते हुए, ऐसा नहीं, बीवी हम लोग को मारते हुए रिकॉर्ड करके उसको प्रूफ की तरह यूज करके और खुद का जॉब छोड़ के, क्या बोलते हो? क्या बोल मैं बोल रहा एक काम करते हैं, मतलब ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फेक कि बीवी हम लोग को पेल रही है, ठीक है, पीट पाट दी एंड अरे वो नहीं लीक कर रहा, हाँ वो मार रही है, ठीक है। अरे वो सड़ी, और उसके बाद उसको प्रूफ की तरह यूज करके, ठीक है, केस कर देंगे और डिवोर्स करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि हम लोग अर्न नहीं करते, गरीब के भोसड़े हम लोग, और वो काम करती है तो हम लोग का एलिमनी चाहिए। ये बाहर में चल सकता है लूना, इंडिया में एग्जैक्ट। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर अतुल सुबह के पास बहुत सारा वीडियो था जहाँ पे, हाँ भाई उसके पास बहुत सारा वीडियो था, मेरा पेला गया फिर। हाँ तो इट डिडंट हेल्प। सेकेंडली, इफ यू डोंट नो, इंडिया में मैरिज को इतना पवित्र माना जाता है, प्रीनप इज नॉट एट ऑल मतलब वैलिड है। नॉट जस्ट दैट, मैरिज पवित्र माना जाता है, मीनवाइल बीवी उसकी दही से धुली हुई है। नहीं, मीनवाइल ठीक है ना, इफ ए लेडी वांट्स, हाउ मच एडवांटेज उसको है, मैं तुमको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो बहुत सारे ऐसे केसेस है, ठीक है ना, जहाँ पे हस्बैंड प्रूव कर दिया है कि उसके वाइफ का मतलब नाजायज संबंध है, टिल दे आर आस्क्ड एलिमनी। Alimony cannot be avoided. Extramarital affairs is grounds for divorce, but that divorce also has to. क्या बोलते हैं उसको? That divorce also has to be illuminated. तुमको अगर alimony नहीं देना है, you have to prove that you are no longer the provider for the woman, which means तुमको prove करना. No, which means you have to prove कि तुम्हारी बीवी कोई और गैर मर्द के साथ रह रही है, is living. जैसे कि चिराग। ये क्या बात कर रहा है भाई? चिराग हम टेस्ट कर रहे थे है कि नहीं, भोसड़ी का है कि नहीं यहाँ पे आए थे। है साला सुन रहा है, हराम खोर कहीं स्मर्क दे रहा है विश। चिराग आपके अंडर आर्म्स में गर्मी है क्या? कहाँ हाथ डाले? आवाज जा रही है स्ट्रीम पे? हाँ जा रही है। साला अभी पैरालोगिज्म को ट्रिगर हुआ था, मेरी फट जाती है ऊपर से नीचे। मैं सोच ही रहा था कि हम लोग की स्ट्रीम पे ऐसा बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट भाई क्लिप फार्मिंग कर रहे हैं यार हम लोग। अभी तो पूछा नहीं, भाग जाते हैं इसमें से। नहीं मैंने नहीं पूछा भाई, इस पोस्ट वाले ने पूछा। अरे भाई
एक चीज मैं तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जितने भी लोग स्ट्रीम ना, 10 भी लौंडे, हाँ, 4 ना, अगर 10 भी, 4 में से, ठीक है ना, 4 में से 2 लौंडे का डिवोर्स होना ही होना है आज की डे नहीं। देख लो भाई कौन दो म्याओ म्याओ, ये भाई ये बंदा म्याओ म्याओ कर रहा है, पता नहीं म्याओ 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 म्याओड़ी के सोच रहे हैं ना कि नहीं छोड़ो यार, बहुत लंबा प्लानिंग है बको। उसके लिए पहले हमको नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। अरे ससुरे के, अब तो नहीं ले पाएगा लैपटॉप जो हिसाब से स्काई रॉकेट हो रहा है प्राइस। नहीं, अभी ले लो तो अभी ले लो, अभी ले लो, नहीं तो फिर भूल जाओ भाई, कम से कम 3 साल भूल जाओ कि लैपटॉप ले पाइएगा आप। इतना मेमोरी, जीपीयू मेमोरी एंड ये सब तो पता ही है भाई। नहीं, अगर तुम मार्च, हम बस सपोर्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना। तेरे को तो पता ही है, तो तू क्यों बोल रहा भाई ये बात? हम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहते, बस हम इसलिए बोल, यू नो, म्यूचुअल फायदा इसमें। What are you? What to what? Demolish the competition from ये the जो करंट में एक बार फेज आउट हो गया ना, तो प्राइस बढ़ेगी। मार्च तक वेट कर लो, फिर तुम बोलेगा क्लाउड बताया तो था। Yes. I mean, according to data miners and लोग experts, so called experts, 2027 तक ये रैम शॉर्टेज रहेगा ही रहेगा। उससे ज्यादा, I think उससे ज्यादा जरूर जाएगा, क्योंकि अभी तो रैम शॉर्टेज नहीं हुआ है, जस्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन कम हुआ है, शॉर्टेज नहीं हुआ है। You can buy any RAM, but you have to have that amount of money. ना आर्टिफिशियली शॉर्टेज है लूना, देखो। हाँ, आर्टिफिशियली शॉर्टेज है। हाँ, तो जितना चाहे खरीद सकते हैं। हाँ, अभी आप जितना चाहिए उतना रैम परचेज कर सकते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। देयर इज नो लिमिट। काफी लोग जीपीयू भी तो महंगा हो रहा है मेमोरी के कारण, और X3D प्रोसेसर्स भी महंगे हो रहे हैं मेमोरी के कारण। क्या बोलूं, कल 5070 का बेड सेटअप देख रहे थे हम लोग, क्लाउड, चिराग और हम, कि अगर कोई पीसी बिल्ड करने की कोशिश करे 5070 के साथ एकदम बैलेंस, सारा 3 लाख चला गया हो जाएगा इंडिया में। दूसरे देश में 2 लाख में हो जा रहा था, $2,200 में हो जा रहा था, $2,200 में। रीअसेंबल जो लैपटॉप्स है, ठीक है ना, उसके प्राइस कहाँ तक आइडिया है? उसके प्राइस आई डोंट थिंक कि उतना बढ़ेगा जितना रैम बढ़ रहा है, बट रीअसेंबल्ड लैपटॉप क्योंकि कंपनी डायरेक्टली खरीद के बेचती है, तो आई डोंट थिंक उसका प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा, बट एक्सटर्नली रैम खरीदने का या फिर स्टोरेज खरीदने का उसका जरूर बढ़ेगा फॉर श्योर। नहीं, ये तो अभी स्टॉक में है, ठीक है। फिर एक बार वो चला गया ना, ग्राफिक्स कार्ड का जैसे ही देखो कि 2021 में जब मैंने लैपटॉप लिया था, उस टाइम पे लैपटॉप का प्राइस कम था, तब जाके मेरे को वो मिला, और जैसे ही वो शॉर्ट मतलब स्टॉक जैसे आउट हुआ उसका, दैट वाज द टाइम बिटकॉइन का बुल रन हुआ था, तुमको याद है कि नहीं? इससे पहले ग्राफिक्स का सस्ता आता था भाई, इतना नहीं था उसका प्राइस। आज तक उसका नहीं हुआ है भाई। साला आज तक हम 4 लाख का ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखे थे, वो भी देखने को मिल गया इस साल। तुम टाइम मशीन यूज करो, देखो 2020 में 3050 या 4050 जो भी तब रिलीज हुआ था, वो लोग 10,000 में लेते थे। अभी तुमको बोलूंगा तो तुम बोलोगे नहीं। अभी वो वाली बात है कि 50 10,000 में मिलना अनबिलीवेबल लगेगा तुमको, ठीक है ना, क्योंकि वैसा हो गया है परसेप्शन कि अभी उतना सस्ते में नहीं मिल सकता।
हेलो चिराग भाई। अरे कुछ बोलो भाई, शांति हो गया पूरी, मर उठ गया क्या? टेंशन हो गया उसको। किस बात का टेंशन? टेंशन तो देखो तुम्हारा भी लैपटॉप खराब होना है, मेरा भी लैपटॉप खराब होना है। अरे मेरे लैपटॉप से पहले मेरे वो करियर का टेंशन है ना, हमको तो और ज्यादा होना चाहिए था। मेरी फट जानी है कुछ गलत, एक गलत डिसीजन हुआ तो। कहीं इस तरह से बात कर रहा है बता। तुमको तो बोला हूँ अच्छा आइडिया दिया हूँ, पर तुमको चिराग भाई तुम्हारा दोस्त इतना सेक्सी क्यों साउंड करता है? पता नहीं भाई, उसी से पूछ लो। हमको भी नहीं पता भाई, पापा से पूछना पड़ेगा। बस ये चैट में 5 मिनट ये चैट मेरे फोन पे नहीं दिख रही बट लैपटॉप में दिख रही है। पता नहीं क्या ही तकलीफ है। I'll be sure to share it with you ladies at our next tea party. लेडीज खुद लेडी है बोलता। Well, still. भाई चैट में कोई नहीं है भाई, वो मजा नहीं आ रहा। कोई है ही नहीं, वही तो बात है। आई थॉट कि थोड़ा यार ज्यादा ही सोच लिया मैंने। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा ज्यादा सोचना ना दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, मैं तुमको बोल रहा हूँ। लोग ना सोचते हैं, सोच समझ के साइंस लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग लिया, फिर पास किया, अब नौकरी कर रहे, सोच रहे कुछ अच्छा करेंगे, इससे थोड़ी ना कुछ हुआ। इससे अच्छा ऑटो चलाते, अमीर बाप की लड़की पटा तो माँ बना देते, फिर जिंदगी का ये वॉक थ्रू थोड़ा स्ट्रेंज साउंड किया। ये वाला घड़ी अच्छा लग रहा है लूना, देखो तो शेयर करो। क्या घड़ी देखो, दिखाओ किधर बैठ। Cloudstrife.x said, a link. You won't get soaked. Ah, the delightful sea breeze. Go on, breathe it in. ओल्ड फैशन के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। ओल्ड फैशन तो भाई सबको बोलो तो एप्पल वॉच मुंह में लो। स्मार्ट वॉच के मेरे को एकदम वो नहीं है। मी नीदर। मैं जाने से पहले को भी ऑर्डर किया है, पॉकेट वॉच के लिए ऑर्डर किया है। उसका ऑरा ही अलग है, जो भी बोलो ठीक है ना, जो भी ओल्ड फैशन बोलो। And in due course, the wind brought forth new tales, and time caused them to grow. So with that, डिजिटल सब अच्छा है, मैं माना ठीक है ना, लेकिन वो जो घड़ी का कांटा घूम रहा है ठीक है, उसमें हमेशा बेटर होता। The best stories always start with a bit of suspense and intrigue. I told you about this before. By the way, वो गाइजिन नहीं दिख रहा है? I encountered time at the Thousand Winds Temple. गाइजिन नहीं दिख रहा है? वो कौन? ये कौन है भाई? It was because of time's help that those first winds of freedom were. But forceful gales like that are most suited to wiping things clean. So भाई ये कितना टाइम लगेगा ये एक्सराई क्वेस्ट करने में? No idea. Shadow step. I've heard about the It's 5 to 6 minutes. I fear it is the end, but that's why I chose to do it here. तू ये क्वेस्ट बैठकर कर क्यों रहा है? स्किप मार देना। I need it. का अकाउंट में से मौका नहीं है। ऐसा इतना लंबा स्ट्रीम कर रहा है आज? नहीं शाओ है और नहीं वो है शेन्यू ने। आर्कन क्वेस्ट करना था ना, इसलिए आज लंबा स्ट्रीम कर लिया। हो गया ना आर्कन क्वेस्ट? हाँ हो गया।
क्या है भाई, क्या होने वाला है इस तरह? Hello, is there anyone? भाई डिस्कॉर्ड पे पिंग करके देखें, हो सकता है सब भूल गया हूँ। Looks like our music has moved some in our audience to step on stage. कौन आ गया भाई ऑडियंस के नाम पे? अरे मेरा कीबोर्ड। But that's against concert rules. Oh. I understand your love for music, of course. वेंटी उड़ा लेना सबको, वेंटी से। वही कर रहे थे। इधर ठेक्सर है? हाँ। और सब ठेक्सर है। 10,000 पूरी माँ का भरोसा। ट्रायल वेंटी था वो, मेरा वेंटी नहीं था। I mean टाटा जी का वेंटी। EOMEA से तो बेटर है। EOMEA से बहुत बेटर है। और अगर ग्रुप में एनिमी रहे तो उनकी तो क्या है? पता नहीं मैंने EOMEA और शाओ क्या सोच के निकाला था। इंटरेस्टिंग। अरे हो गया। हम सोचे कोई भयंकर लोर होगा, एकदम फट के हाथ में आ जाएगा। I mean अगर उस कुछ ऐसा 1 सेकंड गलत जगह स्टैजन में क्यों जा रहा? फक। स्टैजन छोड़ना बस, स्टैजन बाद में भी कर लेंगे। अरे स्टैजन आ जाया है ना तो आदत हो गया उस पे जाने का, बहुत गया है ना आज। स्टैजन इसके अकाउंट में हो जाएगा भाई, मैं कर लूंगा। मैनेसिंग ही होना है इसके अकाउंट में भी। नहीं फेयरलेस नहीं होगा इसके अकाउंट में, पता है मुझे। मतलब एक AR60 अकाउंट में आप डाउट भी क्यों कर रहे कि मैनेसिंग नहीं होगा? I mean अगर आप हक दिए हैं पूरे अकाउंट में वो अलग बात है, बट एक बेल बैलेंस अकाउंट में तो होगा ही। नहीं हक तो नहीं दिए हैं, लूनर खुला हुआ है इसमें। लूनर खुला हुआ अंधे होगा? अच्छा नहीं, विजनरी था वो, सॉरी। मेरी खुद की फुद्दी फट गई थी, मैं अभी देखा तो। इसमें लूनर कैसे करूंगा? इसमें होगा भी नहीं, DPS ही नहीं है। अटक जाइएगा वो एक जगह आके। ओह शिट। ओके नेवर माइंड। खुद से रेडन को यहीं पे डाल रखा है ना। That works. ये तो बिल्ड ही होगी। चिमनावा होटा विद engulfing। है ना, हम जीनियस है ना भाई। है भाई। क्या कर रहे हो ब्रो? I don't know। अभी आया था ना फ्री में, कौन क्यों नहीं है C1 में? चेक करियो, दोबारा लगाया हुआ किस कैरेक्टर पे है। अरे वो तो कभी भी चेंज कर ही सकते हैं, क्या फर्क? मैं भी यही। अरे नहीं हुटाओ का C1 निकाली है वो। नहीं हम हुटाओ का C1 निकाले क्योंकि हमको हुटाओ पसंद है, बट इस अकाउंट में क्या जरूरत था? ये देख भाई मेरा अकाउंट नहीं है, वो बोलेगी हुटाओ का C1 कर लो तो ठीक है, कर दिया मैं। क्या चल रहा है अभी तक? सेकंड वाली की अम्मी का हुट 786 टाइम्स है। सेकंड वाली की अच्छा नहीं हुआ तेरा? इमेजिनेरियम थिएटर करना था, उसका स्ट्रीम एंड करने से पहले इसलिए अकाउंट स्विच कर लिया। आई विल डू योर लेटर। चैट देख ले। एक बात बोलना था, मिल गया वेलकिन दोनों? अच्छा दोनों मिल गया, फिर ठीक है भाई। इनको मैं क्या बोलूं भाई, मैंने बोला कि ठीक करो अपना पेमेंट गेटवे, क्या है सीन होता है ये। सॉरी यार वो जरा ये लोग नहीं करने वाले थी तो ज्वाइन नहीं कर पाए भाई। ऐसे चला देखो, अब जैसे 2-3 घंटा लग गया वेलकिन आने में, ऐसे में यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, लोग नहीं कर देंगे दोबारा। अरे यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होता है, ठीक है खराब होता है वो तो सही बात है। यूजर्स की गांठ फट जाती है कि उनका अकाउंट छूट गया। मुझे दिखाना। ओके चिराग ऐसा नहीं होता, मान लीजिए आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा शक नहीं हुआ कि वो फक लॉर्ड लग गया? पैसे का पैसे मेरे को ड्यूरिंग गेन निकाल के अकाउंट के चाम मच जाएगी। वाओ वैसे देखो ये लोग 5% पैसा वापस देने की बात करते हैं ना, तो गोली ने कुछ 5,000 2 रुपए मिला, 3 रुपया कैशबैक दिया है। और कितना वेलकन टॉप अप किया गोली? टूर्नामेंट में कितना दे रहा था वो?
13 15 वेल्किन 15 में 3 रुपया। वाओ डैम 15 वेल्किन। वाज इट स्पॉन्सर्ड कि वो खुद कर रहा था? क्लाउड और मैंने दिया मेरे स्ट्रीम के नीचे ही अफ्रीकन लोग बैट बॉल खेल रहे हैं। वाह भाई भाई सब तेरे क्या दिक्कत हो रहा है भाई? खेलने दे बेचारों को। पहले बैट खाते थे अब खेल रहे हैं, इसमें गलत क्या? ये है कैरेक्टर एनिमो डीपीएस बेस्ट। छोड़ो भाई, अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। आपको ये भी मत बोलना कि यूज नहीं करने आता। दिस इज द फास्टेस्ट रोटेशन ऑफ दिस फकिंग इडियट। एक तो गेम में जो 6 फुट के नीचे है ना, उनको यूज करके ही बड़ा कमजोर का फीलिंग आता है। 6 फुट के नीचे, आई मीन स्कार को 6 फुट के नीचे है, बट मारती तो गांड फाड़ देती है। लड़का की बात कर रहे हैं, मेल कैरेक्टर्स। डरिन करंट मेटा है गामिंग। आई मीन मेल कैरेक्टर छोटे हैं कहाँ ज्यादा नहीं दे देता है डैमेज एटलीस्ट कोटन कोटा स्कारा से। फिर भी उतना मजेदार नहीं है भाई, उसका भी उतना भी मजा सा नहीं आता है गामिंग के साथ खेलने में। संभोग करो यार गामिंग के साथ। क्या बोल रहे हैं मित्र? बैच चला गया यार, एक महीने हो गए। अरे क्या बात है, थैंक यू फॉर द प्रीमियम मेंबरशिप से दी। लगता है इसका बैच अभी खत्म हुआ थोड़ा देर पहले, मैं देख रहा था। पता है मैंने नोटिस नहीं किया। लगता है जैसे कोड रिडीम करके आ चुकी होगी, तब ये स्क्रिप्ट अपना निकाली। अरे ओ जी एकदम खतरनाक वाला स्क्रिप्ट। व्हाट डू यू मीन कोड रिडीम? डायरेक्ट बैंक में तो ऐड की हो सकती है। अब मुझे नहीं पता भाई, मैं जस्ट भाई हम लोग कोड रिडीम करते हैं यार, हर लोग नहीं करते भाई। अपना गरीबी बता रहा था, मतलब मैं अपने हिसाब से जज कर रहा था भाई। जज कर रहे थे? अरे मतलब भाई इसमें मेरी गलती। नहीं वो प्ले स्टोर पे पैसा ऐड हो चुका है गलती से, तो ऐसे ही यूज करूंगी मैं। कितना पैसा ऐड कर दिया भाई? Holy shit. Guys, this is how being rich feels like. एक मॉडल है फ्लिपकार्ट पे पैसा ऐड करते। फ्लिपकार्ट ने पैसा ऐड कर लिया, बोल रहा है अमेज़न पे परचेज करना है। कोई है जो फ्लिपकार्ट पे परचेज कर लेगा और मेरे को अमेज़न का गिफ्ट कार्ड दे देगा। वाह भाई वाह। अब बोले साला तेरा यही दलाली करता रहूं मैं बैठ के हरामखोर। दलाली भी नहीं, दलीली है भाई वो। भाई साहब ये फ्लिपकार्ट का पेमेंट गेटवे का नाम क्या है पता है ना? क्या जी? फोन पे। फोन पे? What the hell? ये सुन के तो मैं सरप्राइज हूँ। सिद्धि मत बोलो यार उसको, तुम्हारा भी वो जो चमगादड़ वाला है ना, उसमें थोड़ा सा तकलीफ दिख रहा है। अबे वो सेन क्या बकचोदी कर रहा था? कौन सी सेन? अरे सनफायर, इसके पास जीने नहीं है, ये सनफायर कहाँ से करेगी? एक भी जीन नहीं है इस पे। नहीं है भाई ठीक। जी रहती तो हमको टेंशन ही किस बात का था? हमको वो यूज करनी पड़ रही भाई, एम्बर। वो बॉस के लिए चाहिए क्या? वो बॉस को नीचे लाना होता है सीधे, और उसपे 70% रेसिस्टेंस परमानेंट है एनिमो को छोड़ के, मतलब वेंटी चाहिए उसको, वो भी हेक्सर है। जस्ट होयो बिंग होयो। अरे मैया का सर, प्लीज सच ए क्यूट चाइल्ड। व्हाट? जीन को कैसे खरीदे चिराग?
लाइक 200-400 पुल करो 20 पे मिल ही जाएगी एक। मेरे पास C3 जीन है सिद्धि। वाना डील? बताओ कितना रेट लगाएगी उसका? व्हाट? जीन धंधे वाली? एक मिनट, साला गला साउंड किया। अरे मतलब कितना पैसा मिलेगा उसका? स्टिल जीन धंधे वाली? तो ही हो भाई तो। नहीं, एक वो थोड़ा अच्छे तरीके से पूछना, काम वही हो रहा है लेकिन एक होता है अच्छे तरीके से। दोनों तो प्राउड आ रही हुआ भाई। 200 रुपए पर जीन? नहीं यार, बहुत सस्ता है। नहीं यार, उसके जिगल्स बहुत है यार, इतना सस्ता नहीं यार। नहीं, अच्छा भाव बताइए। हमारी कन्या बहुत मेहनती है। Is this some random Indian father अपनी बेटी का डील करते हैं? यही सब ब्याह करते हैं। देखेगी। अच्छा ब्याह करते हैं उसको, सॉरी भाई। एक लाख मार दी भाई। स्टार तो नहीं निकल रहा है इसमें। छोड़ो यार, अब आप ज्यादा डिप्रेशन दे रहे हो हमको। भैया डरिन से भी नहीं होगा। डरिन से तो हो ही जाएगा, डरिन से तो हो ही जाएगा। डरिन और वेंटी के लिए तो है वो चूतिया। डरिन डालो, देखो कैसे हो जाता है। जैसे वो तुम्हारी लाइफ से गई थी, उससे भी तेज हो जाएगा। मुझे जीन के जगह बैटमैन मिल गया एंड वो मिजुकी दोनों बिल्ड नहीं किए अब तक। बैटमैन? हट, बैटमैन का नाम खराब हो गया साला ये नाम बोल के। चास का बोल ले यार के पास। ये क्या टीम है भाई? ये क्या कर रहा है? तो क्रैश सोल्व करेगा। हाँ, रेसिस्टेंस भी रेड नहीं होगा। लवा नहीं हो रहा भाई इसमें तो। क्ली बेटर थी, क्ली बेटर। 29 डिग्री निकालना पड़ेगा, निकालो। क्ली तो डालवे करब हम तो डालवे करब, क्लियर डाला वो। अरे लाइस आ जाएगी भाई, डाली मत करो भाई। एलिस जो बोल दी इतना आसानी से, अपना क्वेश्चन डॉज कर दी कि काहे ही सब करती है। बोलती नहीं भाई, हमको तो अपना बुतरू सेफ रखना है। मीन भाई वो 10 साल से अपने बुतरू से मिलने नहीं और फिर इन्हें फेंक दिया उसको। अच्छा 29 वाले में ये ऑप्शन नहीं है। व्हाट? कितना कर लिए भाई ये? 300 वाला लिए क्या? नहीं भाई 60 वाला। आप री बात, फेल भाई। सबसे बेसिक लेवल वाले पे नहीं आता है ये ऑप्शन। नाइस यार सिद्धि, क्रेजी। 10 months। बाय द वे बॉयज का फाइनल सीजन आ रहा है। हाँ, ट्रेलर आ गया, देखा मैंने नहीं देखा, बट ठीक है, तुम लोगों को पसंद है तो हमको भी पसंद है भाई। लोग बोलते हैं बॉयज इज पीक, हमको क्यों पता नहीं होमलैंडर एक छत पे हिलाते हुए मिला था क्लिप में। नहीं ठीक है, उसमें जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना, बिली जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता है भाई, है अच्छा तो लगता है। लेकिन भाई वो मम्मी के साथ सो रहा होता है यार, ये क्या बात हुई? लेकिन कुछ ज्यादा ही उसमें गंदी हरकतें हैं भाई उसके मुंह पे दूध की बारिश हो जाती है यार। पता स्टार्टिंग में ना एक बार हम डाउनलोड किए थे लगभग 2 साल पहले, द बॉयज सीजन 1। तो उसमें हम ना एक सीन देख लिए स्टार्टिंग में ही, एक गे सीन देख लिए, ठीक है यार। एंड बॉयज का पता है कितना न्यूडिटी होता है उसमें, तो गे सीन देख लिए एंड वो डिलीट कर दिया। तो मेरा मन उठ गया भाई उससे। लेकिन फिर जब सीजन 4 आया तो उसका फिर बहुत ज्यादा वो हाइप बना, उससे कि चलो देखते हैं। फिर मैंने वो गे सीन झेल लिया। अरे नहीं, बेस्ट पार्ट वो था, याद है जब एक बंदा अपनी बंदी को किस करने वाला होता है, उधर से वो स्पीडस्टर आता है भाई, उसको वही तो फ्रेंची की गर्लफ्रेंड होती है वो। अब कोई भी रहे, फ्रेंची था नहीं, फ्रेंची नहीं था यार, फ्रेंची नहीं था, फ्रेंची तो वो है ना चिट्टा था बीकेल। अरे हाँ, ह्यूई कैम्बेल। ह्यू उसका बड़ा हुआ था हिंदी डब है ना, उसको क्रिएटिव गालियां। लेकिन तो बॉयज में जो हिंदी डब में क्रिएटिव गालियां क्या है? ये लड़की देखी है क्या पूरा? ओ माय गॉड, मतलब हम इस दुनिया में पीछे हैं बस। भाई मैंने तो वो सीन देखा है जब वो ह्यूई ने स्टारलाइट के साथ टेलीपोर्ट किया था। ओहो क्या सीन था। क्या उसकी गांड में टेलीपोर्ट? क्लाउड मैं प्ले कैसे करूं यार? मैं स्क्रीन पे स्ट्रीम कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं इस बार टेक्निकली अभी के लिए। आप फोर्स नहीं देखा अब तक? तूने फोर्स सीजन नहीं देखा? क्लाउड भी लगी क्या भाग रहे हो? ये लोग 200 का डैमेज
इसीलिए तो पहले यूज कर ली उसको, टाइम वेस्ट करने के काम आया भाई। ओहो, ये ट्रायल की चास का है भाई, मजा आ रहा है देख के। मेल्ट हो रहा है ना तो ये आर्ले अमली बेने ड्यूरियन से हो जाएगा, नहीं होगा भाई। C6R5 पुल करो। अरे एमली थोड़ी ना क्रायोसील तोड़ेगी, बर्जन होगा तब तो, लेकिन उसके ऊपर बर्जन कैसे करोगे? वो बोका चौदह ऊपर रहता है यार, मैं क्या बोलूं, बहुत टेंशन याद दिया है वो बॉस हमको। मैं बोल रहा भाई ये कुछ ज्यादा इजीली हो रहा है। एक आध मैं तो कह रहा सितलाली सेव कर लो। गुड चॉइस ब्रो, गुड चॉइस। भाई ये लाना पेलरे का फैन कौन बन गया? मैं करना चाहता हूँ, आज तक जब भी एसआर और लुमिन मिला है उस टाइम पे पाइमोन उसके पास था क्या? लव यू। नहीं एस्मोडे रूलर ऑफ द स्पेस। अरे अभी जो वो थी बारबेलोथ जो कि फ्यूचर देख सकती है, हैं? उसका फट गया था पाइमोन का फ्यूचर देखी तो कुछ बोली नहीं, वो ऐसा रिएक्शन दी थी ना कि उसका फट के 4 हो गया पाइमोन का फ्यूचर देख के, फेट देख के। टू बी ऑनेस्ट फ्यूचर नहीं फेट। क्या था फेट में? कुछ बोली ही नहीं, वही तो दिक्कत है, कुछ बोलवे नहीं की, उसका फट के हाथ में आ गया, पता नहीं क्यों। अभी वही गोल्डन को थोड़ी नीचे खड़ गया। सांझे ड्यूरेंट निकाल लिया गया लो ना भैया, तो प्लीज टीम बता दो ड्यूरेंट के लिए। भाई एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, गेम खेलते हो उसके लिए क्या कहते हैं, मजे के लिए, एंड लिटरल तुम साला कंटेंट क्लियर करने के लिए कोई भी कैरेक्टर पुल कर लेता है यार, कहीं बोला जाए। C0 तो इजीली हो जानी चाहिए सिद्धि, तब तक मैं जितने पुल्स में C0 ही हो गया, R1 का मुश्किल है। R1 का मुश्किल लग रहा है, आई मीन अरे मैया छूट गई। ए भाई आप तो बोले हो जाएगा। नवंबर सांझे अच्छा C6 में कितना बचा है अभी? अच्छा 35 पीटी है अपन बैनर पर। 35 पीटी होने से क्या है, 80 पे जाके हार गई, लो हो गया ना पीटी रीसेट। फिर हो सकता है, हाँ फिर एक चांस है, अगर 50-50 जीती है तो हाँ मे बी, पता नहीं यार, फिर भी काफी रिस्क नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, बट आई डोंट थिंक तुमको रिस्क फील हो रहा है, लाइक यार निगा आई गॉट कार्ड, ओह सॉरी। अरे बाप रे, सील ऐसी तोड़ दिया साला। बम में गोली मारेंगे इसके। एक तो ये गोवा एनर्जी नहीं जनरेट कर रहा साला दिया। अरे यार ये क्या स्क्रीन ब्लैंक क्यों जा रही है? ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को कुछ काट रहा है। कौन काट लिया भाई? पता नहीं भाई। खींच 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 खींच, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे भाई रुको भाई, हाइप अप ले मत भाई, एक थप्पड़ खा गया भाई, हट यार साला लौड़ेगा। अलेचिनो बिल्ड भाई, नहीं यार अभी अब नहीं होगा रिव्यूज, आई एम सो सॉरी, आई एम डन फॉर द डे। 70 पुल लास्ट ईयर और 50 पुल इस बार की एक सिंगल बेनी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। चिराग चैट पढ़ो। अच्छा कीप पुलिंग योर क्लोज। हाँ 80 पे हार गई तो चिराग तुम्हारे डीएम में क्रिएटिव मराठी गालियां दिखेंगे तुम्हें। भाई मैंने क्या किया? मराठी गाली, अरे इसको समझ ही नहीं आएगी, साला सोचा जोक है, हंस के छोड़ दे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं जस्ट एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ और कुछ नहीं। भेदभाव किया भाई, तुम्हारी मर्जी। नहीं भाई, अगर भेदभाव का इल्जाम लगा रहे हो तो मुझे अब करने दो फिर। उसके बाद इल्जाम लगाना मुझे तो ले लो कम से कम। मैं जेंडर न्यूट्रल होने चिराग भाई, लड़कों को तंग मत करिए, लड़कियों को करिए। अगर क्लाउड बोल रहे कि क्या बोल रहा है लूना, तो कुछ तो करो रे। तुम ये भी तो, मैं हमेशा वर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने लेके चलता हूँ, तो तुम्हारे लिए भी वही बोल दिया और क्या? चैट मुजान की चैट किधर है? खींच गया।
मुदान की चैटी मिस होती आ रही है। चलो मेरा रेजिन खाली ना चाहिए। हाँ नेफर के आर्टिफैक्ट से फार्म करने ना हो जाएंगे। Hey, listen to me. Hey, hello. हाँ क्या हो गया? What should I get, bro? Go for this one. ये क्या नाम है इसका? हाँ यही। हाँ क्लाउड बोले। कितनी उसके चैट पढ़ना पड़ेगा। बट तुम ये बोल सकते हैं कि 30। अरे मैं वो पढ़ लिया चैट। ये चैट पढ़ तो लिया। नहीं वो पढ़ लिया मैं, जो सिद्धि को पढ़वाना था जो चैट। ब्रो तू क्या थोड़ा होता है क्या गाइडेंस मांग रहा तेरी? हिजात नहीं मांग रहा हिजात। हाँ मैं थोड़ा सा चूतिया हूँ यार। थोड़ा सा चूतिया है लेकिन कोई भी लेकिन भाई देखो एक कॉमन सेंस नाम की चीज अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी 1% भी एग्जिस्ट करती होगी तो आपको पता होगी थिएटर के बीच से तो रिव्यू नहीं होता है मेरे भाई। तो अगर आपके पास जो आपके टट्टों से भी छोटा दिमाग है, अगर आपका थोड़ा सा भी काम कर जाए तो प्लीज यूज इट यार। अब भाई देख ये बात को लेकर आर मत करियो कि मैं स्टीमर को कैसा बोला है। शुरू तूने किया था भाई, पहले बोल दिया मैं। आपको बुरा लगा कोई बात नहीं, लग जान दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे फूफा के लड़के नहीं हो, नहीं मेरे बाप के बेटे हो। एक सेकंड, आपके पापा कब गए? रहने दो। अबे रहने दो, फिर हम लोग फिर बुरे लोग बन जाएंगे अचानक से। ये ड्रीन आया तो नहीं, ड्रीन आया तो नहीं आई कोलंबिना तो क्यों निकाल रहा है? एक बार स्टेजन नहीं होगा तो मर जाओगे क्या भाई? लिटरली क्यों इतना पागल हो रहे हो? क्यों इतना घोषणा जाते हो भाई? प्रीमोस भाई नहीं हो रहा, अगर कोई कैरेक्टर नहीं हो रहा, ठीक है, कोई कैरेक्टर पसंद है तुमको तो वो निकालो ना यार। कि कंटेंट क्लियर करने के लिए इतना भी कितना पीछे पड़ना होता है? बहन जो तुमको जो कैरेक्टर नहीं चाहिए तुम वो भी पुल करो सिर्फ कंटेंट क्लियर करने। तुम चूतिया हो ऐसे में, तुमको चूतिया ही बोलूंगा और कुछ नहीं। लिटरली भाई तू सिमर होने के लायक नहीं है भाई। भाई वो क्या है ना कि YouTube के रूल्स में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर मैं अपने व्यूअर्स को कहीं पर ये बात मतलब जो वो हेल्प मांगे वो ना करूं तो मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता। अगर हाँ आपकी बहुत पहुंच है ऊपर तक तो आप रूल्स में लिखवा के आ जाइए और अगले दिन मुझे क्या कहते हैं उसको, सेक्सुअल हैरेसमेंट का रिपोर्ट कर देना मेरे को, ठीक है भाई? When you realize that you have free will. ओके सो आपके वैसे भी आपके जो भी ये क्या है यार, क्या कहते हैं इसको, ओपिनियन से मुझे इतना सही फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं करता रहूंगा भाई, तू मुझे नहीं रोक पाएगा। अरे उतना गलियाली तो झांटवर बोल ही देते यार, जान दो ना यार, गाली नहीं दे रहा ना भाई। है तो यार हम ही भोसड़ी। हाँ सुबह से स्ट्रीम चल रही है ना, वही तो यार भाई। वेंटी है, मुझे लगा तू साला वेंटी आया नहीं है इसलिए तो यूज नहीं कर रहा है। अरे भाई यार वो क्या है, बड़ा गधा आदमी है यार, चक्कर में थोड़ा सा यार इधर उधर हो गया है। अजीब गधा है साले। भाई गेलू डैमेज दे ना दे, उन भोसड़ी वाले को पीछे करते आराम हम करेगा थोड़ा सा दूर जाके ले मार खींच दो सालों को ऊपर। अरे क्या बात चल रही है? अरे ऐसे ही मजे चल रहे हैं। मैं सुबह आया था टीवी में, बट ज्वाइन करते करते ये टाइम हो गया। भी आ गया इसका, अल्ट भी आ गया भाई। वेंटी इज क्रैक ब्रो, जस्ट पुल फॉर वेंटी मैन। कंटेंट क्लियर करना है तो साला 5% गया कैसे? आ जाओ। अरे यार ये बोका चोदा बच गया। इसी गोली तो रिटायर्ड हो जाता है इतनी देर में। कमाल की सीढ़ी चिराग तुम्हारे तो नहीं भाई, ये दैट्स समथिंग आई शुड नॉट बी प्राउड ऑफ। ये तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है? स्ट्रीमिंग नहीं, अगर ऐसे जनरली भी काम करना पड़ा तो हम 12-13 घंटा 15 घंटा लगातार काम कर सकते हैं बिना किसी एजिटेशन के। ये तो कंफर्म हम बोल सकते हैं। कर तो सकता ही हूँ, बशर्ते मुझे उस काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट। अब मेरे विल के अगेंस्ट वाला काम है तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, रहने दो फिर। नहीं इट्स लाइक क्या होता है ना कि उतना तो कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, मतलब उतना इजीली कर सकते हैं। तो मैं भाई देखो 8 घंटे 9 घंटे बैठ के काम करने का तो मेरे को हो चुका है। ऑफिस में बैठता ही हूँ इतना देर भाई, तो आदत हो चुका है, तो उतना भी तकलीफ नहीं होता मेरे को। हाँ स्टार्टिंग में मतलब 4-5 घंटे भी स्ट्रीम हो जाती थी तो लगता तो था कि होता है, मतलब
तकलीफ होती थी मेरे को, लेकिन अब आदत हो गई है। आई लव दिस यार। पता है हम 20 तक गलत टाइम पे आता है ना कि हम पुल नहीं कर पाते। अभी कोलम्बिना चाहिए, वरना हम पक्का 20 पुल करते। पुल तो ट्राई तो करते निकालने का एटलीस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ हिज डैमेज। पहले भी बिना हेक्सेराई के भी काफी अच्छा दिखता था, मतलब इसका अल्ट वर्ल्ड हमको बहुत पसंद था कि ग्रुप में कभी भी एनिमीज आएंगे तो उनकी चाम उठ जाएगी कुत्तों की तरह। और नंबर्स कितने सेटिस्फाइंग है या विल पावर मैटर्स? शो नहीं, बहुत बेकार। विल पावर मैटर्स, विल की पावर तो काफी मैटर करती है भाई। 7 घंटे बैठने के बाद एक ही जगह दर्द होता है। आई नो चिराग, आई नो। अच्छा हाँ, यू आल्सो नो। या माइक में घुस के बोल रहे थे इसलिए। क्यों मत बोलना, खड़खड़ा जाता है। हाँ पता है, खड़खड़ा जाता है। तो बाद में सीधे बाबू होता है। ए हमको भी पता है भाई, हम भी पढ़ते हैं, काम नहीं करते हैं लेकिन पढ़ते हैं। हमारी भी रहती है एक जगह। ए मारे चो भाई इधर जरा सा ध्यान हटता नहीं, लौड़ा मार चुप रहो। 1 मिनट लगता है। ये क्या हुआ अभी? जैसे तुरंत गाली गलौज में उतर जाते भाई। 1 मिनट भी नहीं लगता भाई भड़काऊ बयान देने के लिए सोचती हूँ। भाई वैसे वो बंदा नहीं दिख रहा भाई मुझे, जो ज्ञान खो के गया अभी मेरे सामने। भड़काऊ बयान दे दिया भाई, कहाँ से दिखेगा भाई? तो स्ट्रीमिंग के लायक नहीं। थैंक यू भाई। हमारा तो मनोबल गिर गया भाई। हम लोग का क्या होगा? ये पानी वालों को भी उठा लेगा क्या? नहीं भाई, नहीं उठा रहा है। नहीं, जम जाएगा, देखो ना। नहीं भाई, तो यहाँ पे वेंटी बचा सकता है, मैं तो कहूँगा। यहाँ पे वेंटी का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है ना। क्राउड कंट्रोल यहाँ पे नहीं करना है तेरे को। अरे पता है भाई, लेकिन कुछ दिखाएंगे तो थोड़ा सा आप कहिएगा कि तेरी बहन। बहुत क्यूट है भाई। भाई डीपीएस कहाँ है भाई? ये वहां से मैं कहना चाहूँगा साथ भाई। नहीं, मैं कहना चाहूँगा एक रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड करने में भी कोई डीपीएस नहीं आ देख ले भाई, तो अपने जाते मुझे मत पूछ। हम ध्यान नहीं। मेरा बात हो रहा है क्या जो बोला था जाने से पहले? क्या ये रीसेट क्यों कर दिया यार? ये 3K हो गया ना, तो हर माइलस्टोन पे एक बार रीसेट कर देते हैं उसको। वाह डैडी आर्ले, ए गंदा हो रहा था। आर्ले जैसा मरा तो। एक मिनट, Will you not say? एक सेकंड what? नहीं हाँ सुन मेरा एक दोस्त के साथ एक दिन घूम रहे थे, तो हमको बोलता है भाई हाउ कैन अ मैन बी, एक हॉट करने जा रही थी बगल से, तो बोलता हाउ कैन अ मैन बी गे? हम हेनरी कैविल बोला, बोलता I'm sucking it। तुरंत बदल गया हेनरी कैविल सुनते ही। भाई लोगों को हाँ 3K मैं थी ना 3K सब कुछ है क्या? मतलब हेनरी कैविल में बस लौंडे सिंप करते हैं। नहीं भाई, इससे अच्छा मैं चूतिया ही देखता हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, ये दुनिया में हर हॉट इंसान पे लौंडे क्यों सिंप कर? जिम जाइएगा, आपके डीएम में RAP थ्रेट्स आएंगे, वो भी लौंडों के दौर। तुम थी तो 3K के वक्त यार, ऐसा कौन सा एंशिएंट टाइम हो गया? 50 सब्सक्राइबर ही तो ज्यादा। ऐसे क्या बोल रही भाई? बहुत जोर से नोटिफिकेशन पॉप हुआ है भाई तेरा। मेरे गांड फट गया था भाई, इतना कस के आवाज आया। तेरी चोट मेरी ही फट गई। ये क्या हुआ? बवंडर आया भाई, भेड़िया आया। 54 बेचारी मोमो की कितने घंटों की मैच गई पानी में? 127 घंटे भाई। बेचारी मोमो यार, मेरा बेटे के साथ ऐसा करते हो तुम लोग, छी। भाई मेरे बाल बच्चों को bully करना, भाई क्या नंबर दिखता है भाई? मेरा पीसी लैग कर रहा है, हमको फील हो रहा है कि हमको 90 FPS नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। मत बोल भाई, यूआईडी भी दिख रही है। शिट। नहीं गाइस, हम फोन पे फोन पे नहीं बंदूक का है।
भाई हम मेरे मुंह से आईपैड निकलने वाला था लेकिन हम इतना गंदा स्टटर किए ना कि अच्छा वो आईपैड नहीं निकला। छी गेमपैड यार तुम स्ट्रीम नहीं कर रहे थे तो एंड आई ने पढ़ा तो आई वाज लाइक आई नो दिस गाय, कहीं तो देखा है फ्लैशबैक हिट्स हार्ड भाई, आई नो दिस गाय, कहीं तो देखा है फ्लैशबैक हिट्स। अरे ऐसे क्यों होता है भाई, ये नॉर्मल सा वॉइस बात बोलती है थोड़ा घुमा के और इट्स द फकिंग समहाउ फनी। मीनवाइल हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग फनी नहीं बन पा रहे भाई। चिराग लूना भैया से पूछो ड्यूरिन की टीम, लूना भैया बोला है तुम ड्यूरिन का मुंह में ले लो, हो गया। देखो भाई ड्यूरिन का कोई टीम ऐसा नहीं है, बस ड्यूरिन और फिश ओवरलोड में चलाना, ओवरलोड में चला ले, मेल्ट में चलाना मेल्ट में चला ले, वेव में चलाना वेव में भी चला ले भाई, तू सब में चल जाता है, आर्ले की तरह है। अच्छा किसी भी रिएक्शन में सुना मोनो पर चला दे, मैं तो कह रहा सुना हां बाबर चोदी के जब हम ज्ञान चोदी लगली तो तू कहे चोदी लगला बीच में हमार मन बहुत ठीक है। अरे यार इसको मारना पड़ेगा, फक हाइड्रो वाले लौंडे नहीं आए, उसे ठा सकते थे हाइड्रो वाले लौंडे। हाँ मिस शूट यार, शिट 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 डैडी चिनो व्हाट द के हैं हैं बैगन हाले थैंक्स फॉर द सोल ब्रो, नाउ विल नॉट स्विच टू यू नो मैटर व्हाट। देख रहे हो 1,45,000 engulfing के साथ गरीबों, दैट्स सूटाओ। अब कितना 2700। अरे भाई हाइड्रो एप्लीकेटर नहीं यार कांस्टेंट, मेरी गलती। हाँ क्यों भाई? अपना अकाउंट संभाल के रखिए और यू शुड से जाओ अपनी बहन अकाउंट। अरे मेरी बहन ढाक है भाई, उसका बुद्धि काम नहीं कर। क्या करें अब हम इसमें, बुद्धि दीजिए। नहीं भाई इतना बुद्धि नहीं है मेरे पास। भाई वो बुद्धि बांट रहा था, भगवान जब बुद्धि बांट रहा था तो किसी को गरिया रही हो वो भी बिना रीजन के। उसकी पैन दी बुद्धि दे, तेरू पैन दो। नहीं भाई लड़ रही होगी। काहे लगी काहे की पीएसआर का कंट्रोलर कोई ले लिया। नहीं खाना नहीं मिला होगा। अरे यार लड़कियां तो ऐसे भी दिन भर 3 बार खाना होता है, उसमें से 1 बार खाती है, वो भी पता है क्या, एक वो बिस्कुट। नहीं भाई तुम उसको खाते नहीं देखा है, फिर पीते देखा। राक्षस नहीं है वो, छी बहुत खाती है। छी छी आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट। नहीं जा सकते अभी, रह दो, पापा आते हैं बीच में लगा देंगे। ये बाबू सुनो ना क्या हो गया, चाहे भाई आप भी क्या बुआ खेलते हो कभी कभी? कभी नहीं। ये बाबू क्या हो गया? हार्ले डरिन फिसल बेनी बहुत सेक्सी टीम है भाई, बहुत सेक्सी, दम खुद आप मच जाएगा। ओह व्हाट कुछ गलती मच रहा है तो मामा मिया, लेना ही पड़ेगा वेंटी ना भैया। रील नहीं रियल। ए सांझ ये क्या लिखा है भाई, कुछ तो ढंग का तो लिखा कर भाई। कुछ तो ऐसा लिख जो सुन के हंसी तो आया एटलीस्ट। क्या लिखा है साले, कोई सेंस ही नहीं बना उसका। कुछ तो सेंस बना होगा भाई जरा सा भी। स्ट्रीम पे बता दिया बहुत खाती है। हाँ तो झूठ थोड़ी बोलूंगा भाई, बहुत खाती है, पीती भी बहुत है, दारूबाज। लस्सी उसको दारू नहीं बोलते, साढ़े फेक ले लस्सी की नशे करती। अबे आई तो तेरी चैट, 2 बार तेरी चैट आई ऊपर में ये बाबू करके। बड़ा पगला है तू। फॉर जैसे जा सबको। अच्छा इतनी सच्ची बातें हो रही है तो मैं कुछ पूछूं? पूछो पूछो देखें। ऐसा क्या बैंगर क्वेश्चन पूछ दोगी तुम कि मैं बैंग हो जाऊंगा उसमें? ये गांड पिल जाएगी आप। ओ भाई तब ठीक है। कौन है भाई? दूसरा अकाउंट से आया बोली वाला, देखो।
चिंटू कितने काउंट से आ रहा है पता नहीं भाई। जब चिंटू चुन्नी पता नहीं क्या क्या नाम रखता है। अच्छा हुआ गनशॉट नहीं रहा। अच्छा हाँ सॉरी वो तो एक 12th हार्बिंजर का बाद में बोलना मत कि मैं नहीं बता सकता। आर यू श्योर चिराग? हाँ पूछो मैं भी देखो क्या कोशिश हो जाएगी। कुछ तो खौफनाक लग रहा है भाई बाय द लुक्स ऑफ इट। अरे दांत दो दांत निकाल के बेटी चोद एक हाथ कंप्यूटर पे रख के जो बैठा है और अजीब से लिप्स मूवमेंट कर रहा है हमको बिल्कुल अजीब दिख रहा है सेकंड वाला मॉनिटर। अरे श्योर अगेन चिराग भाई ऐसा भी क्या पूछेगी। साले इसके थोड़ी देर के लिए प्ले होने देते हैं आपके स्ट्रीम पे आपके स्ट्रीम पे आपके स्ट्रीम पे आपके स्ट्रीम पे। नहीं भाई पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा भाई। गांड वांड फट जाएगी। ये मैं कर रहा हूँ जीतने के लिए गेंशिन को वोट दे। अच्छा मार चुप गई। मैं कर रहा हूँ जीतने के लिए गेंशिन। इसके बाद धीरज का भी करना अगर याद ना हो तो। नहीं भाई हमको बिल्कुल याद नहीं। उसमें लूनर करना है। नहीं भाई हमको बिल्कुल कुछ हो याद नहीं। हम भाग कर लो यार। बाबू हमरा गरिया रहे थे कि सुत रहे हो बेटी। बाबा ने है हटाइए ना छोड़िए ना खा दिन तो ऐसे ही होता है। हाँ वो मेरा मनी कट ऑफ कर देंगे फिर हम झांड कबाड़ी तो रह जाएंगे दुनिया। अरे हम पापा को लीच करते भाई तुम लोगों को पता ना हो। क्विक शॉट का लॉजिक बता। अरे तेरी तो हट में मैंने लगा ही था ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछ लिस भाई। हट एक बार डीएस नॉट प्रोग्राम भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है व्हाट द फक डू यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वही कॉर्पोरेट। नहीं भाई ये मैं नहीं बोल ये ऐसे ये तो नहीं मैं नहीं बोल रहा भाई। आप ही थे भाई आप ही थे झूठ मत बोलिए ठीक है। सिद्धि को भी पता है। नहीं भाई तूने बोला है ना सिद्धि। नहीं तेरी गलती। छी मर गया मांगो। मेरी चैट दिख रही है नहीं। चिराग जब आई एम डूइंग टू मच प्रमोशन ऑफ गेंशिन। चिराग नीचे से ये लोग जब अपड्राफ्ट खाता होगा वेंटी का तो लिए बम में ऐसा मस्ट हैव बीन अ विंड वाला फील। आजकल बहुत ब्रेन रॉट होने लग गया मेरा। मेरे मोमो डिरो निकाल लिया गया। हाँ मैं बोला ना वो स्कर्क मेंस एंड स्कर्क छोड़ के सब निकालेगा। फुरीना C3 कर लिया। जबकि देखो फुरीना का एक होता है ना कि एकदम मस्ट हैव वाला कौन C1 ही है। हाँ ठीक है C1 पे तुम वो मस्ट हैव वाला कैटेगरी से बाहर निकल चुके हो लेकिन फिर भी वो C3 पुल किया फॉर द मैक्सिमम बफ। चलो वहां भी चलेगा। सेन के चलते सेन की गांड जलाने के लिए साला किया वो भी नहीं हो पाया अच्छे से। शिट कौन है बे कौन खो यार बहनों आप सब अपना कीमती वोट केवल गेंशिन को दें। ठीक है भाई मैंने तो कब के अपना वोट दे दिया भाई। कौन कुत्ता का तरह थैंक यू भाई that's crazy। भाई अबे स्ट्रीम पे आवाज आ रही कुत्ते। कोई ना देख लो पीला हो जाएगा स्ट्रीम। अरे नहीं गाली नहीं दे रहा तुम पूरी। मोमो से बड़ा वाला स्कर्क मैन तो मैं हूँ। क्या चल रहा है बहुत दिन बाद इंटरकोर्स लिटरली ब्लेड इंटरकोर्स चल रहा है भाई। तेरा चल रहा है तेरा पढ़ाई। ये क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? आई थिंक आप ही। मेरा पढ़ाई वो क्या होता है? साले ईयर के स्टार्टिंग में बोला वेंचर अगले साल एमबीबीएस। भाई ईयर के वो बस बोलने की बात है। देखो मैं ईयर के स्टार्टिंग में बोला तो मान लिया एंड में जो बोल ले वो भी मान। भाई लूना बोलता है लूना करता है। नहीं भाई
हमें क्या भाई, हम तो अपने पापा के पैसों पे लीच करते कर्क मत रहेंगे खेलो हमेशा भाई, के लिए। ये अच्छी बात नहीं है भाई। चिराग सोकर उठते हो तो किसकी याद आती है? मेरी। क्यों जानना है तुमको? बोलो तो ना मेरी। अरे तेरी तो एक्सेप्टेड ब्रो, एक्सेप्टेड। Yeah. लोग कुछ नहीं बोलेंगे। 2025 चल रहा है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 15-20 दिन और चलेगा। फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट। आई इसमें सपोर्ट हंसने दिस वाली थ्योरी। क्या बात थी भाई? बस ऐसे ही मन कर रहा था बेटी। भाई ये फ्री वर्ल्ड है भाई, आई हैव फ्री विल, आई कैन लाफ एट योर मॉम। ना यू कांट। ये देख फिर अपने ढाक बहन जैसा हरकत कर रहा है। अच्छा हरकत है भाई, लेकिन ये like imagine you are in a serious argument and bro pulls out this move illegal. like लड़की लोग पुल करती है तो ठीक है, एक बार को फील आता है कि अच्छा लड़की से बात क्यूट कर रहे लगता तो है। कोई बात। हाँ, लड़के से बात करे सेंसलेस हरकतें तो करेगी। सिद्धि देखो क्या बोल। नहीं भाई, मैंने नाम लेके नहीं बोला किसी का, पहले बोल दिया। तो सिद्धि बोली कि लड़की वो कहाँ है? हाँ भाई सिद्धि गॉट द थैंक ब्रो। या यू आर हैंगिंग विद चिराग भाई। चिराग इज पेन, व्हाट द हेक? चिराग ये देखो कह रही है गार्ड बस्ती से बाज नहीं आओगे मोस्टली। नहीं भाई, कीड़ा है जीवन है। बड़ा वाला। नहीं छोड़। किसका हॉट डॉग लिया हो, सच से बता। नहीं भाई, बीटल है भाई, बड़ा कीड़ा। अरे बूटी वाला 18 लौंडे को मारना था। शिट, चुदी लगी। फक बेंचो। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? इमोजी जो डाली। क्या इमोजी है? गीगा चैट वाला इमोजी है भाई वो। गीगा चैट तो नहीं लग रहा है। लग रहा है भाई, कि है बेटा। भाई वो टुड्डी देख, टुड्डी क्या कहते हैं उसको भाई? क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। क्या कहते हैं भाई? टूडी नहीं बोलते उसको भाई, टुड्डी बोलते हैं, टूडी नहीं बोलते उसको। That jawline is triple than me. ट्रिपल दैट। वो जॉलाइन से भाई लड़कियां नस काटती। चौबोर्ड है भाई। चौबोर्ड द फक। चैट पे ध्यान तो लूना कर रहा है इमेजिनेरियम। हाँ तो वो चैट ही तो देख रहा है भाई। यार एक गेम में कैरेक्टर बेचने वाला सिस्टम भी होना चाहिए था, ये स्कर को बेच देती मैं। मैं तो एक गेलू गायब कर देता अपने अकाउंट से, इसकी मैया का भरोसा जीतू। मैं गेलू गायब करता, शाओ गायब करता, यूमिया गायब करता। नहीं भाई, हम यूमिया नहीं गायब करते, सी इज क्यूट। ना पट्टी खोलने की देर है। तो हॉट लगेगी और क्या? पायरो एलिमेंट है ना। हम कहेंगे यूमिया तीर चलाते रहिए पानी में, ठंडा आ गया, पानी गर्म कर। उस कर्क मेन बन रहा और बन रहा कोई और कर्क को मेन कोर्स में टेस्ट कर रहा। हाँ भाई, जोंगली था वो। भाई जोंगली तो भाई खेल गया भाई। जोंगली अम्बोग कर रहा था उस कर्क के साथ एकदम लिटरली। सिद्धि आ गई, वरना हम लोग और देखने वाले थे, एक्सप्लोर करने वाले। या रिसर्च पर्पसेस। हम लोग इस बात की जड़ तक जाते हैं, जस्ट लाइक मीडिया कंपनीज आज तक। पक्का जड़ की बात हो रही ना भाई? हाँ भाई। हैं क्या? हाँ भाई, है। हाँ जड़ था भाई। कर का एक कपड़ा बेच के शनि का कपड़ा लेता। तो कपड़ा बेच के, उसका तो कपड़ा ही नहीं है भाई। भाई पता है, मैं बताता हूँ, कर्क से ज्यादा बता, कपड़े शनि पहनती है। जस्ट थोड़ा मतलब। नहीं भाई, स्कर के बाद 2 कपड़ा है, काला एक उजला। फैंसी ड्रेस पहनती है सारी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ये हाँ, इवेंट वास बता दे तो मैं भी देखती यार। व्हाट द हेक? That's fall bro, that's
अरे साला रे वी वर वाचिंग भुट्टा। मेरी सुनते हो? एकमात्र वेंटी वो कैरेक्टर था, उसको भी लौड़ा मिला। What exactly is teamwork? Fuck bro। अब हम उस बावरचोदी को नीचे कैसे ला? एक रिवाइंड बचा भाई लास्ट। वो ही चुदी। I haven't watched something like this. Yeah। छी छी छी। हाँ देख सकते हैं वैसे ये चिंटू पूछ रहा है। चिंटू पूछ रहा है? चिंटू कोई पूछता नहीं दिखा मेरे को। Pinterest is Hindi literally, not kidding। कली मेरी Pinterest की सर्च हिस्ट्री तो भाई खत्म ही थी। लेकिन सेक्सी वीडियोस नहीं भाई ये तो नहीं था भाई ये हरामखोर साले क्या बोल साले पीला कराएगा That's all। पीला हो गया होगा भाई अभी तक, हम लोग हाथ कर रहे हैं। चिराग बमन चार्ज का वो कैसे थे पता है क्या? बमन चार्ज का What the fuck? ये कौन सी गाली है भाई? नहीं पता भाई। न्यू आइडिया न्यू। सालो एक वेंटी में भागते फिरोगे, रोड पे होगे? नहीं भाई हवा में हवा में अगर तो रोड पे ही गिरेगा। अच्छा बात तो बड़ा गवार बोल रहे हो। अरे छी हम भी गवार नहीं। अरे छी यार जितना और बोल रहे उतना और गवार वाला बात नहीं कर। भावन का जगह डिस्कॉर्ड में मीडिया चेक करो क्या भेजे पहले ये बताओ। कहीं पे गॉर्न होगा तो मैं नहीं देख रहा भाई। सेस्वियन लेक्स होगा तो मैं नहीं। हाँ तो आई मीन तो हम लोग साथ में सामूहिक पे गॉर्न एक सेकंड सेस्वियन लेक्स देख। सेस्वियन लेक्स देखा। हाँ या जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी आ सकता। तुमको मेंटल और कंट्रोवर्सी मालूम है ना? तो Pinterest इतना सब कुछ होने के बावजूद चल कैसे रहा है? चलता ऐसा भी कुछ हुआ था? हमको भी नहीं पता, हम मिंत्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। That is one e-commerce website that I don't आज तक तो मैंने अपने मोजे भी नहीं मंगाया मिंत्रा से। हाँ भाई ब्लिंकिट से 20 रुपए का सामान कौन मंगाता है? 20 रुपए में हो जाता है पता नहीं। हाँ भाई फुटपाथ के साइड में बिकने वाला मुझे पहन 20 रुपए में। मंगल बाजार बोलते हैं बैंड पे लोग। सोच रहे हैं पालिका बाजार जाएं एक बार दिल्ली का। जाते हैं एडिडास का ही स्नीकर्स खरीद के लाएंगे। एडिडास का चामचुम का मोबाइल भी स्नीकर्स होंगे भाई वो। स्नीकर्स हो गया। हाँ भाई उनका रीसेल वैल्यू समझ रहे हो 40 करोड़ में बिकेगा। तो जगह होती है होता कि नहीं तुम बाद में सर्च कर मैं लड़का। अच्छा लड़का होती तो बता चुकी होती है अभी तक। सर्च कर लेना मिंत्रा का लोगो यार। हाँ हाँ मतलब मिंत्रा का लोगो क्या चुरा लिया था Pinterest वालों ने? Pinterest वालों लोगो कैसे ऐसा तो है नहीं कि सामान नहीं ऐसा तो है नहीं कि सामान रखा हुआ ऐसे मान लेके भाग। इतना इलॉजिकल बात फोटो डाउनलोड करके अपलोड कर दिया तो चुरा के। सुनो इतना इलॉजिकल बात कभी आप छूते हैं ना कि हम सोचते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम ऑल टेफर करके यार अपना नींद पूरा कर सकते थे। साला कुत्ता कहीं का। तुम्हारे Spotify का पैसा भर रहे हैं समझा? काम करो चुपचाप। सॉरी भाई सॉरी ब्लैक स्लेव। ये भाई लेकिन इस बार सब्सक्रिप्शन करने का पैसा सही में नहीं है। क्यों रे भुसड़ी वालों? अबे बुड्ढे बीके स्ट्रीम पे आवाज जा रही है। यही हरकत तो ना अंकल को चटा देता है सब, फिर बोलता है चटा कह दिया। वेंटी मत यूज कर साले। वेंटी मत यूज कर। होगा लूना एक क्या बोला चिराग? अबे फिर ड्रेक के लिए वेंटी चाहिए था ना। अरे दाद तो रहा बहन के घर जाओ इसीलिए तो तू साला रिवाइंड किया था। ड्रेक को फिशर से मार लेंगे, चिंता क्या करते। चिराग जब मुझे लगता है तो क्या करते हो? सो जाता हूँ।
नॉट गर्ल है ग्रेविटी बॉस में ये टीम यूज करने में जो मजा आया ना, हाय से मजा आया। पता नहीं क्या बोल रहा है साला। डीसी चैट देखोगे? नहीं। अरे यार ये हट यार भाई हम एक्चुअली हम एक काम कर रहे हैं भाई, हम थिएटर कर रहे हैं किसी का। वो जो मिंत्रा का लोगों ने कही ये सिलेंडर बहाना बताती हूँ, तो हुआ ऐसा कि एक महिला को गलत लगा किसी ओके, तो उसने केस कर दिया मिंत्रा पे, सो दे चेंज देयर लोगो। उसने पिंटरेस्ट क्यों बंद होगा? क्योंकि पिंटरेस्ट बहुत कुछ गलत है। टाइमिंग को और कम कर सकते हैं, बट स्पेशली हेनरी कैविल कॉर ने उधर चिराग सेन के मुंह में ऐसा क्या देख कि उसके सारे दांत टूट जाए? पत्थर 5 किलो का पत्थर मुंह में दे हमारे लेफ्ट पे। इजीएस्ट का आंसर यही हमको। कौन सी तो भाई? ओह माय गॉड, क्या कर दो? कौन सी तो? साला बिहारी कबाड़। ओ भाई एसी चैट मोमो सेन तुमको अपना लोमा दिखाने को 300 भाई जाई लास्ट में रख लो साला, बाद 200 बात करके बैठा है सीजर वाला। ऐसे क्या बोला भाई? मोमो डायरेक्ट वायलेट करने पे आ गया भाई। मोमो used every language but he chose violence man। क्या कर रहा है भाई? कुछ समझ में नहीं आया बोला क्या, लेकिन अच्छा लगा सबको। इतना समझ में आ गया कि सेन के मजे ले लिया भाई। इसके लिए मेरे को बुलाया था यहाँ भाई। हम पहली बार ऐसा कोई इलॉजिकल बात सुने जो लड़की नहीं बोल रही और हमको अच्छा लगा। बट पहली बार तो ये बोले कि आज का स्टीजियन ऑनस्लॉट फियरलेस होएगा नहीं, ठीक है? What's the benefit of having a motherfucker C6 Buddha? Sorry, don't feel awkward guys, लेकिन I said both lovers if I get that. वो बंदे के पास सीट Okay, but मुझे आइडिया लग गया कि क्यों ऑफेंड हुई थी। एनक्रिप्ट भाई, चिंटू बोल रहा है एनक्रिप्टेड लैंग्वेज में गाली दे के गया। चिराग चैट पढ़ा तो ग्रेविटी बॉस विदाउट प्लंज वो मैं समझ गया कि अबे कुत्ते के खोदो साले वॉम बोल दिया। शांति से बैठोगे आराम करो भाई। वॉम बोल दिया भाई उसको। नाउ लूना इट्स योर वॉम ना भाई, मैं टच भी नहीं कर रहा। यार ये कौन सी लैंग्वेज है ये पता नहीं भाई। अरे मजा आएगा यार तुम्हें सही में। नहीं करना मजा हमको भाई, हमको मजा बस लड़की का। एक मिनट बट सेन तुम तो खुद से करने वाले थे। तुम डीसी चैट देखोगे अच्छे से, तुम थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए देखोगे। कर चुका हूं मैं, अपना फियरलेस हो चुका है, टाइमिंग कम करना है बस। बात करके क्या फायदा जब नहीं एक मिनट अगर कर चुके रिवॉर्ड तो मिल गया होगा सेन, है ना? रिवॉर्ड मिल गया कि नहीं मिला सेन? हां तो टाइमिंग कम करके आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप ये बताइए। नहीं ना, टाइमिंग मेरे घर थोड़ी चलेगा। टाइमिंग कम करोगे तो बीवी भाग जाएगी यार तुम्हारी। क्यों कर रहा है ऐसा? जा रे लवड़ा का बोल देलस। क्यों टाइमिंग कम करना चाहते हो? स्लो एंड स्टेडी wins the race। हाँ भाई, कम से कम 10 मिनट तो लास्ट करना ही चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत लो है। लिटरली 322 सेकंड 100 सेकंड कम था। We are talking about Sen here bro। Fuck you। सेन हुआ खावा C6 लेके बैठा है भाई, ऊपर C2 सिलोन भी किया। बता देखोगे बैप्टिस्ट को कौन ठोका है? न्यूवलेट ठोका है, ठीक है? बाकी सब बस उसका शील्ड को तो तोड़ दिया पूरा। अंधा नहीं हूं मैं कि देख लिया, अंधा नहीं। वॉम्प You know what? तुम्हारे चैट को शायद दिख नहीं रहा होगा। चैट में सिद्धि है और कर आएगी। ये बोलेगे जो तुम लोग ये भी खुद भांगड़ा कर रहे हो, खुद में कर दे रहा हूँ, मुझे मत पूछो। हाइड्रो शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकिन कभी बुरा लगता है अंकल के लिए। हम लोग बहुत वायोलेट करते हैं उसको, लेकिन फिर सोचते हैं डिजर्व करता है बेटी। अरे बैप्टिस्ट पे क्या बोले तुमको? अरे बाय द वे एक कैरेक्टर तो एफके है वो। Bro, second bro. So yeah, I
technically emulate brute force the weapons. भाई क्या प्रूव कर दिया भाई, क्या प्रूव कर दिया भाई? भाई technically emulate से हो गया brute force करके। नहीं तो तुम दोनों का हो गया। तुम दोनों जो भी कर रहे थे क्या आप दोनों शांति से बैठ सकते हैं? अब हम स्ट्रीम पे जाके हराम पर मेरे को बुला के बोलते मेरा हो गया। इधर मैं बैठ के क्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा क्वेस्ट हो गया ये बंदा। बोल देना हो गया, लड़का हुआ कि लड़की हुआ पूछ ले। छक्का हुआ होगा, इसको गार्ड से आ गया है। ये चले ये सेम बड़वा आराम खोर, बड़वा और आराम खोर। और कोई गाली दे दो भाई बेचारे। ना भाई स्ट्रीम येलो हो जाएगी। हाँ अब तो हो गया, क्या ही बचा होगा। नहीं भाई बड़ा जल्दी ये बात realize इस किया है हराम के बेटी को। जने को साले को 4 गाली देने के बाद याद पड़ा है। भाई 4 गाली पूरा इनक्रिप्टेड कोड में गरिया है भाई, मैंड्रिन में गरिया है, फिर बोल रहा है स्ट्रीम काउंट साला चूतिया। चलो शाओ अरे ड्यूरिन पुल वर्थ इट है क्या रे? हाँ एकदम वर्थ इट है, पुल करो भाई। करो भाई मेरा लेवल 50 वाला ड्यूरिंग क्लियर कर रहा है, बाद तुम्हारा 322 सेकंड एंड सेकंड दे दो। मानते क्यों नहीं तुम साला यहूदा पता नहीं क्या बोलते हो उसको पुल के चक्कर में तुम्हारा ड्यूरिन निकला है, तुम्हारा पुल खुद गया है, तुम मानते क्यों नहीं? फिर भी तुम्हारा स्कर्फ के लिए बचा के रखते थे तुम्हारा। अरे भाई फिर भी अरे काफी दिन हो गए थे, सुना नहीं था, अब लग रहा है घर वाली फीलिंग। कंटेंट फार्मिंग हो रही है भाई, अब लग रहा है घर वाली फीलिंग। मतलब अरे बाप क्या हुआ भाई अचानक से? ये कौन सी गंदी हरकत की भाई तुम लोगों ने? बेचारा सेन को भगा दिया। लिखा है कि तुम बोफड़ी वाला हो 1 नंबर का। 1 मिनट सेम पे दिख रही है भाई, मैं नहीं खोल रहा किसी का क्लाउड का डीएम तो और नहीं खोल रहा मैं। क्या भेजे हो? अच्छा हाँ कंट्रा भेजे हो। हाँ मलखाई कन्या भेजे हो। मलखाई होता है बलखा अरे वो बॉस एलईडी के नहीं भाई, नॉट एलईडी ल्यूमिनस। अरे कलवे इतना ना मारो ना तुम फ्रेम बॉय बन जाओगे। किसी को भी नेपाली धरते रहता है भाई आजकल। रेसिज्म नहीं नेपाली कास्टिज्म से है लेके रेसिज्म नहीं। तो फेनवाई बन गया, सच बोलो। अम्मू को प्लान सुनो मिला कि मैं भी जोंगली का ले लेता हूँ, कर खुश होके आ ही जाएगी। होता है मैं भी जोंगली का ले लेता हूँ, कर खुश होके आ ही जाएगी। ये बहुत पर्सनल जा रहा है चिट्टू, चिट्टू बहुत पर्सनल जा रहा है भाई। चिट्टू है धरी दिया उसका जोंगली भाई। आरले लेके जा, एकदम ढोप ढोप कर देगी। आरले ले जा। अरे बाबा चौधरी आरले ले जाएंगे। अरे जरा की तरह सजने का फिर ही बोहड़ी वाला दोनों को तुम्हारा मजा आके मारेगा है ना। तुम्हारी भाभी का पायरो कैरेक्टर 7 एडवांटेज। ठीक है भाई, लेकिन ज्ञान तो आप खोद रहे हैं ना। अरे भाई हमारे पे क्यूट लाली है। ओह हेलो ब्रो भाई ये तो बोले ही ना, हम लोग सफर क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे पास क्यूट लाली है। घूम रहा है। तुम लोग को लड़ना है सालो, वीसी मैं का जाओ चैट में लड़ते रहो, जाओ चैटेड बड़ा तुम लोग। भाई कपल वीसी में सेक्स कर लेना तुम दोनों, हम लोग कोई इतराज नहीं है। हम लोग वीडियो भी देखेंगे बाद में, क्लिपिंग बेस्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नहीं जाओ जाओ चैट में जाके एक दूसरे को गाली गलौज लड़ो साला। फिर यहाँ पे गाली गलौज नहीं करना है बोल के। यहाँ से मैं करूँगा। और 170 आगे ना का तो 55,000 19,000 हट तेरी तो। भाई ये क्रिट एक भी नहीं कर रहे यार। आई थिंक इंगल्फिंग लगाना अच्छा आइडिया नहीं। किसका आइडिया था यार ये इंगल्फिंग लगाने का? ये तेरा ही आइडिया था। चिराग ही होगा। लड़ा मेरा आइडिया। हाँ बस बाप का नाम ले हरामखोर। देखो ये मेरे पे एक थ्योरी है, बताएं थ्योरी क्या? अगर 60 में से 30 सेकंड में इसका आधा एचपी चला गया तो बाकी का 30 सेकंड में पूरा एचपी तो चला ही जाएगा। कैसा थ्योरी है? हाँ ओह माय गॉड, नमस्ते ना, कड़क थ्योरी है। आपने ऐसे खतरनाक थ्योरी बताई, हमारी मुंड फट गई भाई। एज एक्सपेक्टेड है, मेरे थ्योरीज मस्त होते भाई। सोच रहा हूँ कल सुबह बिना नहाया चले जाऊँ ऑफिस।
चल मर जाएंगे सब रेडियो एक्टिव एक्सपोजर के कारण। मेरा डीओ भी खत्म हो गया, डीओ मंगवाना पड़ेगा भाई, ठंड में बहुत काम आता है। छी ससुर, छी 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 छी। अरे फिशल हटा, फिशल हटा और वहाँ पे नहीं डाल। फूफा मारेगा रे बे। अच्छा हाँ भाई, हम आपकी चलते एक काम करो, तुम गेम खेलना सही बात बोल रहे। वो धुरंधर मूवी देखेगा किसी ने? धुरंधर मूवी छोड़ देना गेम खेलना छोड़ देना। नहीं मैं तो इसके चैट पढ़ रहा था। अच्छा किसकी चैट की बात है? गेम खेलना। अच्छा नेपाली की। ओह माय बैड ब्रो, माय बैड। क्या फायदा वैलोरेंट खेलने का? गेम तो लग नहीं रहा। Just like her bro. पर ये भेप काहे नहीं कर रही है? I mean mid. Major movie show पे based है, I was thinking to watch it. पता नहीं यार। Based है। मैं तो Stranger Things के इंतजार में हूँ यार अब तो। हट femboy कहीं का। Stranger Things क्या देखा? नहीं भाई, the only thing I love in Stranger Things is Millie Bobby Brown. femboy माइनर है वो। नहीं भाई माइनर नहीं है। है भाई। She is older than me. माइनर। आप माइनर है? मैं माइनर नहीं हूँ भाई, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, देखोगे? भाई पता है 18 साल का हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद, मेरा फ्लेक्स था भाई। मैं मन पता है क्या फैंटेसाइज करता था कि अब मैं बाइक चलाते हुए कहीं जा रहा हूँ, पुलिस वाला रुकेगा, बोलेगा लाइसेंस दिखा, मैं उसको मुंह पे फेंक मारूंगा ले, और आपके मुंह पे फेंक के डाल देगा अपने वाला ले। दोनों ला हो जाएंगे। वो जो फ्रीडम वाली फीलिंग थी ना भाई, पहले डर के बाइक चलाता था, उसका जो फ्रीडम वाली फीलिंग थी क्या बताओ भाई, मजा आता था। ब्लैक पीपल बिफोर 1990। मिली बॉबी ब्राउन तो मिली बॉबी, खैर छोड़ो। भाई बड़े लोग भाई, बोलो स्ट्रेंजर थिंग्स देखा भाई इन्होंने, बड़े लोग हैं भाई ये लोग, मैं कैसे बात करूं इनसे? अगर मम्मू एक बोना पुल कर रहा है तो 3 मोमो मिलके कितने और जोन का पिलर से आ सकता है at 2 किलोमीटर पर आवर? What the fuck? फिजिक्स पर नहीं पढ़ रहे भाई, अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाद में बताएंगे जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। 2 किलोमीटर पर आवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दिया साला। जो उड़े उसकी मेजर है उसकी। अरे साला नीचे नहीं आ रहा, अरे साला रे भाई मेरे ही मजे ले गया भाई ड्रेक। ओ भाई ड्रेक, अरे पता है दिक्कत क्या हो रहा है? क्या? हुटा हुआ क्रिटेरा करते हैं साली पगली। करा हूँ सॉरी ना मलवा है, कैसे कराई? अरे उंगली डाल के ना मैच ना आंडले ले जानी पड़ेगी क्या भाई? तो गांड फट जाएगा आंडले ले जाएंगे तो। यूज योर फिंगर्स ब्रो। क्या? हाँ बैगन। क्या? बैगन कद्दू का है? ये कद्दू मुझे पसंद नहीं भाई, बैगन भी पसंद नहीं। खीरा? नहीं वो भी नहीं। बैगन स्मूथ होता है नहीं, इसलिए पसंद है क्या आपको? अरे लूना वो हाँ भाई बंदे का नाम भूल रहा हूँ यार, वो क्या है निशी करके नाम है ना गेम पे, जिसका 2 सेकंड है। कौन है पता नहीं यार, गेम में वही नाम है उसका। जेबिन भाई। जेबिन ये निशी कल ये बात नहीं को बताता, निशी बोल रहा था। गाना वाल देख ऐसे आज एक बच्चा रेडिएट करेगा, आज एक बच्चा दिमाग चट के गया, अब एक बुढ़ा चुदेगा। चिराग को लॉकी पसंद है। चिराग सुनो ना साले महंगे सी शकल के हरामखोर। आहा क्या बोल दिया? चल लड़कों को स्टैक कर रहा है, स्टैक लिखा है भाई। ये कौन सी अंग्रेजी है जो हमें नहीं पता चला? ऐसे ने तो काफी क्रेजी करती है। अरे कौन है रे? कौन सी हर रहा है रे बाल बुतरू ले?
इस सेन ने तो काफी क्रेजी कर दिया बोलता। कौन क्रेजी कर दिया भाई? कौन है भाई ये? कौन है वीसी पे? कौन है? नेपाली है। मैं हूँ। तुम्हारा बाद में ये जो अधेड़ू मेरे नपुंसक बोल रहा है ना कि मेरा मैनेजिंग नहीं हुआ, जाके अपना आंख चेक करवा के आ जाओ। अधेड़ू मेरे नपुंसक तुम लोग का लड़ना है ना, आराम करो। बीसी से भाग के लड़ो। मैं बोल रहा हूँ बहुत मारूंगा साला, बहुत गाली दूंगा। मैं बोल रहा हूँ अधेड़ू मेरे का क्या नेपाली? नपुंसक। देखो तुम लोग को लड़ना है भाई, तुम बीसी से भाग के लड़ो, आराम करो। यहाँ नहीं लड़ो। नपुंसक। सेन तुम भी आगे कुछ बोलो, क्लिप फार्म होगा। नहीं भाई मत करो। भड़काऊ बयान दो। सालों का खड़ा नहीं चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई रे। अरे बाबा मोमो लड़कटा मोमो चलता है, लगता है इसका बस मुंह ना ब्रो, लेट इट गो, मजा आ रहा है। दोनों एक दूसरे को अब अगर वीसी में आया, दोनों एक दूसरे कुछ बोलने के लिए, मैं बोल रहा लेजिट अब बाहर जाके कितना गाली दूंगा ना भोसड़ी के, बगल का पीछे वाला मेरा कंप्लेन कर देगा। What the fuck? ये लोग जो नाम दे लड़ाई होता है नहीं मंच पे चढ़ के, ये साले स्टेज पे चढ़ के भाई एक दूसरे गाली आ रहे हैं। एक आया स्टेज पे गाली देके गया, फिर दूसरा आया, नहीं वो वहां से गाली नहीं देगा उसको, क्योंकि सबको सुनाई नहीं देगा। तो वो स्टेज पे आया, बकायदा माइक पकड़ा, तब गाली दिया, फिर वो गया। हराम खोर, लड़ रहे हो, नाटक कर रहे हो, हराम करो। ऐसे ही दोनों को मियाँ बीवी नहीं बोलते। अरे रुको अरे भाई माइक पकड़ के बकायदा कर दीजिए। माय गॉड भाई, जॉ भाई मेरा जॉ घसक गया भाई हंसते। बहुत दर्द कर रहा है। चिराग को स्टेज बना। अबे हरामखोर, मैं स्टेज नहीं हूँ बेटी। चैट देख सेकंड लास्ट चैट। सेन बोल दो मोमो तेरे को बिजली की तार चुका देंगे, मोमो फ्राई हो जाएगा। दो चार लोग कम थे क्या जो बॉडी वाला बोलता है चिराग को स्टेज बना दिया। चुप हो जा भाई तू। कैसे चुप हो जा भाई, क्या बोल रहे ये लोग? मेरा जॉ भाई, मेरा डिस्प्लेस हो गया जॉ लिटरली। तो रुक तेरा जॉ ठीक करता हूँ। ए बड़ी है दूरी रहना, आप हमसे 4 गज की दूरी बना के रखे। वाह ने कहा छोड़ो, इस बार अगर आपको एक गाली दिया I'm gonna kick your ass। क्लाउड देख लो। अब दूसरा को भाई किस्मत ने तो मार के ही रखी है, तुम लोग मान लो भाई। इतना डिप्रेस यार, भाई डिप्रेस करोगे। 1 किलो सिरका प्याज लेकर जा रहा हूँ, पता है? सिरका प्याज ठीक है, बंदे के बाद डिप्रेस होने का एक रीजन। कहाँ लेके जा रहे हो? अगर एयरपोर्ट पे पूछेगा क्या लेके जा रहे हो तो क्या बोलोगे? प्याज लेके जा। कह रहा है फॉरबिडन ड्रग है भाई, तुम्हें पता नहीं होगा। ये खा के देखो कैसे नशे होते हैं। व्हाइट एंड ग्रीन ऑनियन मिलता है भाई। क्लाउड प्याज स्मगल कर रहे भाई दूसरा देश। भाई ओनली प्याज नहीं है, मैं ये भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, सरसों का तेल। सरसों का तेल। अरे क्लाउड प्याज कम अजीब था जो सरसों का तेल बोल रहा है आप। ओह माय गॉड, वो तो कुछ नहीं है। 350 एक्स्ट्रा यूरो देके पर महीना ऐसा लिया हूँ जहाँ पे गैस कनेक्शन है मेरे को। मतलब क्या बोलते हैं, इंडक्शन का खाना पसंद नहीं आता। क्लाउड के नखरे बढ़ते जा रहे हो। अरे भाई सुनो ना यार। अरे सुनना लूना बोलना माधव, बोलो ना भाई, तुम सुन तो रहे। सुनना कर। इधर एक 27 साल के बुड्ढे को फिर आया साला हलवा सिखा रहा है कैसे बोलने को।
तेरी गांड क्यों जल रही है भोसड़ी के? तू काम करना अपना। हाँ भाई बोल रहा है कि मेरे को सिखाने के लिए, मतलब मेरे को ऐसा बोलने के लिए। चुप मत। यही इज्जत है भाई तुम्हारी। तो ये बोलने ये के तुम लिए कपल्स का काम अपना किया मामला है। कपल्स का एनीवेज भाई अंदर का मामला है भाई। इग्नोर दैट बुलशिट। क्लाउड भाई हाँ, ये बोलो क्लाउड कि को रेफर प्याज बना और रहे हैं। सरसों तेल का क्या हुआ क्या? क्लाउड के चुतिया बनाएगा। देखो एक दूसरे के चुतिया मुंह को दांत के यूरोप में लौके छील लेता है ठीक फिर है वो ना, लोग। यूरोप में सरसों का तेल बेचना बैंड है, कोई बेच नहीं सकता। इवन चावल भी सोच रहे थे 1 किलो ले लेंगे, लेकिन बासमती चावल एटलीस्ट मिलता है उधर। उधर खाली बासमती चावल मिलते हैं, इंडिया से बासमती चावल मिलते हैं तुमको। सोना मसूरी फ्लाइट से जा रहे हो ना, ट्रेन से थोड़ी ना जा रहे हो कि भैया कतई चावल की बोरी वोरी क्या है, झोला लेके जा, क्या है ये? अरे एक्स्ट्रा लगा इसका पैसा लगता है ना भोसड़ी। इतिहाद में जा रहे हैं। अरे बड़ा अजीब हो गया ये सीजन अचानक से। आई मीन इतिहाद में जा रहे हैं ना, तो इतिहाद में 50 किलो तक अलाउड है इंटरनेशनल फ्लाइट। दैट्स गुड। तो इस लौड़े को एकदम पता नहीं है इतिहाद क्या होता है। पता कैरी नहीं कर रहे, ठीक है। वो एयरवेज वो वाला क्या बोलते हैं, अबू धाबी वाला। हाँ, तो देखो ज्यादा कपड़ा लेकर नहीं जा रहे। मेन रीजन भी कि यूरोप में ये सारा कपड़ा नहीं चलता, ठीक है ना। ज्यादा मैं टी शर्ट में चलता हूँ, वहाँ पे तो कोट वोट खरीदना ही पड़ जाएगा मेरे को, तो कपड़ा ले जाने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी अभी ठंडी है, वहाँ बर्फ गिर रही हो। हाँ वो 2 लीटर तो ठंडी है, वहाँ भी ठंडी। 2 लीटर सरसों का तेल लेकर जाएंगे, ठीक है। खाना वाना बनाने के लिए मेरे को तो चाहिए वही, थोड़ा सा चाहिए। लेकिन पूरा 5 लीटर का पूरा कैन ही उठा लीजिए ना सीधा। 5 लीटर थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा भाई मैं तो पता है कसम से ना, फ्लाइट वगैरह पे ट्रेन वगैरह में कभी तेल और अचार लेने जाने का सोचो भी ना। अगर स्पिल हो गया तो और लॉस। अबे साला ये ज्यादा मजे ले रहा है मेरे ना। सुनो, तुमको याद है वो वाली फीलिंग जब तुम घर से बाहर निकल रहे थे? वो वाली फीलिंग अभी मेरे को आ रखी है। छोड़ रहा हूँ साला। चिराग डरा गया। Must have been the wind. नहीं भाई, लेकिन मम्मी अचार नहीं दी थी। मम्मी नहीं दे रही है मेरे को, मैं खुद ले रहा हूँ। देखो जिम्मेदार बनो चिराग। I can feel you, क्लाउड। वो अचार क्लाउड आपको फील कर पा रहा है। क्लाउड इस पास मत जाने दो। होने का खतरा है उसमें, ये तो सील्ड है पूरा कैन, सो भाई ये स्पिल कोई ना। ये क्यों पापी मुन्ने नहीं हो। देखो प्योर सिल्वर का लक्ष्मी गणेश लेकर जा रहा हूँ, ताकि मतलब जिंदगी में बरकत मिले। अपने रूट्स को नहीं भूलता मैं। सिरका प्याज लेकर जा रहा हूँ, 1 किलो के ऊपर है, ठीक है। खस्सी का जो लक्ष्मी गणेश है ना, उसको अपने वॉलेट में रखिएगा सेफ एंड साउंड करके अच्छे से, तो ज्यादा वहाँ फायदा मिलेगा। आप गाली देंगे हम। वॉलेट में देखो, वॉलेट में सिल्वर कॉइन है, ठीक है ना। उसको रिप्लेस करूंगा गोल्ड कॉइन से। मैंने आज तक तो बस स्टील के सिक्के देखे। तो चल लोहा का होता है। 1 ग्राम का होने से 1 ग्राम का स्टील का सिक्का देखा है ना, क्लाउड से भी ज्यादा रेयर है फिर तो। अच्छा स्टील का सिक्का कब से बनने लगा भाई? जो भी स्टील लोहा जो भी रहता है भाई, लेकिन अभी तो फिलहाल वो भी नहीं है। स्टील नहीं है, वो टीन से बनता है। टीन से गोल्ड का एक्चुअली में सही भी रहेगा, क्या सिल्वर चिंटू बोल रहा है क्लाउड काला पड़ जाता है। ना काला तभी पड़ेगा सिल्वर, जबकि तुम वो लेगा, क्या बोलते हैं उसको? जो हो रहा है चिराग। अरे हो गया वैसे क्लाउड स्ट्रीम पे आवाज आ रही है क्लाउड सब कुछ। आओ घंटा फर्क नहीं पड़ता क्लाउड भाई। ये हाँ तुम तो बेशरम हुई। नहीं एक तो रखना चाहिए, एक तो रखना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ वो तो रखना चाहिए। और ये बताइए, और सोना चांदी कितना ले जा रहे हैं? एक कॉइन ले जाऊंगा, एक लक्ष्मी का, एक गणेश का। और लक्ष्मी गणेश का वो मतलब एक 50 दोनों दो मूर्ति लिया हूँ। 50 ग्राम है, एक चांदी है। दिखा तो था तुम लोग को लिमिट है।
बात ये है ना करोड़ों भाई कि आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, हमारी फट इसलिए रही है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का जो रेट है ना वो सोच के, और आप जो बता रहे हैं ना उसको सोच के भाई 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 अब अगर यहाँ पे एयरपोर्ट फाइनेंशियल वाले क्लास चालू मैं में तो बोल दे थोड़ा रहा हूँ भाई, नहीं मैं सबको तो मिट थोड़ा मार वो दूंगा। मतलब अंधविश्वासी हूँ, ठीक है ना। और जिंदगी में बरकत के लिए हाँ इतना तो करना ही चाहिए भाई, नहीं तो नहीं, आप विश्वासी है वो अलग बात है, एयरपोर्ट वाले विश्वासी है कि नहीं कि भैया अच्छा चल रहा बोल रहा है कि भैया गोल्ड This स्मगल guy कर रहा when है। you epic account bro. मगर क्या मतलब 10 ग्राम से नीचे है ना। यस, और आप 50 ग्राम का मूर्ति ले जा रहे हो। सिल्वर भाई, वो सिल्वर, गोल्ड नहीं। सिल्वर, अच्छा मेरे को लगा 50 ग्राम गोल्ड ले जा, मतलब बहुत हाँ उतना नहीं शानदार। खरीद सकते, मतलब इतना भी पैसा नहीं मेरे पास। वह बोला भैया 2 हम तो ग्राम भाई पैसे वाले। नहीं 2 ग्राम सोना है, ठीक है, बाकी 50 ग्राम चांदी ही है। चलो फंटास्टिक। RF9CW उधर प्लेटिनम का प्राइस सस्ता है, उधर प्लेटिनम खरीद लूंगा। RF9CW एक रिंग ले लूंगा। आप समझे अब क्या बोल प्लैटिनम का रिंग ले लीजिएगा और यह ज्वेलरी यूजर ने बोला तो उसका पूरा इतने हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं। और अगर एक और चीज है, अगर ले सके मिल सके तो ले, तो मुश्किल है मिलना। सेन की गांड में लेते जाना भाई, साथ में बोल रहा हूँ ये बहन का लवा बहुत क्लाउड सेन को भी ले जाओ बच्चों, हम लोग के पास अपने साथ ले जाओ, ये बहुत चाट दिमाग चाट दिमाग दोनों चाटता है साला। बोल रहा सेन को उठा के ले जाओ अपने साथ। क्यों भाई क्यों कर रहे तुम उसके साथ? यूजलेस है। चिंटू बस में लटक जाते हो, मैं कौन सा रिच। स्टिल बेटर देन मोमोस। बस में लटक अरे जाते हो। बस में लटको नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ वो मूवी याद है, रोबोट मूवी, कैसे वो ट्रेन पे दौड़ रहा था ना, जब ट्रैफिक जाम लगे तो तुम भी एकदम बस के ऊपर ऐसे दौड़ के जाना। बॉडी वाले ये कर ले, बस देखना है हील फिसल ना जाने, तो टांग और हील दोनों नहीं बचेंगे। हील बस में छेद हो जाएगा, प्रेशर करो। स्ट्रीम का लिहाज कर रहा है नेपाली, सुनो कुछ बोलेगा साला। स्ट्रीम का लिहाज करते हो, देखते क्या। मैं वही नहीं बोलूंगा वरना स्ट्रीम खुद है। बोल भाई ये इलीगल मूव है भाई। At this point वैसे कुछ नहीं कर सकता भाई, गुगू क्या हो रहा है उसके साथ। हम तुम्हारे साथ घुघु कर देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इतना छोटा है सेन का, पता भी नहीं चला। बोलना मत उसको, कर मेरे पास है अटक के वही। इतना छोटा है सेन का कि गुगू क्या कर देगा पता भी नहीं चलेगा। वनस्सी लो ना, हैं वनस्सी भेजो ना तुम्हारे चूचे अभी उड़ जाएंगे हवा पे। फोटो @gamers मेरे सेन के चूचे भी थे इस फेस। इसका इतना जितना मीम हो सकता है पार्डन गुगू गागा। हाँ पार्डन बोल रही है भाई, ये भाई छोड़ो भाई, अमीरों के बीच में आ गया भाई। पार्डन बोली भाई, वो पार्डन मी सर, पार्डन बोली भाई। अरे बाप रे बाप, पार्डन। ओ माय गॉड ब्रो, खत्म करना भाई मेरे को सोने भी। अरे मेरी खुद की गांड फट रही है यार कि होगा कि नहीं होगा। 12 घंटे खत्म कर 12 घंटे स्ट्रीम करवा के मानेगा क्या मेरे से? हाँ तो भाई कल ऑफिस जाना है यार। आप ही जाइएगा? हाँ अभी तो धीरज का भी करना है, भूल गए? नहीं कल करना हो, आज नहीं होगा। नहीं भाई अब तो आज ही होगा। आपकी जी मारेंगे पटाख। अच्छा मेरा वाला ज्यादा अच्छा था 5 मिनट, ठीक है। भाई दोस्त है ना, अगर मौका मिले तो इसी अपना मतलब अपना टीएम देख लेना, कुछ भेजा हूँ। फिर से नेपाली को करेगा। क्या भेज दिया ऐसा? गुआ क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कब हुआ? जब तुम नहीं हुआ था तब हुआ।
और a loss. भाई क्या क्या है? मैं वीसी में आने की कोशिश कर डी से बोला भाग तेरी महंगी वाली मेंबरशिप ले आ जाइयो। तीन बार क्या हुआ मोमो के साथ? वही अनेबल टू फाइंड। क्या हो गया? पॉइंट नहीं ऐड हो रहा क्या मोमो? मैं तो बोल ही रहा था, लेकिन आप तो सर बहुत तेज आदमी हो। ऐड नहीं होते क्या? अरे वो पूरा का पूरा यूजर नेम लिखना पड़ता है। गोले की स्ट्रीम का भी यही हाल है क्या? अच्छा, ये पॉइंट्स ऐड नहीं कर पा रहे। गैमल तो पहले से था, अब ड्यूअल भी ऑफ हो गया। भाई आज सेन नहीं भाई, ये सेन तो नहीं हो सकता भाई। तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ कैसे बोल दी बे? I think we just lost an amazing gambler today. हाँ? कौन? सिद्धि चिराग को बोल दो वहां से ऐड कर देगा भाई, उसमें बहुत मेहनत है भाई।
Mine to wield. मुजान के डेलीज ये भाई आयाटो मेंस इतने वॉम पॉम काहे करते हैं? मुझे क्या पता भाई, पूछो उनसे काहे करते हैं। Everybody stand back, get to work. Light up the blazing sun. Incinerate. Try and क्या ही बोल सकते हैं। कब तक स्टीम होगी भाई? जस्ट अब मैं डिलीट करूंगा स्टेटमेंट। teamwork is trim. Show no mercy. Eat Lolene, eat Papa. Get pyroclastic surge. नहीं भाई, नहीं भाई, मैं उतना तो लंबा स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा। फिर थोड़ी रिकनेक्ट करेगा तो बोल ले फिर। देख लो जैसे which one is better? Physics art, अरे यार C0 मोविका विद प्रीमियम टीम, C0 आरोन मोविका विद प्रीमियम टीम ज़्यादा तुम्हारा कंटेंट क्लियर कराएगी। Light it up. Everybody stand back, fulfill our pact. Suffer the wrath of Eve. Wrath from the skies. Off we go. Teamwork is trim. You two. Time to light up the blazing sun. क्या? नहीं हो रहा। 11:15 11:14 एक्ट 7 तक ही हुआ भाई। मैंने बोला था तू ड्रैगन्स बिन ला के जाता है, उस पे हो जाता काम। Let's light it up. Going in. Eat Lolene, eat Papa. Pyroclastic surge. हाँ से मेरा भी एक्ट 7 पे जाके अटक गया तुम्हारा भी। करना है ना भी धीरज के अकाउंट में तुमको? धीरज के अकाउंट में करना है तुमको 12 स्टार अभी? अभी नहीं, कल। क्यों भाई? Yeah. You two. Time to light up the During. blazing sun. वाओ, विदाउट सपोर्टिंग कास्टिंग कर रहा था। वेरी गुड। तो मेरे को लगा 10 तक। Try and stop.
मुझे टाइम नहीं मिल रहा आजकल, शायद संडे को वापस ट्राई करो। करो बिजी लेडी। कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, देख रहा है ना, तेरा अकाउंट खेल रहा हूँ। Bring it. Let's light it up. Teamwork is dream. Show no mercy. Wrath from the skies. जिबाई के हिसाब से लॉक करना। जिबाई कुछ मिले तो एटलीस्ट डबल क्रिट तो मिलना चाहिए ना भाई। डबल क्रिट एक भी नहीं मिला। तेरा फेयरलेस करूंगा बाद में, ठीक है? आज नहीं कर रहा, तेरा फेयरलेस करूंगा बाद में। अभी है ना टाइम, चिंता मत कर। तो अटेम्प्ट करने जा रहा है कि बंद करेगा तू? हेलो कमोई, वेलकम बैक। फेयरलेस डायर हो सकता है इस अकाउंट में, डायर हो सकता है इस अकाउंट में। क्या बताएं भाई, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ भाई। नहीं भाई मुझे नहीं आता। सिग्मा 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 बॉय, सिग्मा बॉय। सिग्मा बॉय। मेरा स्ट्रीम पे आवाज जा रहा है क्या? मतलब मेरा स्क्रीन का शेयर का? ऑब्वियसली वो गंदे गाने बजाने का मन कर रहा था। नहीं भाई देखो क्या लगता है, क्या मेरा थिएटर तो 10 मिनट में कर दिया था ना। अरे बोका, तुम्हारे पास खुद की मूवी का थी यार। हम डर ही लिए थे सपोर्ट में भाई। अबे तो आर मत कर बोलना साले, 10 मिनट में कर दिया था ना। चल अभी 10 मिनट और है, 11:30 तक में तो ये कर लिया तो ठीक है, तो फिर मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगा। अब देखो भैया, लेकिन करके जाइए तू ये आज। जी अब देखो भाई, अब तो मेरा खड़ा हो गया भाई अरमान। थिएटर का तेरा भी थिएटर नहीं हुआ है? किसका? मेरा खड़े अरमान को हम दिखाने जानते हैं। तेरा के मुजान बुजान। अबे भाई थिएटर के लिए मेरे से मत बोलो करो यार। नहीं भाई, मैं 3 थिएटर ज्यादा नहीं करने वाला। इट्स लाइक थिएटर में अजीब सा वो प्रेशर आता है जो कि नॉर्मली नहीं आता दूसरे का अबिस वगैरह में। इसीलिए तेरा दिमाग खराब होता है। एक गलती होगा ना तो पूरा भुटा जाएगा, जैसे अभी हुआ। एक हम हुटाओ पे वेपन गलत डाल दिए, पूरा थिएटर खत्म हो गया। तो मस्त फिगर आएगा लूना पे। Yes guys, you can pay me to do that. Fucking hell. Die, you stupid bitch. टोर्नेडो क्यों नाम है इस चूतिया का? मुझे क्या पता, जापान बहन से पूछ ना बेटे, तेरे को पता नहीं क्या क्या सुना दूं। तो उसके पास C6 मौलानी है, क्या बात है भाई। है चैट में, मतलब VC में है। फिर मोमो का गान लेने के पीछे तुम मादर। अबे यार नॉर्मल बातचीत, नॉट एनी बुलशिट। चलो निकलो तो। अब मैं सबका परमिशन गायब कर रहा हूँ यहाँ डिस्कॉर्ड। अरे नहीं होगा, प्यार से बोल रहा है चिराग। बहुत प्यार से बोल दिया भाई मैं।
तुम लोग सालों मानते नहीं हो, हराम खोरो। वीसी में आके गाली गलौज करते रहते हो, लड़ते रहते हो चुट्टो। अरे बाप रे बाप, खुद डाग लोग सुनते ही नहीं कहते। 59 की मेंबरशिप का क्या फ़ायदा है? चिराग ट्वर्क कर दोगे? इतनी सस्ती मेरी ट्वर्क है, 60 में ही हिला दूँ। एक मिनट, मतलब ट्वर्क कर दूंगा। हट साला, बोला कुछ और सोच के था लेकिन मीनिंग कुछ और ही निकल गया। हट। हिलाओ हिलाओ भाई, हम दूध पी लेते हैं, मेरा दूध गंदा हो रहा है। देखो मैं कुछ बोल नहीं, मेरे पीछे पड़ा है, बचा लो मुझे। नहीं भाई, ऐसे लात मारूंगा ना, ऐसी लात मारूंगा दोनों के पिछवाड़े पे, दोनों के पिछवाड़े पिचक जाएगा। कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा। अच्छा लोग था ना चिराग। कितना लोग टर्क के? 1 लाख। चलो Imagine she actually sends it. अगले दिन चल छोड़ के भाग जाए। जैसी पैसा आएगा ना, टर्क की बात करिएगा, चैनल डिलीट कर दीजिएगा। एक अब लैपटॉप आ गया। बड़े फायदे चोद किस्म के लोग हैं। गाली मत दे भाई, हो गया बहुत गाली बकली है भाई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, कंट्रोल कर ले आप। साला स्ट्रीम पिला कराए क्या मिलता भाई? कुछ नहीं। अरे आपको 60 रुपए तो मिल ही जाएगा 3 मेंबरशिप का, टेंशन यहाँ का है रे। 2 रुपए ऐड के कहाँ से? बकचोदी तो कर। देखो जिसको लड़ना है चुपचाप चैट में बैठ के लड़ते रहो, और जो भी अपना चैट रेट बढ़ेगा। हाँ चैट रेट बढ़ेगा, एटलीस्ट सजेशन बढ़ेगा स्ट्रीम का। चैट में बैठ के लड़ते रहो। वीसी में आके लड़ोगे सारे दोनों को परमिशन हटा दूंगा मैं। घुसने नहीं दूंगा वीसी में, फिर करते रहिए आर फिर। भाई हम माउस पैड पे दूध रखे हुए हैं, ठीक है, और माउस बड़ा एग्रेसिव यूज करना पड़ता है हमको लो डीपीआई के कारण। इमेजिन एक टच और मेरा माउस पैड अंदर नहीं, काला सुजला हो जाएगा। चॉकलेट मिल्क है भाई, डार्क ही रहेगा। What the hell bro? Can I not get Vanny? I want Vanny. जबरदस्ती तेरे को मावेगा तुम्हारे भाई। मिस्ट्री खींचे। हाँ लड़ो, बेसिक कॉम्बैट फाइट्स काफी देख लिया, चलो फाइट दिखा दो। The fucking audacity dude. एक्ट 4 में 6 मिनट ही बचा है, 1 मिनट में एक्सप्लोर करेगा तब जाके काम होगा तेरा। वो तो नहीं होने वाला। नहीं अय्या की भैया 3 मिनट दो तो इसी वाले में लगने वाला है। मेरा वाला तो बड़ा इजी क्लियर हो गया था भाई। अरे आपके पास कैरेक्टर्स थे भाई स्पेसिफिक जो कि एक्चुअली डैमेज दे रहे थे। अय्या की भैया किसके सही है? बरखाती सैया। छी साला मेरा कॉपी करता है। ऊपर से बस के अटैक्स आए हैं, द एड्रेनलिन रश। ड्रिल बॉस नीचे से ना कोल्ड तो मजा आएगा बहुत के अंदर ऐसी क्रिएटिव। व्हाट द हेल? कौन अजीब से आइडियाज दे रहा है? ड्रिल बॉस के से ना कोल्ड लेटा है। ड्रिल बॉस भाई, बॉस का नाम तो बड़ा बढ़िया रखे भाई, ड्रिल बॉस। अरे वरीसा ड्रिल कर रही थी ना, बॉस के ऊपर ही चढ़ के घूम एकदम प्रेशर मार दी होगी ना। मशीन दब गया था भाई। वरीसा का रीसेट बटन दब गया, बूटी चिकानू छेद हो गई। शिवदाई गड़िया वो इनवीसी बूटी चिकानू छेद ऑलरेडी होता है ना चिराग। हाँ गाड़ी आओ अब बस 2 बटन दबेगा, दोनों के दिख जाओगे। सर्वर नहीं दिखेगा तुम दोनों को। अब किसका बात हो रहा है पहली बात? अगर गाली गाली देना है किसी को भाई, वीसी से निकल के गाली दो, या दूसरे वीसी में गाली दो। व्हाट ये कैसे हो रहा है भाई? ये शाओ बिना के इस टीम को देख रहे हैं, साला 50,000 प्लंज कर रहा है। व्हाट द फक? हेक्सेन मोनाइस हेक्सेराई कहां से आया इसको? आकाश लियुआ का मेंबर है भाई, हेक्सेन कहां से मिल रहा है इसको? क्या बोल रहे हो आप भी? अच्छा हाँ भाई, मैं भी क्या नशे करके बैठा हूँ। छी भाई ये क्यों किया आप? भाई वो बंदा अपना चक्री घुमा के वो निश्चिंत था, वो चल के उसके अंदर कूद गया, वो इलीगल था भाई। वो गलत मूव था। कह रहे हैं कि भाई you can't touch me bro, I have fire around me. I was like लिबास। oh shit अब दिक्कत होगा।
कुकी बना शाओ, दिस शाओ इज फ्रॉम अब खड़ा म्यूसा। ही नहीं होने देंगे सब, नीचे लिटा के रखें। ओह, ये लोग सीरियस ले लिया। एक समय था भाई जब हमें भी लोग पूकी बोला करते थे, लोग नहीं इंसान, टूटा हुआ। पूकी ने बोला लूना को पूकी। My mom's kinda home. कुकी ने बोला लूना को पूकी, बाप रे बाप, छी यार। देख लिए देख क्या देख लिए? मोमो का चैट, वो तुम और सेन समझो कि तुम दोनों क्या किया एक दूसरे के साथ। संभोग तो किया है साला, उसके अलावा कुछ किया भी नहीं है। तो ये लोग उड़ कैसे रहा है मोटा साला? चिराग आपके ऊपर जाते के लोग थे। अरे मोना का एक जरा एक्टिव तक नहीं है, कुछ भी बोलता है गंजी। Always have an answer to a fucking question. कर लिया फार्म हो रहा। पता नहीं क्या क्या बोल दिया साला। एंड्रू टेट की तरह एकदम तुमको भी कॉन्फिडेंस से दिखा बोलता क्या है। शाओ का वो देखा, मास्क गायब था, ट्रांसपेरेंट हो गया। अरे मोना कार्ड के कारण ऐसा दिखता है चूतिया, मास्क गायब था, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। इंसान तो बड़े अजीब है भैया। अरे सबकी आते नहीं, मेरी जाती नहीं। उसको कब्ज बोलते। मुझे बवासीर है। सेल्फ ग्लेजिंग, मुझे बवासीर। लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। सेल्फ ग्लेजिंग भाई, आज तक किसी को बोलते नहीं सुने, मुझे बवासीर है। भाई सेल्फ ग्लेजिंग, क्रीम क्रीम चामुंडा है सारे डर्स के। What the fuck? क्रीम क्रीम होता है भाई, वो क्रीम नहीं होता है। मेरे पापा भी करते हैं मादर। अरे ये जिंदगी एक कौन चूजे लोग से पाला पड़ा हम लोग। मुझे क्या बात, तो ही उठा के लाया। अबे मैं कहाँ से उठा के लाया? व्हाट द हेल, मेरे क्रिएशंस नहीं है भाई ये लोग। To be honest, you know what? My ass is kind of sweaty. So what? Lick it. अच्छा आइडिया। क्यों बोलता हूँ? आज तू बातें करा लो बस। Smells like a horse cum. How do you know the smell? Sydney.x said, bye bye guys, good night. Sweet dreams ribbon. Good night, good night. मुझे गाना से खत्म होने को नहीं आया। Toxic.x said, good night emoji lob. मुझे लॉब है? सेन ट्रिमर नाम की चीज यूज किया करो। है उसका झाड़ कट जाएगा यार, मत बोल। झाड़ के बीच में छुपा हुआ छोटा सा पेड़। झाड़ के बीच में छुपा सैपलिंग बोलते हैं उसको। सेन के सैपलिंग से सैप नहीं निकलता भाई। ऐसे छीका है कर रहे हैं आप। ऐसे खुद इतना बढ़िया आदमी है जो एक गंदा बात होती है, छी डिस्गस्टिंग, तुम लोग कितने गंदे हो, ओह माय गॉड।
सबको आते नहीं और सेन की जान क्या क्या झ से कुछ सुनाई दिया हमको। जाते नहीं। हमको सही सुना। If I cut, then it will risk growing ingrown follicles. बड़े ज्ञान चुदाऊ लोग दिख रहे हैं आजकल भाई चैट में। सेन इतना टाइम 12 में पढ़ने पे लगा लिए होते, आज डॉक्टर होते। Oh damn bro, you violated his ass. ना स्टार्ट तो नहीं हो रहा भाई। हो सकता था लेकिन वो क्या है ना, रोटेशन की तो मैया और बाप दोनों खुद। जो रैपर था ना वो बाइलिंगुअल था, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं करता भाई, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी कर दिखाता है भाई। अच्छा आदमी था बेचारा। लमेंट लेमन तर मैया। एक सेकंड के बीच में स्क्रिप्ट गड़बड़ हो गया। एक तो शाओ बार बार सेन और नेपाली का नाम लेते रहता है यूजलेस बोल के। हट ये देखो फिर से बोला। भाई टॉर्टो टॉयज को देखो भाई कैसा घूम रहा। टॉर्टो टॉयज क्या होता है? टॉर्टो टॉयज हम भी वही सोच रही है। टॉर्टो टॉयज कौन से पोकेमॉन का नाम? टॉर्टो टॉयज साले प्यारी के बार। सही है भाई, हम थोड़ी देर के लिए सोचिए कौन सा नया पोकेमॉन। टॉर्टो टॉयज चैट। ओह गॉड। चिंटू के जा चिराग इस ज्ञान रूपी कीड़े के रही बराबर। हट साले कुछ भी बोलता है भाई आजकल। इतने शुद्ध हिंदी ले कैसे लफ पढ़े नहीं पाए मैं। मिलावट करो बीसी। क्या ये सुनो ना, लगता है आंड वाली को बुलाना ही पड़े। The girl with balls. The daddy. छी डिडी पी डिडी। बाकी सारे फालतू कैरेक्टर डाल दो। यहाँ पे कौन फालतू दिख रहा है रे बाहुड़ के? भाई बेनेट तो ले ही चले जा तू। बेनेट क्यों? क्या पता डीपीएस कम पड़ जाए। हाँ ना, वेप होगा फिर भी डीपीएस कम पड़ेगा मतलब। भाई जीरो ये मान लिया है। अरे फिर भी यार वो एक बार टच करेगी उनकी मैया खुद जाएगी। देखो दिखाता हूँ, देखो देखो। नहीं भाई एक बार तो नहीं मरे थे, 4-5 और मरे ना। ये गोल गोल घूम सकते हैं अगर इसके पास इनफिनिट बॉन्ड ऑफ लाइफ होता तो। रुकती जी की चैट। चिराग भाई मेरे को थैंक्स बोलो, नहीं बोल रहा भाई कोई तो ऐसे तो ऐट वाला बोल रहा है। ट्रू आत्मा। ओके भाई जस्ट बोल दे वीडियो बना रहा था अपना बनाऊंगा। ए यार करना बंद कर भाई। एक ही करती है भूख जाता है। ले भाई हो गया काम। 2-4 की फुद्दी और फाड़नी है जो कि हम इससे मार के फाड़ेंगे। भाई एक मिनट बाकी है अभी तक। नहीं भाई फिर भी शाउट था ना, निकाल ही देता 100 और 20 मिल के 2-4 को मारना होता तो। छी 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 छी। आजा मंगस नहीं होगा भाई। हेलो अरबाज। Yeah bro, I'm ready to ride. ये हो गया भाई, जा रहा मैं अब स्ट्रीम बंद कर रहा भाई। अरे सोना भी है। ओके ब्रो। काफी वो हो गया भाई आज।
ठीक है गाइस, मैं जनरल वीसी हूँ, किसी को मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने तो आ सकता हूँ। चलो ठीक है। दिल चट्टा नेपाली खुद से आ जाना चाहिए। देखना पापा के पीछे पीछे आएगा। नहीं आएगा आग। चलो गाइस आज के लिए इतना है, ठीक है। मिलते हैं कल। काफ़ी लंबी स्ट्रीम हो गई भाई, आई मीन लिटरली काफ़ी लंबी स्ट्रीम हो गई। कल मिलते हो, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig at the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Should try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Oh, I just wanna numb the pain. I just wanna run away. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. हाँ बेचारे का म्यूट हटा दे भाई। किस बेचारे का? Well, maybe I'm done, maybe I've वो lost. उसके बीसी में था। I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up with me at the wrong moment. Oh, I just wanna know. मैं बोला कि बीसी में कोई लड़ेगा नहीं, फिर भी साला लगे आ रहा भाई। On vacation, I don't know what else to say. मेरे को समझ में आता तो है नहीं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। I just need to numb the pain. I just need to numb the pain for a minute. भाई स्ट्रीम पे जब आवाज आ रही हो On vacation, I don't know what else to say now. I just need to numb the pain.